Hello, Dr. Preeti. Hello. Yes, yes, sir. Good morning, sir. Yeah, audible. Yes, Hello. sir. You are audible, sir. Hello. Am Hello. I Yeah, audible? audible, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. How are you? Fine, sir. All right, Namaste, right. madam. Namaste. I'm also Good connected. morning, Dr. Ganesh. Good How are you? morning. Good morning. Me fine. All well. Yeah, thank you. Just give me a minute, I'll start. Yeah, please. Thank you. बिठाएंगे तो बिठाएगा। हेलो, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर गणेश बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं ये बोला कि डॉक्टर अलीबा का एक्सीडेंट हो गया ना सर? जी। और सर मेरा अभी लेक्चर है पीएचडी स्कॉलर का 1 घंटे का, तो मैं मोबाइल भी उठा नहीं पाऊंगा सर। तो देखिए, थैंक यू। इसलिए सर अलीबा का बता दो एक्सीडेंट हो गया। A very warm good morning to one and all present here. In an international conference that is organized by Department of Pharmaceutical Sciences, Gurukul University, and in association with Brazil Foundation. Today's we have very eminent resource person with us, Dr. N. Ganesh. He is a senior oncologist, scientist, and has completed 21 clinical and preclinical trials, 3 ongoing, and he has published more than 134 papers that is in an international reputed journals with a total impact factor of 210. He presented more than 108 scientific sessions and 157 posters at an international conference and the national conference. He received 89 Best Paper Awards and 72 Best Poster Awards. He was invited as a guest speaker and a resource person around 850 times. It's we have a big some Thank you. applause. Thank you. Thank you. And he guided 22 PhD scholars and 3 ongoing. He has also guided 300 postgraduate scholars. And apart from that, he discovered active constituent against skin melanoma from water hyacinth. He is
the first in the world to develop in vivo orthotopic colon tumor and metastasis colon tumor model in mice for targeted anti-cancer drug delivery. He received 23 national awards. Dr. Ganesh has conducted 2037 cancer awareness campus and various advocacy talks. So it's a pleasure for us that he has joined and give us valuable time in our conference. And today he is going to deliver his talk on non-verbal to verbal experimental milestones and acceptance, justification for cruelty towards the animals. So once again, welcome to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you to you and the organizers, especially like the forum. And the PISL had given a good platform to us, to my scientists. And no doubt you are a wonderful scientist indeed and good human. You give permission, you give like what you would like to say that you give like chances for the young scientists. And what I noticed that the recent what you have an international conference in Bhopal, and there my scholars are appreciated like anything after the post conference meeting in our institute. Each and every scholars are appreciated for your dedication towards the science. So it's a piece of work dedicated to you, madam, for the science. We have to decide whether we have to sacrifice the animal or not. And at the end of the topic, you will find that yes, animal is required somewhere. And unnecessarily use of animal is also avoidable and as per the CPC norms. And this data what I'm presenting is total from my lab. There is a case study of patient. There are a clinical trial conducted for the patient. We since 2015 we don't have animal. Recently we have inspection, so we may get in next month. And so what to do? We are getting star without animal. So I decided to have some in vitro model with the human, with the due permission of ICMR and FDA, CDSCO permission. And we conducted some good trials. And you can find over the period of time, the in vitro really validate the answer for your question that whether we can use animal or not. So here we go. Like my screen is visible. Like Just wait. So can you please do it on a slide share? Yeah. Okay. Perfect. yeah, fine. So, So you can see it towards my left. There is a colon tumor. The radioisotopic study shows that it's a metastatic, and this is the primary tumor. Bilateral, you can find is a skin melanoma. And towards right, you can find the toxicity study done on the same and on the human sample. Let's see, like there are 4 individuals, to handle it, and it's so difficult to define them. It was well-known individuals for the society. How to handle each individual is a task. So the individuals are like active constructed, that is horse. We don't require anyone to talk, like to direct anything, like what exactly they want to do it, but they do it fruitfully. They are the horse. And the second category is passive constructed, the bulls. They are doing good job, but we have to say something. आपने देखा होगा कई बार खेतों में हल जोतते वक्त बैलों का यूज किया जाता है ओल्ड एरा में भी, और अभी भी कई जगह खेतों में मैंने देखा है, दोस्त हु डोंट हैव मनी फॉर ट्रैक्टर्स। एंड दोपहर के खाने में जो भी खेत में काम करता है उनके लिए खाना आता है, तो खाना खाते हैं पेड़ के नीचे बैठ के। वहां से एक शैतान कोई गुजरता है, कोई भी नोटोरियस आदमी, और उसको हुर बोल देता है। बाय विदाउट नोइंगली द बुल यूज्ड टू वॉक। उनका क्योंकि मास्टर बोलता हुर, तो दे वॉक। The neighbor also said hur, and they walk, and they don't know what they're going to do it. Like उनको नहीं मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं। आप याद रखिएगा, देखिएगा प्रैक्टिकली खेत में जाके
आप करके देखिए, शांत खड़े हुए बैल को जो हल लगा हुआ हो, एंड से हुर, दे आर गोइंग टू वॉक एंड दे गोइंग टू प्लग, वो हल जोतना चालू कर देते हैं. This is the category in India, in world are maximally happened like. And okay, में teachers बोलते हैं तुम कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, you can proper, and it happened. Why I'm defining this all four individual, because आपके thesis selection में this kind of individual may interact with the teachers, and it's very difficult for a teacher to handle it. The third is passive destructive, the donkeys. कुछ भी कर लो, कैसा भी बोल लो. इसका एग्जांपल देता हूँ सागर यूनिवर्सिटी का. अभी वो पंजाब में अच्छे डायरेक्टर पोस्ट पे है. लीवर टॉक्सिसिटी में स्टडी आया, 126 एनिमल एलोकेट किया. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एनिमल इशू, वेरी स्ट्रिक्ट. Synopsis says only serum sample to be taken from the animal, and you believe it, like from the orbital vein puncture you get hardly 0.5 ml, and there's 24 gram of animal mice model, not rat model. And out of 25 gram of animal, you have to take hepatoportal vein से ही blood लेना पड़ेगा, then you get 1.5 ml or say 2 ml of the blood. And then you can go for biochemistry of your liver profile. And believe it, उनने सिर्फ serum profile ही मांगा मुझसे. And we did bilirubin, SGOT, SGPT, and these 3 parameters, I believe, and hepatitis. After 6 months, the thesis got submitted, went for valuation to some in Kanpur University, and they rejected. Even the publications have the question that why you are not taken much more parameters for these animals when you sacrifice 126 animals. मैंने उनके गाइड से, वो स्कॉलर से 10 मर्तबा पूछा था कि सर और कुछ करना है क्या इसमें, तो आई कैन सेव इट. नहीं नहीं, आप ज्यादा मत करें, हमें तो सिर्फ चाहिए, आप लोग बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हो तो आपको ज्यादा चाहिए रहता है, हम स्टैटिस्टिक्स वाले हैं तो हमें जरूरत नहीं है. हमने ठीक से, जब थीसिस रिजेक्ट हुआ, रिकरेक्शन के लिए आया, तो अगेन दैट फेलो हैड लैंडेड टू मी एंड क्राइड कि सर वो मेरे गाइड के कारण मेरा वो हो गया, ये हो गया. व्हाई गाइड? I don't understand why the students can't sit with the guide and talk about the essence of real science. डरना क्या है? मैंने मना कर दिया. गाइड हट के सीनियर मोस्ट. Then मैंने ऐसा लगा, सर इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई लास्ट माय एथिक्स बोर्ड बिकॉज ऑफ द पीएचडी थीसिस. उसका 6 साल का लाइफ खराब ना हो जाए. वी सैंक्शन अगेन 125 126 एनिमल. डॉक्टर प्रीति, रिक्वेस्ट है मेरा, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इससे डायलॉग सिस्टम व्हेन आई टॉक, तो मेरा रिक्वेस्ट है पार्टिसिपेंट्स माइक ऑन करके. मेरा क्वेश्चन है, वासु नारायण अवार्ड भी देता हूं मैं जो मुझे आंसर देगा. वी गिव लॉट ऑफ प्राइजेस ड्यूरिंग माय टॉक. कैन यू टेल मी व्हाट आर द एडिशनल पैरामीटर एडेड फॉर दैट टू गेट द पीएचडी अवार्ड? कोई बोलेगा मुझे? एनीवन? एनी टीचर? Okay. So now please announce that so that people will be more, attentive over there. Like we want it will be interactive one. Yeah. Faza Hussain. Faza Hussain. Mohammed Faza Yes, Hussain. sir. Yeah, Yes, would you sir. please answer me, like उनके इनिशियल पैरामीटर में सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी था. मैंने क्या पैरामीटर ऐड कर दिया उनके थीसिस अवार्ड करने के लिए, मुझे बताएंगे आप? No, sir. कैन एनीवन? इसमें नाम मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली बच्चों का. कोई और बताएगा? आशीष पांडे जी, देवेंद्र कुमार, दीपक Yes, sir. तोमर. I think histopathology. What are the parameter in histopathology? Excellent. Pandit sir, Histopathology is, good. you are going to check the type of cell that may be arise due to destruction by the drug. Can you tell me the name of few cells which is present in the liver? Kaffer cell is there. Natural killer cell is
अच्छा, और कोई आंसर देगा? थैंक यू आशीष जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ने थोड़े ऐड कर दिए पैरामीटर, इसमें ऐड कर दीजिए आप लोग। दीपक, कपिल, धनंजय, गौरव, डॉक्टर विपिन शर्मा, नहीं? देखिए कितना प्यारा पैरामीटर होता है। एनिमल को मारने के पहले हमने उसे उसका बिहेवियर एक्टिविटी किया। ओरल डोज था 15 डेज का, उसका पूरा बिहेवियरल एक्टिविटी नोट किया हमने, उसका डायूरेटिक चेक किया। फिर हमने डिसेक्शन के समय ओरल पाथवे दिया था, तो टिश्यू सेक्शन, इंटेस्टाइन के सेक्शन लिए विलाई क्रिप्ट, कफना, दैट क्रिप्ट ऑफ लिबुकुन्स, लैमिना प्रोप्रिया एंड गॉबलेट सेल्स की एनालिसिस किया। ये तो हिस्टोपैथोलॉजी इंटेस्टाइन का हो गया। फिर हमने उसका लीवर लिया, लीवर को परफ्यूज करके सेक्शन लिया। आधे लीवर से हमने सेक्शनिंग में डाल दिया और आधे लीवर को परफ्यूज करते वक्त कट किया, तो उसके सेल इल्यूट आउट हो गए। उस सेल में से माइक्रो न्यूक्लियस ऐसे किया, मैं दिखाऊंगा माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है। दैट इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ डीएनए ब्रेक। डीएनए के लिए यू रिक्वायर्ड हेल ऑफ लैक्स ऑफ मनी, फॉर माइक्रो न्यूक्लियस यू रिक्वायर्ड 100 रुपीज ऑफ मनी। मैंने सेक्शनिंग में कफनार सेल्स, उसका सेंट्रल वेन एंड कार्टविल अरेंजमेंट एंड उसका हिपेटोसाइट, आप सोच सकते हैं इसमें 12 पैरामीटर मैंने ऐड किए। और बोन मैरो लेके उसका क्रोमोसोम किया कि बोन मैरो में ड्रग इज एक्सीलेंट हिपेटोप्रोटेक्टिव, बट बोन मैरो डैमेज कर रहा है तो द ड्रग इज नॉट वैलिड। आई So we had did bone marrow also, and this all parameter given within the span of 7 days. The publication accepted and thesis has been accepted for the award. So this is what the donkeys does. They don't want to listen anything. The guide is not listening me. The scholar is not listening me. Ultimately, मुझे scholar को bull बनाना पड़ा. So it's a duty of a teacher, the mentors. Even you believe me, like it's a duty of the scholars to motivate the teachers to have more interaction, scientific interaction on the platform of electronic gadgets. टीचर्स पढ़ता नहीं है, बच्चों को पढ़ाता नहीं है, बच्चे वही टीचर बनते हैं और गधे पैदा करते हैं। इसलिए डोंट बी अ डोंकी। एक्टिव डिस्ट्रैक्ट, इन्हें सोच के रखा है सलाम मार काम ही नहीं करना, तो ऐसे कैटेगरी को हमें सोचना भी नहीं। लेकिन मैंडेटरी टीचर की ड्यूटी बनती है कि इन स्नेक्स को डोंकी बनाए, डोंकी से बुल करे और बुल अपने आप हॉर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ठोकेंगे पीटेंगे उसको तो बुल बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमारा साइंटिफिक डाटा कहीं ना कहीं लॉस में नहीं जाता और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा होता है। सी द क्यूट बेबी इज रेडी फॉर अस, हमेशा तैयार रहता है। आप जाके एनिमल हाउस में देखिए, कोई मना करेगा? देखिए उसी 40 क्लास के बच्चों में आप कान पकड़ लीजिए, बच्चा सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, बल्कि कंप्लेन कर देगा ह्यूमन एथिकल बोर्ड में, ह्यूमन राइट कमीशन में कि टीचर ने कान पकड़ा। ये बच्चा हमारा दोनों कान पकड़ के लेटने के लिए तैयार हो जाता है, सर्वाइकल डिसलोकेशन के लिए तैयार हो जाता है। उसके बावजूद भी हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। वी पब्लिश अ पेपर because we want promotions. We publish a paper because 2 publications is required for the thesis to get awarded DR लिखने के लिए। No man, बच्चों नहीं चलता है। You have to love this baby. Unless until you don't love the creatures, they're not going to give answer. आप कोग्नोसी वाले टीचर से पूछ लीजिए, आपके टीचर कोग्नोसी वाले कितने बार हर्बल गार्डन में जाके प्यार करते हैं पेड़ को। मेरा रिक्वेस्ट है कोग्नोसी टीचर्स और स्कॉलर से, प्लीज विजिट योर हर्बल गार्डन, talk, give name to your plant and talk daily. The yield you can find with एक प्लांट को रख लीजिए सेम वैरायटी का, बिना बात करे उसको टॉर्चर करो और एक को आप प्यार करो, आप देखो यील्ड ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड्स की यील्ड कितनी बढ़ जाती है। मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है घर में भी और यहाँ पर भी। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि वी शुड नॉट बी अ डोंकी, वी शुड नॉट बी अ स्नेक, but we should be a bull. Either we should be have a characterization of the horse, right? We have to justify this creatures. उसको जस्टिफिकेशन के लिए मैंडेटली सोनिया गांधी जी ने सीपीएससी का गठन किया एंड अल्टीमेटली ये
पर्पस ऑफ मुझे समझ नहीं आता कि लाइक एनिमल की कम्युनिटी के सेफ्टी के लिए ये बनाया है या बिकॉज नो विजिल। मैं भोपाल में रह के लिंक नॉमिनी हूँ, मेन नॉमिनी हूँ। उनको मालूम है मद्रासी आ गया तो ये तबाही मचा देगा एनिमल हाउस में। वेरी स्ट्रिक्ट वैल्यूएटर। अभी रिसेंटली मेरे को 2 जगह विजिट में जाना था, वेट कर रहा था, इंस्टीट्यूट हैव टू इनवाइट अस, सीबीएसई गिवन मी टू विजिट बट दे हैड टू डिसाइड द डेट। मेन नॉमिनी से बात करके लिंक नॉमिनी की जरूरत नहीं है करके आई पुट अ केस अगेंस्ट 2 कॉलेज एंड 2 टीचर, दे कैन डू इट। सीपीएससी इसलिए बनाए कि हम उस क्रिएचर्स को जो इतने प्यारे होते हैं, हमारे डाटा के लिए रहते हैं, उनको जीना बहुत जरूरी है, लेकिन वो मरते हैं, सेक्रीफाइस होते हैं हमारे पब्लिकेशन के लिए। तो इसलिए जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। और सीपीएससी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वैल्यूएटर्स को स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो पर्पस सॉल्व होगा। माय गॉड, आप लोग बोलोगे मद्रासी सुबह सुबह प्रीति मैडम ने किसको बुला लिया, सुबह से बकवास कर रहा है। नो माय चाइल्ड, this for future application you have to listen. Towards left you can find that it's so easy to sacrifice cervical dislocation. You can go for ketamine dose, you can go for another higher dose of anesthesia, you can kill the animals without making them pain. Fine. My question goes to the scholars, please, what is euthanasia and what is the mechanism of cervical dislocation? मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ प्रीति मैडम? हेलो, ओके, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाई इट इज यूथेनेसिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूथेनेसिया एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सर्वाइकल। ये वासु नारायण अवार्ड के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्लीज आंसर दीजिए। कोई बोल रहा है? बोलिए। बलवंत जी, धनंजय, देवेंद्र, दीपक, विपिन, डॉक्टर विपिन, कपिल जी, गौरव, ओम प्रकाश, रवि, पूजा ने की, प्लीज आंसर। हाँ बलवंत सर बोलिए। सर वॉइस क्लियर नहीं है आपका। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। नहीं तो आप टाइप मैसेज में डाल के मैसेज कर दीजिए, आंसर सही हुआ तो अवार्ड दे दूंगा मैं। और कोई आंसर देगा? नहीं, इसका आंसर मैं आखिरी में दूंगा। जिनको टाइप करके आंसर देना, मैसेज में टाइप यस यस सर। बोलिए। हाँ सर, क्या देना है? You may please ask the question, Yes. sir. Balwant is here. Balwant is here. He will give the answer. Okay, fine. Dr. Urjita Jain had defined that may all be beautiful, let no soul be unhealthy. Let through medicinal herbs, no soul remain ugly. Yeah, Faza had given answers. It's a painless death. Excellent one answer you had given. And Ravi is excellent answer, but I want the second answer too. What is the mechanism of cervical dislocation? आप लोग आंसर टाइप करके भेजिए, तो मैं I'll go for next slide. This is the animal. ऊपर जो अगौटिस दिख रहे हैं वो मेरे को डेवलप किए हुए अगौटिस। ओके 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 सर। हाँ, C57 जो ब्रीड होता है वो फ्यूरिशियस होता है, कैनिबल होता है, और बहुत कम बच्चे लीटर्स देता है, और हमारा एक्सपेरिमेंट डिले हो जाता है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट सेट किया था मेनलोमा का, बच्चों का एक्सपेरिमेंट डिले नहीं हो करके अगौटिस डेवलप किए। ब्लैक माइस को, फीमेल को मेल स्विस एल्बिनो से क्रॉस किया। आई गॉट सम जनरेशन। उसमें से मेल, जितने भी मेल थे उसको आइसोलेट करके मदर के साथ मीटिंग में डाला, मदर से अगेन निकाला, फिर मेल से मीटिंग में डाला। ऐसे करके 7 जनरेशन में आई गॉट अगौटिस, प्योर अगौटिस आई गॉट। एंड इसमें एक्सपेरिमेंट डिले नहीं होता, बच्चे पूरे जीवित होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का, B12 का डिफिशियंसी नहीं होता, इसमें कैनिबल नहीं होते। ये B12 की डिफिशियंसी के कारण बच्चे को खुद खा लेते हैं, तो दे आर नॉट कैनिबल, और ये काटते भी नहीं है। और लेकिन पूरा कैरेक्टर इनका
मेलनिन वाला रहता है, लेकिन स्किन का। और जो इंटरनल कैरेक्टर होता है वो स्विस एल्बिनो जैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है। यू मस्ट अप्रिशिएट द सिंगल कॉलन ट्यूमर व्हाट आई डेवलप। ओके फाइन। ये 6 डे में 12 डे में स्कैन किया, वी फाउंड दैट इट इज फुल ऑफ मेटास्टैटिक। कितना अच्छा है कि आप लोगों ने कुछ ड्रग बनाया। इट इज 5th डे में टारगेट थेरेपी में चला गया प्राइमरी ट्यूमर, और 12 डे में बताता है कि मेटास्टैटिक हुआ है कि नहीं। यदि आपका 12 डे 15 डे 20 डे में आइसोटोपिक स्टडी में कोई भी ऐसे अपटेक नहीं है, मतलब आपने मेटास्टैटिक भी होने नहीं दिया। दैट इज द वैलिडेशन। ठीक है, यू कैन फाइंड टुवर्ड्स माय राइट, यू कैन से पूरा मोमेंटम में नोट्स दिख रहे हैं, इट इज फुल ऑफ ट्यूमर्स। और दिस मेलनोमा यू कैन फाइंड डे 20th में ट्यूमर विदाउट ट्रीटमेंट में ऐसा दिखता है, और विद ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन है मेरा जलकुंभी में, जो मैडम ने इंट्रोडक्शन में मेरे को किया कि वाटर हैसिन से मैंने डेवलप किया है। दिखेंगे ट्यूमर साइज बहुत बड़ा था, दिस बिग ट्यूमर साइज reduced to small. So tumor regression was there on day 20th. ये भी आपको दिखेगा रेडिएशन विद कीमोथेरेपी, रेडिएशन विद आवर ड्रग एंड कीमोथेरेपी विद आवर ड्रग, द ट्यूमर साइज हैज बीन रिड्यूस्ड टू वेरी मिनिमल स्मॉल। तो मतलब दैट इज इफेक्टिव डोसेज ऑफ ट्यूमर। यहाँ तो एनिमल का यूसेज समझ में आता है क्योंकि सॉलिड ट्यूमर कर रहा है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव अभी साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप किया है सिंस 5 years, and we can go with that. It is a papilloma tumor you can find without treatment, on top and with treatment, adjuvant to chemotherapy, radiotherapy, adjuvant to chemotherapy. Water has in का treatment you can find that skin कार्सिनोमा में भी ये बहुत, पेपिलोमा में भी बहुत अच्छा काम करता है मेलनोमा के साथ साथ। प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो, फेलियर किसका होगा? टीचर का। एंड वी आर गिल्ट वेरी, हम इतना फॉर्मुलेशन करते हैं, इतना समझाते हैं, ये करो वो करो, एंड उसके बाद भी द आउटकम वाज जीरो। हु इज वरीड? बच्चा टीचर को इडियट बोल देता है, बेवकूफ टीचर है, इसको कुछ नहीं आता, और टीचर परेशान होता है कि बच्चे ने काम मिस कर दिया। इस कश्मकश में हमारा एक्सपेरिमेंट डिले हो जाता है। एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल? बोथ ऑफ देम, बिकॉज दे आर नॉट फॉलो जीएलपीस। रसल ब्रॉस ने 1903 1905 में ये लॉस दे दिए थे 3 आवर्स की, जीएलपी के लॉस देते हैं, लेकिन हाउ मेनी यू पीपल नोस अबाउट जीएलपी एंड जीसीपी? हार्डली ऑफ। कोई मुझे बताएगा जीएलपी और जीसीपी क्या होता है? व्हाट इज जीएलपी Sir, एंड जीसीपी? good laboratory practice and good clinical practice. एक्सीलेंट सर, सेकंड आंसर है आपका, मतलब क्वेश्चन है। इफ यू आंसर इट, आई होप यू आर गोइंग टू गेट दैट अवार्ड। How you going to define the replacement, reduction, and refinement as per the protocols? How you define the replacement, reduction, and refinement as per the protocols? Please. Replacement means, sir, we have to choose some other in vitro method in which there is no use of animal. Okay, fine. And reduction means we have to reduce the total number of animals so that we can get appropriate result. Instead of using 6 animals per group, we can use 3 animals. Or And about refinement, it is just to modify our method, or we have to modify our parameters in which there is no use of animals or there is less use of animals. आपके पास लैब में कंप्यूटर नहीं है, आपके पास कोई भी आईटी फैसिलिटीज नहीं है कि आप अल्टरनेटिव मेथड में जाए, आपके पास एनिमल ही है, तो मुझे रिप्लेसमेंट एंड रिफाइनमेंट बताएंगे एनिमल में? रिडक्शन इज एक्सीलेंट आंसर। वी हैव टू रिड्यूस द एनिमल नंबर, यूसेज ऑफ एनिमल। अभी मैंने एग्जांपल दिया सर रिप्लेसमेंट का, थोड़ी देर पहले, 4 स्लाइड पहले। In vitro method. हाँ, ओके फाइन, इन विट्रो मेथड वी कैन गो फॉर इट। तो द अवार्ड गोस टू आशीष पांडे सर। आप मेरा पूरा डिटेल मैसेज में, आपके पापा का नाम, आपका इंस्टीट्यूट, आपका पोजीशन, मैं आपको बता देता हूँ। रिप्लेसमेंट का मीनिंग ये होता है, और रिफाइन करते हैं पर, कि आपके मॉडल के अलावा और कुछ हो सकता है क्या। यहाँ एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैंने C57 मॉडल को हटा करके स्विट्जरलैंड के बैकक्रॉस से जो बच्चे पैदा हुए वो अगोटिस थे, और अगोटी में ही काम किया।
अगौटी एक बार में 12 बच्चे दे देता, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया. दैट इज द रिप्लेसमेंट व्हाट यू डू. रिडक्शन, यस, आई ऑलवेज टेक 4 एनिमल. जब 10 एनिमल का परमिशन होता था एथिक्स बोर्ड से, मैं तब भी 4 लेता था, अभी भी 4 लेता हूँ. The reduction has to be done. Refinement, yes. What are the मैंने लीवर का एग्जांपल दिया. You have to sit with your mind, your brain, your soul. कि हमें क्या क्या पैरामीटर में काम करना है. You have to jotter it. Jotter मतलब लिखना पड़ेगा. You have to jotter on the paper like what are the parameters, you have to define it. Before killing and after killing. Before euthanasia or after euthanasia, you have to define it. तो आशीष पांडे सर के लिए एक अच्छी तालियां बजा देते हैं. He got that award. डिटेल मेरे को भेज दें सर, है ना, आपको मिल जाएगा. Thank you, sir. इतना मुश्किल है, हमारे ही एंसेस्टर कहते हैं ना हम. और पिंजरे में बंदे क्या सोच रहा होगा, कमीनो मुझे छोड़ो तो दो एक बार, फिर बताता तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, तुम्हारा पब्लिकेशन, तुम्हारा हेडशिप, तुम्हारा सब निकाल दूंगा. मैं एम्स में काम किया सर. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. दे आर सो सेंसिटिव, दे आर, मतलब मुझे तो रोना आता था, मतलब लाइक बिकॉज दे क्राई. मतलब इतने थे, उनको वैक्सीन के इंजेक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा था. एंड उनको 1-2 दिन तो एक्वेंट हो गया, मालूम था कि इंजेक्शन लगना है, तो उसके पहले मुंह छुपा लेते थे, आंखों से आंसू आता था इनको. एंड उसके बाद भी केज में से हाथ खींच करके उसको लाइक रेस्ट्रिक्ट करके. इट वाज वेरी पेनफुल. Like animal experiment is very important, but cruelty is, I feel like it should be avoidable. और आप लोग को समझना पड़ेगा कि ये क्या सोच रहा होगा कि क्या मेरी बारी है ना. ये सब कितने प्यारे क्रिएचर्स हैं. कैन वी डू मैकेनिज्मली लाइक देयर बिहेवियर. कुछ देने के बाद ये कैसे बिहेवियर हो जाता है, ये बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इनका फिकल मटेरियल कैसा है, इनका यूरिन आउटपुट कैसा है. We can do a lot of parameter on these animals without their sacrifications. If we had followed this all GLPs 3 hours, तो मेरे ख्याल से ये भी खुश होते और हम भी आज खुश ही रहते. एनिमल टेस्टिंग का अल्टरनेटिव है. माइक्रोचिप मॉडल्स हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल्स है, QSR स्टडी कर लो, ड्रग का मॉड्यूलेशन उसी में. एवरीथिंग 3D 4D मॉडल्स बन गए आजकल. एंड देयर आर बबल्स एक्सपेरिमेंट्स एंड बॉल एक्सपेरिमेंट्स. एंड वी रिक्वायर्ड सर्टेन ethical issues are there. For the human sample, we required human ethical board, that is ICMR, CDSCO, being given this permission. And I feel proud to say that हमारे इंस्टीट्यूट को CPSC के थ्रू प्लस ICMR, DHR एंड CDSCO के थ्रू एथिकल बोर्ड का कैंसर रिसर्च के लिए अप्रूवल. सेंट्रल इंडिया में वी आर द ओनली वन. यदि आप में से किसी को इनविट्रो टेस्टिंग कराना है, कुछ करना है, तो यू आर वेलकम. द फीस फॉर द स्कॉलर फॉर PhDs, those who are doing PhD, the fees is 10,000. Those who are small projects, minor project for PhDs, 25,000. For the industrial project, the industrial trials, phase 1, phase 2, phase 3, that is 60,000. It is the fees defined by the concept, not from our end. So you are welcome to do the experiments in our lab. But prior to that, you have to take in permission through that. Human Ethical Board, I say approval लेना पड़ेगा. Sorry. बहुत मुश्किल काम फंसा दिया. मद्रासी को सुबह सुबह बुला दिया. एक तो एक्सपेरिमेंट में बोलते हैं ये लफड़ा कर दिया, दूसरा बोलते हैं ह्यूमन ट्रायल भी करो, उसमें भी फीस लेते हैं. क्या करें, करना पड़ेगा. बहुत सारे वॉलंटियर्स तैयार हैं. Ganesh sir, या Ganesh sir, sorry to interrupt you. Dr. Satyan has joined. ओके. सत्यन सर नमस्ते. नाइस टू सी यू सर, बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. है. और जल्दी लाइक searching your name, your name was not there. Thank you for making me to present my talk and acceptance for my request. Thank you. and we have the registrar sir and Neil Mani ji, IT expert, जी सर नमस्ते सर. नमस्ते सर. innovation scientist. Hello. He is जी सर, from नमस्ते. Bhopal. Yes. Sir, Arya sir, he is registrar in Amity University, Noida. अच्छा. Neelmani I mean, Dev Sanskrit. Dr. Cyril College, London. They are all listening you. Oh, thank you, namaste. Thank you. So kind of you. Thank you. Can I continue?
You may. Yeah, thank you. So what I said, like this, oh my God, and so many volunteers are waiting, for the trials. But the justification is informed consent. How many we give the time and space of bondage to define their agreement of acceptance for the trial? It's very difficult. It's very difficult. हम कंसर्न फॉर्म देते हैं, मैं अभी अपने स्टाफ को भी डांटता हूँ, give space, give the form, 10 page, 25 page of consent form. They have right, the volunteers have right to read that consent. लेकिन नहीं, वहां हिंदी में समझा देते हैं, मेन कंसेप्ट बताते नहीं, कितना डोसेज क्या होगा। अल्टीमेटली ड्रग टॉक्सिसिटी आती है तो पेशेंट पूछता है कि हमें तो बताया नहीं था, तो इट्स अ वायलेशन। तो जब हम जीएलपी की बात करते हैं तो जीसीपी यहीं पर कनेक्ट हो जाता है। When the GLP fails, the GCP automatically fails. That's why it's such a beautiful model. The molecules, aspirin, आज भी मार्केट में अपने जस्टिफिकेशन के लिए स्क्रीम कर रहा है. But we are using Disprin, Ecosprin. Ecosprin had saved so many people during COVID. But have they initially tested the gastric toxicity? No. Liver toxicity? No. Renal toxicity, they had did post validation marketing surveillance के बाद they had started this toxicity study and they found they would have done initially. These volunteers are not idiots. They are for you. The informed consent should be taken, not your own priority, but it's a priority of the patient. Give handover to them कि आप 7 दिन तक प्ले करो, अच्छे से पढ़ो. Local vulnerable language में होता है, you read and go through. Take chance to express your views to your relatives. नहीं तो ट्रायल्स फेलियर होता है. एक पेशेंट एनरोल होता है रिसेंटली हमारे यहाँ, उसका दामाद मना कर देता है 1 हफ्ते के बाद. फिर दामाद को बोलता है सर हमारा दामाद मना कर दिया. फिर कुछ दिन के बाद आता है सर दामाद हाँ बोल दिया. फिर उनका गांव का कोई दीदी था राखी बांधन, वो मना कर देती है, तो राखी इज अ गुड बंधन, अच्छा ट्रायल को मिस कर दिया. क्यों? क्योंकि हमारा वॉलंटियर उन्हें कंसर्न समझा नहीं पाया, ट्रायल इंफॉर्मेशन बता नहीं पाया. दे आर द जीसीपी फेलियर. इतना अच्छा मॉलिक्यूल बन के, इमेटिनिब जैसा मॉलिक्यूल आज बून बन गया है कैंसर थेरेपी में, स्पेशली फॉर द ब्लड कैंसर, सीएमएल. वे बैक इन 1950s का निकला हुआ मॉलिक्यूल जीआईएसटी के लिए, गैस्ट्रल इंटेस्टिनल स्टोमल ट्यूमर के लिए. 40 पेशेंट लिए, 40 पेशेंट मर जाते हैं अलग अलग आंगन में, अलग अलग डेज में. एफडीए आता है यूएसए, तब से रेगुलेशन स्ट्रांग हुआ है यूएस एफडीए का. नो, दैट शुड बी अ प्रॉपर कंसर्न, दैट शुड बी अ प्रॉपर वैलिडेशन फॉर द ट्रायल्स. अल्टीमेटली यूसुफ एट अल एंड पटेल एट अल, इंडियन साइंटिस्ट, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, एनआईएच में काम कर रहे थे, सैनिटरी इंस्टीट्यूट में. वो मॉलिक्यूल को रिमॉडुलेट करते 1960 में, जब मालूम चलता है हैंगरफोर्ड एट अल ने सीएमएल को क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया का नोटिफिकेशन दे दिया. It's a translocation between 9 and 22 chromosome. It is a reciprocal translocation. और ये tyrosine kinase activity के बढ़ने से होता है reciprocal translocation. Hence, it causes the cancer. Interferon alpha was the drug of choice those days, 1960s. पेशेंट का लीवर स्प्लीन हटा दिया जाता है, स्प्लीन भी कर दिया जाता है, and ultimately patient starved for the further days and ultimately died. वो मॉलिक्यूल फेल क्यों हुआ था? क्योंकि वो टायरोसिन काइनेस को बंद कर रहा था, और टायरोसिन काइनेस बढ़ने कम होने से गैस्ट्रल ट्यूमर्स, गैस्ट्रिक ट्यूमर का एनहांसमेंट होता था. सी द मैजिक. उस समय स्टडी नहीं किया. जब हैंगरफोर्ड ने बता दिया कि ये ट्रांसलोकेशन के कारण होता है, यूसुफ एट अल और पटेल एट अल ने वो मॉलिक्यूल को फिर निकालते हैं, डेस्टोरोटरी फॉर्म में डालते हैं. अल्टीमेटली 2002 में मार्केट में ड्रग को इमेटिनिब माइसोलेट के नाम से लॉन्च कर देते हैं. व्हाट अ वंडरफुल ड्रग. We have so many drugs now, new models, and new innovation has been done on the same molecules. It's a saver of the drug patient. इतना अच्छा मॉलिक्यूल क्यों उस समय कर लेते तो 1950 से हमारे पेशेंट बच जाते. नहीं किया था. That's why we are struggle. No, we got successful. The volunteers are there to help, but we failed to explain that. जनरली हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, वो टीचर है माउथ कैंसर लेके, ये गायनेकोलॉजिस्ट है ब्रेस्ट कैंसर लेके.
किसका एफएनएसी करना है, किसका एफएनएसी नहीं करना है, वो भी डॉक्टर कभी कभी फेल हो जाता है। यहाँ पर जीएलपी फेल होता है और जीसीपी ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। इनको एजुकेट करूं, किसको करूं, आई डोंट नो। एथिक्स यही फेल हो जाता है। पढ़े लिखे इंसान लोग इतने बड़े ट्यूमर लेके आते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। ऐसे पेशेंट का एफएनएसी सैंपल लेके आप कल्चर कर दो। एफएनएसी सैंपल लेके सपोज मैंने ड्रग देना चाहिए ब्रेस्ट के लिए, हमने कोई नया मॉलिक्यूल बना दिया जैसे एड्रामाइसिन एंड डॉक्सीरूबिसिन का या पैक्लिटैक्सेल का नया नैनो पार्टिकल हमने क्लस्टर में बनाया और वी वांट टू टेस्ट। कुछ मत करो, ये सेल्स को आइसोलेट करो क्योंकि MCF7 इज वेरी वेरी हार्ड सेल्स, वो ग्रो बड़ा मैंने किया, इट इज वेरी हार्ड टू ग्रो। मैंने जीनोग्राफ पेशेंट का लेके एनिमल में स्टडी किया एंड देन वी गॉट अ ब्रेस्ट कैंसर। So for such cases, you take a permission from the ICMR guidelines, then you take a permission, informed consent to the patient. FNEC होना ही है डायग्नोसिस के लिए, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा। 4 बजे पूरा ब्लड सैंपल डस्टबिन में रखा जाता है, फिर इंसुलेशन के भेजते हैं। वो फिक जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन हम उस डस्टबिन से लेके फिर काम करते हैं, उसका भी इन्फॉर्म कंसर्न होता है। उस कल्चर कर दो, ब्रेस्ट सेल्स कल्चर हो जाएंगे, मोनोलेयर बन जाएगा, आपका एमटीटी कर लो, ट्राइफन ब्लू कर लो, माइक्रोन्यूक्लियस कर लो, फर्दर कॉलोनी ऐसे कर लो, का वर्क यू कैन डू इट, बट डोंट वेस्ट योर सैंपल्स। एफएनएसी कैन बी आंसर फॉर दैट। एसआईटी टाइपिंग है, डाल्टन लिम्फोमा इज एन आंसर फॉर एनिमल, लेकिन एनिमल नहीं यूज करना है आपको। मैं जैन हूं, तो आप पेशेंट का एसआईटी टाइपिंग होता है, एसआईटी फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में रहता है, आप इसके मैक्रोफेज एक्टिविटी कर सकते हो, इम्यूनोलॉजी बेस्ड ईस्ट डाइजेशन वाला पार्ट। आप इसी सेल को कल्चर करके लिम्फोसाइट माइग्रेशन दे सकते हो, कैंसर सेल माइग्रेशन, देन यू कैन गो फॉर कॉलोनी एसे, देन यू कैन गो फॉर MTTSA of the same sample. This is one of the best example for your in vitro non-animal usage of models. This how to आप ब्लड सैंपल ले सकते हो, आपके वॉलंटियर से क्लास में 5 ml ब्लड लेके हेपेराइनाइज्ड ब्लड होना चाहिए, लिथियम आइदर सोडियम, वो आपको क्लॉट होने नहीं देगा। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो बटन शेप WC आइसोलेट हो जाएगा 2 घंटे सेंट्रिफिकेशन के बाद 1200 RPM में। एंड फाइनली यू आइसोलेट दिस सेल्स, कल्चर इट, डू प्ले विद दिस सेल्स। आपको एनिमल को देखना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एनिमल का मतलब कहां पर आ जाता है, जहां पर सॉलिड ट्यूमर्स का काम होता है, जहां पर हमें ट्यूमर वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड, एंड इट वाज सो टीडियस। तो आप देखिए बच्चों से 2 रुपए में क्या क्या काम करा सकते हैं। आइसोलेट कीजिए, मैंने सत्येंद्र सर से बोला भी था कि आपका टिश्यू कल्चर सेट कर दूंगा सस्ते दाम में, वही टेस्ट है सर। आप देखेंगे ट्राइफल ब्लू आपका ड्रग को डाल दिया अलग अलग एलोकेशन में, आपके पास नहीं है बाकी एमटीटी के लिए, आप ट्राइफल ब्लू ले लीजिए, बहुत सस्ता डाई है। एंड डाई डालने के बाद सेल एक्सक्लूशन ऐसे होता है, ये जितने भी डेड सेल्स है वो ब्लू हो जाते हैं, जितने लाइव सेल्स है वो पिंक ग्रे अपना नेचुरल कलर्स में रहते हैं, वायबल सेल्स होते हैं। आप काउंट कर लीजिए कि ड्रग नॉर्मल सेल कंट्रोल में कितने थे वायबल, कितने नहीं थे। ड्रग देने के बाद वो क्या क्या मर गए। यदि नॉर्मल लिम्फोसाइट है तो आपका ड्रग टॉक्सिसिटी रिकॉर्ड होता है, या तो ये कैंसर सेल था तो आपका एंटी कैंसर प्रूव होता है, ठीक है। यू कैन काउंट ट्रैफिक वायबिलिटी टेस्ट, इट इज टीडियस। आपको लगता है डर लगता है, नहीं डर लगता है, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट होता है, आपको प्यार करना पड़ेगा और प्यार से ही सबको हैंडल कर सकते हैं। ये मेरी डॉक्टर पूनम है, अभी गुजरात में कर रही है काम। ये जलकुंभी का ये ड्रग है, आइसोलेट बनाया था हमने, करीब 22 निकले थे और फिर हम एमटीटी किया, एंड एमटीटी करके दिस इज डॉक्टर ताहिर, इज इन कश्मीर। ये मेरी टीम है, दे आर माय पीएचडी। ये 13 lakhs का मशीन है, हीरा सेल CO2 इंक्यूबेटर, लेकिन वी डिड लॉट ऑफ रिप्लेसमेंट विद दिस। हमने नॉर्मल बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर 16,000 में हम पूरा कल्चर कर रहे हैं, पूरे 16,000 के इंक्यूबेटर में कल्चर करते हैं। लगता है डेंजरस है, बट यू हैव टू टॉक, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेम वे विथ योर प्लांट, यू हैव टू टॉक, सेम विथ योर एनिमल, talk, go, say hello, say hi. They'll give good sample for you, for your publication, for your promotions. आपके पास फिर भी पैसा है, कुछ है तो कल्चर कर दीजिए, क्रोमोसोम आइसोलेट कर लीजिए, माइक्रोन्यूक्लियस ऐसे कर लीजिए, बहुत इजी है। बायन्यूक्लिएटेड साइटोसैलिसिन बी ब्लॉक करेंगे तो इंटरफेस के न्यूक्लियस ब्लॉक हो जाएंगे, दे विल नॉट गो फॉर फर्दर डिवीजन, आपको प्रोफेस में नहीं जाएगा। दैट इंटरफेस न्यूक्लियस गेट अ स्मॉल नोड्यूल स्ट्रक्चर, वो नोड्यूल स्ट्रक्चर इज नथिंग एल्स न्यूक्लियर पार्ट। फ्लोरेसेंट आइसोटोप से मालूम चलता है ये न्यूक्लियर है,
जितना ज्यादा माइक्रोन्यूक्लियस उतना ज्यादा डीएनए डैमेज। आपको लगता है ये कैंसर सेल था, उसमें माइक्रोन्यूक्लियस मिल रहा है, इसे गुड थैम्स अप, अच्छा काम है। यदि आपका नॉर्मल लिम्फोसाइट है, माइक्रोन्यूक्लियस मिल रहा है, इट इज समथिंग अलार्मिंग कि आप टॉक्सिसिटी है। तो वो टॉक्सिसिटी से मदद क्या मिलेगा, वो डाटा आपका जो IC50 निकल रहा है, LC50 निकल रहा है, वो डाटा को लेके आप कैंसर एंटी कैंसर के काम में हाई डोज में काम चालू कर सकते हैं। बेस लाइन यू कैन सी इट्स जिम साइज स्टेन। These are beautiful micronucleus with binucleated cells. ये माइक्रोन्यूक्लियस सेल्स है, बट देयर इज नो माइक्रोन्यूक्लियस, बट यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस करता है, ये बडिंग फॉर्म कर रहा है। तो आपका जिम सा स्टेन से भी पता कर सकते हैं। यदि पैसे और है तो आप जाके ये एक्रिन ऑरेंज से फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी करा सकते हैं। तो सिंपल काम था, मेलानोमा में ट्यूमर में काम करना था। आप देखेंगे मेलानोमा सेल ऑलमोस्ट डेथ हो गए, किससे, गार्लिक ऑर्गेनोसल्फाइड कंपाउंड आइसोलेट करके हमने व्हाइट गार्लिक, कश्मीरी गार्लिक, नासिक गार्लिक, बहुत सारे काम किए। साउथ इंडियन अनियन, उसमें साउथ इंडियन अनियन, नासिक गार्लिक एंड अनियन एंड कश्मीरी गार्लिक had given a potential answer for anti-cancer for melanoma. Epithelial cells के मतलब गैस्ट्रिक लाइनिंग का भी ट्यूमर को सॉल्व करता है, इसलिए ऑर्गेनोसल्फाइड कंपाउंड खाना चाहिए, जिससे गैस्ट्रिक ट्यूमर्स नहीं होते। मतलब क्या निकलता है, इसका मीनिंग है कि आपका एपिथेलियल सेल्स के कैंसर को रोकता है। तो प्लीज टेक एलियम सेपा एंड अदर। दिस इज अ माइक्रोन्यूक्लियस फॉर फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। जो ब्लू वाला पार्ट है इज हॉचेस स्टेन, एंड जो ऑरेंज वाला पार्ट है दैट इज एक्रेडिन। एक बार एक्रेडिन मंगाएंगे मेरे ख्याल से आपके 100-150 PhD हो जाएंगे। So it's the cheapest. Hotchkiss is costlier. You can go for your orange dye. This is known as आप देखेंगे ऑरेंज कलर का डाई साइटोप्लाज्म ले लेता है, और फ्लोरेसेंट येलो या ग्रीन आपका न्यूक्लियस लेता है। तो यू कैन फाइंड देयर आर, नीचे में देखेंगे तो देयर आर लाइक 5 माइक्रोन्यूक्लियस, इट इज मोर टॉक्सिक। तो दिस स्टडी यू कैन गो फॉर इट। आपको एपोप्टोसिस देखना है, सेल में देखेंगे आप, नीचे वाले इसमें देखेंगे दिस एपोप्टोसिस न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में जा रहा है। सेम को कंफर्म कर रहे हैं तो ये फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी अगेन एक्रेडिन ऑरेंज, यू कैन फाइंड कि डीएनए डैमेज हो चुका है। यदि कैंसर सेल है तो इस थम्स अप, अच्छी बात है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो हो रहा है। यदि लिम्फोसाइट है नॉर्मल, उसमें शो हो रहा है, तो दिस समथिंग ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, अबे और पैसे तो क्रोमोसोम कर लो, दिस नॉर्मल क्रोमोसोम, दे आर द रेडिएशन ट्रीटेड क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम है, रिंग क्रोमोसोम है, माइन्यूट्स हैं, फ्रैगमेंट्स हैं, सो मच ऑफ म्यूटेशन कैन फाइंड। ये टेस्ट है मेरा, एक एवोकाडो के ऊपर मेरा पब्लिकेशन है, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी पेशेंट में जिनको सॉलिड ट्यूमर हो गया, ब्लड ट्यूमर हो गया, फ्लू ट्यूमर हो गया, उनको हमने ट्रीट किया एंड वी फाउंड दैट डीएनए रिपेयर करता है, क्रोमोसोम को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, ये एमटीटी है, यू कैन फाइंड दिस अ नॉर्मल सेल लिम्फोसाइट एमटीटी फर्स्ट टॉप में, और ये 5FU और डॉक्सीरिबोसिन और साइक्लोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी है येलो कलर का, बाकी सब वायबल सेल्स है। क्यों, एमटीटी क्या करते हैं, ब्यूटीफुल डाई, it's a dye to interact with the viable cells that is present on the mitochondria enzyme which is known as succinate dehydrogenase. This ability bind and find a covalent bond and ultimately form a formogen vital violet crystals. This crystal define more the what you call viability, more the crystals violet will be formed. Less the viability, you won't get the crystallization because the dead cell does not have सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस वायबल सेल्स में नहीं होते, नॉन वायबल सेल्स में नहीं होते। इसलिए एमटीटी करते हुए जितने सेल कैंसर सेल, नीचे वाला पूरा कैंसर सेल लोडेड है। यू कैन फाइंड कुछ डोज में वायलेट है, मतलब एंटी कैंसर नहीं है, बाकी बहुत सारे डोसेस में मेरे वायलेट डिमिनिश हो गए, मतलब ये एंटी कैंसर प्रूवन हो गए। जलकुंभी का काम था, ये भी जलकुंभी का काम है एमटीटी। यू कैन फाइंड जितने डार्क दिख रहे हैं वो वायबल सेल्स हैं, जितने लाइट में है वो डेड सेल्स हैं, मतलब सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का डेथ हो चुका है, सीनेसेंस में जा चुका है, एंड प्रोडक्शन ऑफ सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस डैमेज, so that it is not producing the enzyme, and with the resultant the MTD dye would not be able to meet the bondage formation so that the formation get it formed during the course of culture. तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। दूसरा लिम्फोसाइट माइग्रेशन, ब्लड लीजिए, लिम्फोसाइट सेपरेट कीजिए, या कैंसर सेल के पेशेंट का ब्लड ले लीजिए, एथिकल अप्रूवल लेके उसको डोज देना नहीं है, उसी में कल्चर करके डोज दे दीजिए, और माइग्रेशन देख लीजिए, मोर द माइग्रेशन मोर द वायबिलिटी मोर इम्यूनिटी। आप देखेंगे जहां 7 नंबर लिखा है ऊपर, वो मेरा नॉर्मल है, ये रेडिएशन, ये कीमोथेरेपी, ये मेरा जलकुंभी देने के बाद देखिए कितना अच्छा
फिर से अगेन रिगेन किया इम्यूनिटी। ये नॉर्मल मोनोसाइट है, एसाइटिस से निकाला हुआ माइक्रोवेव वहां का। आप देखेंगे बीन शेप है, ये नॉर्मल है, नॉट डाइजेस्टेड ईस्ट। यहाँ मैंने आप देखेंगे ईस्ट डाइजेस्ट कर दिया। मोर द डाइजेशन ऑफ ईस्ट मोर द इम्यूनिटी सेल्स। सिंपल काउंट करके आप पी वैल्यू निकाल लीजिए। उससे एक्सपेरिमेंट किया मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस से पेशेंट के सैंपल में। आप प्लाज्मा सेल्स पेरेंट सेल्स में ड्रग डाल दीजिए और 24 घंटे के बाद उसका प्लाज्मा लेके इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लीजिए। यू कैन फाइंड एंड यू कैन फाइंड द बीटा सेल्स एंड गामा ग्लोबुलिन्स बीइंग रेज्ड। ये आपका कॉलोनी ऐसे है, कॉलोनी प्लेटिंग ऐसे होता है। जितना कॉलोनी बनेगा, जितना कम बनेगा, ज्यादा बनता है तो वहां पर एंटी कैंसर प्रूव नहीं हो रहा। जहां कम बन रहा है वो एंटी कैंसर प्रूव हो रहा है। तो दैट यू कैन वर्क आउट। बहुत स्पैटर प्लेट में किया जाता है, अगार प्लेट में या सेलुलोज अगार लेके करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस आई टोल्ड दिस। एक को हमने साइक्लोस्पोरिन ए दिया है, एक को हमने नॉर्मल है, और फिर हमने एनहांस कर दिया। और यहाँ पर रेडिएशन टॉक्सिसिटी शो किया, यहाँ बीच में नॉर्मल है। ये हमारा ड्रग है, ये रेडिएशन टॉक्सिसिटी वाला है। यू कैन फाइंड N10 और N9 में इम्यूनिटी कम हो रहा है, बाकी में जो N12 है एंड N7 है उसमें इम्यूनिटी बढ़ जाता है। ये एक नया एक्सपेरिमेंट है, बॉल एक्सपेरिमेंट। फॉर दोस्त हु डोंट वांट टू गो फॉर एनिमल रिसर्च, डोंट वरी, सॉलिड ट्यूमर्स एनिमल रिसर्च में होता है लेकिन वेरी कॉस्टली। गोल्ड बॉल्स होते हैं, बॉल मीनिंग टेक्नोलॉजी, बीएमटी बोलते हैं इसको। बॉल होते हैं, वाइबल बॉल्स, कल्चर्ड बॉल्स। आप कल्चर जब प्लेटिंग करते हैं उसमें बॉल को छोड़ दीजिए, जितने भी सेल्स है उसमें जाके चिपक जाएंगे। यदि एंटी कैंसर है तो चिपकेंगे नहीं, आपका सेल वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो जाता है, सब कैलकुलेट हो जाता है। तो दिस इज गुड एक्सपेरिमेंट बट कॉस्टली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट। एंड दूसरा एक एक्सपेरिमेंट अभी हुआ कोविड में, कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। वैक्सीन, वो वायरस को बना दिया, वायरस को लीक आउट कर दिया, एंड होल वर्ल्ड इज बीइंग सफर्ड। हु इज इन पेन, हु इज इन एगोनी? आपको लगता है? दिस माय लास्ट पार्ट ऑफ माय पेपर। कितने लोग समझते हैं इस दर्द को मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज भी आवारा जैसे बच्चे घूम रहे हैं। दे आर टेकिंग वाइग्रा, दे आर टेकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स इन जिम, दे आर टेकिंग सोया प्रोडक्ट्स। They are not following the guidelines of science. WHO अब बताता है 2022 में अगस्त इसमें जून में और 2021 के अगस्त में कि इतने सारे टॉक्सिसिटी लाता है। आपके कैंपस में वॉलंटियर्स खड़ा कर दीजिए और सबका डायबिटिक टेस्ट, लीवर प्रोफाइल टेस्ट एंड सीमन टेस्ट कर लीजिए। आई गारंटेड इंड्यूस डायबिटिक, इंड्यूस बिलिरुबिन, इंड्यूस इम्पोर्टेंसी आपको मिल जाएगा। कितने बच्चे हमारे डायबिटिक हो गए मालूम है आपको इस कोविड के बाद? द गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर, द ICMR इज नॉट बॉदर, द WHO इज नॉट बॉदर। यूके जैसे शहर में जहां मेरी बिटिया है, एंड शी सेज कि द मोमेंट गवर्नमेंट केम टू नो, दे स्टार्टेड प्रोफिलैक्टिंग टू द प्रेग्नेंट फीमेल्स, एंड जो नए कपल्स हैं उनको लेटर भेज दिया था कि यू शुड नॉट कंसीव टिल वी से। क्या ये लॉस हमारे यहाँ नहीं आ सकते? हम इस पेन एगोनी में कब तक रहेंगे? इन गधों के चक्कर में, इन गधों के चक्कर में कब तक रहेंगे? They feel that they're responsible people for the society? No. भोपाल में एक बहुत एंशिएंट 2000 years old गुफा मंदिर है, वहां के महंत साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिंदू प्रीस्ट, वो जब भी कहीं जाते तो मुझे बताते हैं। जैसे कुंभ के लिए जा रहे थे, मैंने मना किया, गुरुजी मत जाइए, महंत साहब मत जाइए, हम कुंभ वापिस आएगा 12 साल में आएगा, वहां चले जाना, लेकिन अभी मत जाइए। वो 25 आदमी को साथ में ले जाते हैं और 25 भोपाल के संक्रमित लाते हैं और काफी लोग को खून मारते हैं, और महंत साहब भी 5 दिन के अंदर चले जाते हैं इस दुनिया से। कौन जिम्मेदार है? ये कोविड के समय नॉर्थ ईस्ट का लिया हुआ फोटोग्राफी कैन फाइंड, ये रैलियां जरूरी थी। हमारा इनेट और लाइक जो इम्यूनिटी की बात करते हैं वो कहाँ है? आई डोंट नो। पेनक्रिया को कैसे डैमेज किया? डायरेक्ट इन्वेशन किया है सर। बीटा सेल्स जो होते हैं उसको डिप्लीट कर दिया, साइटोकाइनेस इंक्रीज करके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेके बढ़ा करके, और अल्टीमेटली
वी लैंड अप विथ इंसुलिन सिंथेसिस, जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो गया। हमारे बच्चे 2 साल, मैंने अभी कैंप किया मित्तल कॉलेज में, इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चे हैं वहां पर कोविड के बाद। क्या डॉक्टर अपनी ओपीडी में एक क्वेश्चनर बनाता है कि आप कोविड संक्रमित थे क्या, हैव यू टेकन वैक्सीन? नोबडी बॉदर्स। हमने क्या किया देखिए, ये ट्रायल है हमारा, वी गॉट वेरी गुड सक्सेसफुल स्टोरी, प्लीज नोट इट डाउन, स्टार्ट टेकिंग दिस। अभी तो हमारा पेटेंट और आपका स्टार्टअप जो है प्रोसेस, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है, उन्हें हमें कई यूनिवर्सिटीज को बोला मैंने, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। हमने ऑलरेडी 1 महीने पहले इसको स्टार्टअप में डाल दिया और दिस हैज बीन फाइल्ड फॉर द पेटेंट। चावल लेना है, चना लेना है, अलसी लेना है, मक्का लेना है, ज्वार लेना है, बाजरा लेना है, रागी लेना है, और अदरक सौंठ लेना है, जीरा, सौंफ और मेथी दाना। मेथी दाना, सौंफ, जीरा को भूनेंगे, अलसी को भूनेंगे, तभी ओमेगा 6 3 निकलेगा। चावल को भी भून देंगे, लेकिन वो मक्कार यहाँ नहीं दिख रहा। जर्मनी से भेजा हुआ मक्कार हमारे इंडिया में आके लैंड अप करता है। 2 प्लांट, दोनों ने जिंदगी नर्क बना दिया सबका। हमारी ओपीडीज में हम लोग गेटिंग ए सैलरी, गुड सैलरी, और हमें मजा आता है। हम मेडिसिन वालों को भी एंजॉय कि और पेशेंट आए, डायबिटिक लेके आ जाए, इम्पोर्टेंसी लेके आ जाए, ब्रेस्ट कैंसर लेके आ जाए, पीसीओडी लेके आ जाए, वी फील हैप्पी। सीटी स्कैन, एमआरआई, सबसे कमीशन मिलता है हम लोग को, वी एंजॉय। हमारा कुटकी, रागी, कोदू आउट ऑफ पिक्चर में इंडिया में खाने में, बच्चों को पसंद नहीं आता ये खाना। गेहूं की रोटी सबको पसंद आती है। हैव यू सीन द गेहूं, द कैलप्रिट, कैन यू सी ओवर हियर? फॉर हेवन सेक, मेरे को आप लोग जूता मार लेना आके। एक महीने का ये रोटी खा लो, उसके पहले कोलेस्ट्रॉल, पूरा लिपिड प्रोफाइल, आपका डायबिटिक प्रोफाइल, आपका लीवर प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल करवा लीजिए, और 1 महीने के बाद फिर करवा दीजिए। मैंने जिन जिन को दिया है ये, वो इंसुलिन डिपेंडेंट अब छोड़ दिए हैं, अब ड्रग डिपेंडेंट थे वो भी धीरे धीरे निकल रहा है उनके हाथ से, ड्रग भी लेने की जरूरत नहीं। कांट वी हैव दिस? गवर्नमेंट ऑफ एमपी को बोला मैंने, प्रोजेक्ट के लिए बोला, रही आटा है, डॉक्टर गंगा जल दे मर जाए तो डॉक्टर खराब है गंगा जल में, और खुद गंगा जल गंदे है, उसमें पानी में हमारा पवित्र गंगा जल को इतना गंदा करके रखा हुआ है, उससे कुछ म्यूटेशन होता है। आप जाइए बिहार में, कितना टॉक्सिटी है वहां के पानी में, लीच आउट होके वहां पर व्हाट यू कॉल गैल ब्लैडर ट्यूमर है लड़कियों को, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है वहां पर। आर्सेनिक टॉक्सिटी कहां से आ रहा है? वहीं से लीच आउट हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? वी ऑल, गंगा जी नहीं, हमने दूषित कर दिया उसको। लेकिन डॉक्टर वही गंगा जल दे तो मर जाए। ये आटा मैं दूं, कोई मर जाए तो डॉक्टर गणेश ने ये आटा दे दिया, तो इससे मर गया। सॉरी, हम इंडिया में वी आर मेकिंग फूल टू आवरसेल्व्स एंड मेकिंग अदर्स टू फूल आउट। ट्रायल लिया मैंने, 2020 का हमारा ट्रायल है, कंप्लीटेड ट्रायल। 2021 में ट्रायल, 2 ट्रायल है मेरे, एक चाय का ट्रायल है, एक वो है। हमने कोविड में चालू किया चाय, और हमारे कैंसर पेशेंट भी कोविड थे, रेडिएशन लेने आते थे कोविड पेशेंट। We had regenerated their life like anything. You can see how nicely we had we had we had made their life comfortable. कीमोथेरेपी वाले लेने वाले से, रेडियोथेरेपी वाले लेने वाले से पूछे ना, कितना साइटो उसमें डिप्लीशन में जाता है, साइटोपिनिया में चले जाता है। डॉक्टर इंजेक्शन देता है, 7,000 8,000 का एवरी रेडिएशन कीमोथेरेपी के समय पेशेंट खरीदता लेता है, क्योंकि डब्ल्यूसी नहीं बन रहे हैं। बट सी, इट्स अ वंडरफुल चाय, ये भी हमने डाल दिया, इसका टी बैग हमने बोल दिया है स्टार्टअप मीटिंग को। मेरे ख्याल से विद इन 1 or 2 days वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मार्केटिंग। मेस्मराइज ऑल स्पाइस टीज, होप ऑफ ऑरेंज चाय, डिवाइन पाउंड, ये सब मेरे नाम है। यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब थे मदन मोहन, पहला नाम उनके लिए डेडिकेटेड है। दूसरा, हमारी रिसेंट चेयरमैन, उनकी वाइफ श्रीमती आशा जोशी मैडम, ऑनरेबल चेयरमैन मैडम, उनका नाम है आशा, यहाँ होप लिखा है। उनकी बिटिया सीईओ है दिव्या पाराशर, डिवाइन लिखा, और जवाहर द होप ऑफ चाय, वी ऑल।
We all give this contribution to the society. We can find hemoglobin count. Hemoglobin count आप देखे होंगे प्री एंड पोस्ट. आपका ये वाला पार्ट है लैरिंग्स वाला इफेक्टिव हमें नहीं मिला. आपका लैरिंग्स आई डोंट नो व्हाई few cases 2-3 cases and not given answer. आपका SGOTPT सबसे ज्यादा डैमेज होता है. क्रिएटिनिन डैमेज होता है, लेवल बढ़ जाता है. यहाँ देखेंगे ओरिजिनल सिस्टम मिपेटो सिस्टम को मेंटेन कर रखे. सिंपल चाय 60 ml पहले, रेडिएशन के पहले, 60 ml बाद में. मैंने इतने आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट को बोल दिया प्लीज वेलकम, आई एम गोइंग टू कोलैबोरेट, विल गेट अ जॉइंट पेटेंट. मार्केट में ले आते हैं बट नोबडी बॉदर्स, नोबडी बॉदर्स. ये मेरे ख्याल से आखिरी बार मैं आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट को बोल रहा हूँ. मैं पहले भी बोल चुका था, आपको सचिन सर याद होगा, बट आपके इंस्टीट्यूट से कोई भी आगे बढ़ के नहीं आया कि यस वी आर गोइंग टू डू दिस. ये कॉन्फ्रेंस का सबसे ज्यादा डिफिसिट पार्ट है. सबसे ज्यादा डिफिसिट. इट्स नॉट कट एंड पेस्ट मैसेजेस व्हाट आई एम गिविंग टू यू. इट इज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी डू टू मेंटेन GLP एंड GCP इन आवर बॉन्डेज लाइफ. इसको बेनिफिट लेना मालूम नहीं. आप देखिए 2021 में बोलता है अप्रैल में COVID-19 कैन कॉज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. वेरी गुड. फिर बोलता है 20 में नवंबर 1 के इम्पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस इन COVID-19. और यहाँ पर एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है हमारा भोपाल का, और आज तक उसको डिफाइन करता है कि कोरोना संक्रमित पुरुषों में इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी का खतरा 3 गुना बढ़ गया. आप जिनको मालूम नहीं तो उन्होंने तो वैक्सीन भी ले लिया और वायरस भी ले लिया. इसका रेमेडी नोबडी बॉदर्स. हमारे यहाँ पर फीमेल को वेटेज मिल जाता है डाइवोर्स में इम्पोर्टेंसी डिक्लेयर करने के लिए नहीं, डाउरी केस में लगा के ऐसे मर्दों को बेइज्जत करने के लिए. शादी इसलिए होता नहीं ना. उसका रेमेडी भी बताऊंगा व्हाट वी डिड, यू कैन फाइंड. ये क्या करता है, सर्टल सेल को डैमेज करता है, वही साइटोकाइन्स को इंक्रीज कर, लिपिड प्रोडक्शन बढ़ा के पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को चेंज कर देता है. Who is responsible? We all. But we never bothered to see that we had even bothered to calculate this kind of parameters. हमने एक डाइट बनाया, ये एथिकल बोर्ड से क्लियर है. मेरे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मोर देन 3000 पेशेंट नाउ डेली मेरे पास इनफर्टिलिटी या इरेक्टल डिस्फंक्शन लेके यंग बॉयज आते हैं कॉलेज के, जो मैच्योर्ड है वो आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, रात के 2-2 बजे तक मेरे से कंसर्न. आई डोंट चार्ज बट पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू आस्क. अपनी बीमारी को रोड में पड़े हुए टेंट में घुस के रात को दवाई नुस्खा लेके, ये चूरन लेके काम चलाते हैं, या तो वाइग्रा लेके काम चलाते हैं. लेकिन हमारे घर में रेमेडी है, उससे मतलब नहीं. ये खजूर चूज कीजिए, पूरा पब्लिकेशन के साथ है सर. अंबर खजूर और अजवा खजूर लीजिए, अंजीर लीजिए, बादाम लीजिए. ये मेरा एक डाइट है बहुत अच्छा, दूध में बना के देता हूँ और 7 दिन के लिए देता हूँ. आपको डाटा दिख रहा है, अभी कोविड के डाटा दिखाऊंगा कि स्पर्म, मरे हुए स्पर्म को कैसे जिंदा किया मैंने. दूसरा एक मसाज का है, दिस इज फॉर हनी, मिल्क क्रीम एंड milk cream. These 3 we are taken, and Rogan Badam oil. And you can find this is the data. Good morning, sir. Your diet plan helped me very much during my chemotherapy. And Dr. Sunil Kumar, leading medical oncologist, he suffered from blood cancer, told my parents that my sperm quality will be affected badly because of the therapy, and advised to meet Dr. N. Ganesh. After meeting Dr. Ganesh and following his diet plan and advices throughout the treatment, now I am healthy and my organ is erected. Sperm count are also very good. Thank you, sir. ये ऐसे बहुत सारे मेरे पास फीडबैक्स है. ये नॉर्मल स्पर्म है, ये हेल्दी स्पर्म है, फॉरवर्ड मूवमेंट में है, and you can find the fluorescent glow. These are the normal sperm. ये एक बच्चा है कोविड संक्रमित. यू कैन सी a few sperm is day 0. Day 0 का सैंपल है, few cells is activated. Day 15th डाइट, एक्यूप्रेशर एंड डाइट से हमने इतना जीवित किया. Day 45th you can find the glow is came out and the quantity is also enhanced. ये another case, you can see the pus cells round जो दिख रहा है वो pus cells है, and maximum 50% 90% are dead cells, dead sperms.
Same on 45 days. You can find the pus cell has gone and all the sperm is activated. Yes, we have to found the way. हमें नॉन स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर मजा आता है कि हम काम करें. पता नहीं लोग वही घिसा पिटा काम को पर एक फोटो देखा हम पब्लिकेशन में, मेरे ही कोलिग ने किया था. वी मेड हिम टर्मिनेटेड. एक ही सेल को हर एंगल में करके पब्लिश किया उन्होंने, और जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं बनता था तो फोटो शॉप में जाके जोन ऑफ इनहिबिशन बना के अच्छे पब्लिकेशन करे हुए. यही फार्मासिस्ट सोसाइटी के कुछ लोगों ने मेरे अंडर में पीएचडी कराया. हमें कोगाइड से नाम हटा देते हैं और वो एंटी कैंसर का वर्क मेरे पास रिव्यू किया था. कब तक चलता रहेगा? हु इज गोइंग टू सफर? द साइंस, नॉट द सोसाइटी. We are there to help to approach the specific site and to deliver the drug in a purposes. This is my team. My honorable chairman is there, and this whole consultants. I am the hopeless teacher in my institute. मेरे chairman का slogan है कैंसर से डरिए नहीं, हमारे साथ मिलकर लड़िए. Yes, and my slogan is cancer and COVID से डरिए नहीं, हमारे साथ मिलकर लड़िए. Get involved any way you can, and because together we can create change. Satyan sir, I'm thankful to you. Preeti madam, I'm thankful to you to give me a chance to express my real hardcore work, which is being imparted for the society. And we work for a small scale. My life is not that fascinated, but we do whatever we do genuinely, and we impart to the society. Thank you all the dean faculties, registrars, the chairman of this institute, the professor heads, scholars, and young scientists. I'm thankful to you for the patience listening. If I'm wrong anywhere, I'm going to apologize for the same. Thank you. Thank you, sir. So I have one question. Yes, sir. related to cancer. So, how do you see that in the Indian context, how the cancer, could be cured by the Ayurveda or naturopathy? Sir, to be honest, मैं बिल्कुल ओपन फोरम में बात कर रहा हूँ सर. मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि मुझे बनाया मेरे माँ बाप ने और ईश्वर ने. मेरे को सैलरी मेरा इंस्टीट्यूट देता है. सर, यदि आयुर्वेद को इनिशियली अच्छे से फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन से करके एक वो निकालो ना आयुर्वेद का बुक ब्राउन कलर का जिसमें फटा हुआ पेज है, जल्दी लाओ सर. मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत अच्छी चीज. हम आयुर्वेद क्यों फेलियर हो गया है बहुत सालों से और अब रिजुनेट हो रहा है. ये सर बुक है मेरे पास बहुत सालों से. ये हरिद्वार से ही बना है सर. ये बुक सच अ वंडरफुल बाइबल ऑफ आयुर्वेद सर. बाइबल ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया फॉर फार्माकोलॉजी, लेकिन विदाउट रेफरेंस सर, विद नॉट अ सिंगल रेफरेंस. मेरे यहाँ पर एक आयुर्वेदाचार्य हैं बेतुन में, वहां एंटी कैंसर रख देते, मैं भी पहुंच गया. मैं देखो तो तमाशा क्या चल रहा है इनका. 4 पेपर फाड़ते हैं और चार बनी रखते हैं ऐसे, किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम. वो 4 दिन का डोज दे देते हैं, खा लो काढ़ा बना के. देयर इज नो वैलिडेशन. So there मैं पूरा प्रैक्टिस करता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी. verification. You are talking more than, because that's the scientifically evident, like what they have. Let I complete sir, please. Let I complete. सर, यदि इसे वाकई में वैलिडेट करते हैं हर आयुर्वेदिक कॉलेज वाले, तो यकीन मानिए इससे अच्छा साइंस नहीं, इससे अच्छा ड्रग नहीं. सस्ता, टिकाऊ और इजी टू हैंडल इट, अप्रोचेबल, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड पेशेंट फ्रेंडली. और क्या चाहिए सर? मेरा रिक्वेस्ट है आपके गुरुकुल से, प्लीज मेरे मरने के पहले मेरे पास जो ज्ञान है उसको निचोड़ के रख लें सर. आई डोंट चार्ज फॉर एनीथिंग. I'm a freelancer, बट मेरा रिक्वेस्ट है जो क्रुक्स बैठे हैं ना सर यहाँ वहां, मेरे 3 AML केस को सर मैं नाम लूंगा सर, क्योंकि आपके वो चीफ पार्टनर है इस कॉन्फ्रेंस के. मैं नाम लूंगा सर. उन्हीं के शिविर में जाके परफोरेटेड वेन से आए थे सर. 2 मेडिकल की स्टूडेंट्स, 19-20 साल की और एक 16 साल की लड़की. जब लाए थे हमने मना किया, आपका रिमिशन कर दिया, ट्यूमर ठीक हो गया, अब मत जाइए सर. हमने दीक्षा लिया, हम जाएंगे उनके आश्रम में, हमने जाइए, हमने मना किया था सर. मुझे याद है सर, एक बड़े हॉस्पिटल के ओनर की बेटी है भोपाल में, उसकी चीखें मुझे आज भी याद आती सर. स्क्रीम कर रहे थे, पूरे परफोरेशन ड्रिप चढ़ा रहे थे, पूरा फ्लूइड बाहर आ रहा था सर, और चिल्ला चिल्ला के चले गए सर. 3 बच्चे एक जैसे गए सर. भोपाल में शिविर लगा, डायबिटिक पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक पेशेंट,
ऑन शिवर मर गए सर. दिस इज नॉट साइंस. साइंस शुड हैव वैलिडेशन. और मेरा रिक्वेस्ट है, गुरुकुल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. प्लीज वैलिडेट द ड्रग्स एंड पुट ऑन इन प्रॉपर. नहीं तो ये सब जितने ढकोसला बाज है, एम्स के डायरेक्टर होते हैं सर, कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होते हैं. वो डायरेक्टर इसलिए नहीं बने क्योंकि वहां वैलिडेशन नहीं किया उनके इंस्टीट्यूट पर. दे टॉक मच. लेकिन प्रीति मैडम सच बोल रहा हूँ, सत्येंद्र सच बोल रहा हूँ, जितना अच्छा कोरम आपके इंस्टीट्यूट का सर, प्लीज आपके बच्चों को मोटिवेट कीजिए एक जेन्युइन रिसर्च के लिए, और टीचरों को भी. Sure, sure. सार्थक हो जाएगा. वर्ल्ड में एक 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 लीडिंग फ्लैगिंग का वो हो जाएगा सर कि गुरुकुल इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर आयुर्वेद क्लिनिकल ट्रायल सेंटर सर. और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा सर. थैंक यू. Thank you. Thank you so much, sir. I'm requesting the delegates, if you have any queries, can you please ask that in chat box I received, I think, sir. वो आंसर कोई दिया क्या उसका? I'm still searching. Dr. Kapil Goyal, sir, do you have any query? दिस माई नंबर. आप लोग को लग रहा है कि अभी बात नहीं कर सकते, मेरे नंबर में आपको व्हाट्सएप कर दें मुझे आपके आंसर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ अवार्ड्स केवल एक सर को ही मिला है. प्लीज आंसर दैट क्वेरीज. कहीं से भी देके टीपा टापी करके भी दे दोगे, मुझे लगेगा जेन्युइन है तो मैं आपको अवार्ड दूंगा. मेरा नंबर इज सो इजी. दांत 32 होते हैं, उसको तोड़ दो तो 16-16 हो जाएगा इक्वली. मेरे वो ये नंबर है, देखेंगे लास्ट का नंबर 32-16-16. स्टार्टिंग के नंबर याद कर लीजिए 9826. Could you please repeat that question? मेरा क्वेश्चन था, यूथेनेसिया का एक आंसर मिल गया था, और सर्वाइकल डिसलोकेशन के समय क्या मैकेनिज्म लगता है. Do you have क्या होता होगा? वो स्मॉल क्रिएचर सरेंडर हो जाता है बिना कुछ बोले. ले लो भैया, मेरी जितनी लेना ले लो, जो जो लेना मांस टुकड़ा जो लेना ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. लेकिन वो I'm इतनी more, easily कैसे सरेंडर हो जाता है? एक सर्वाइकल more in the computer science. I'm computer science professor. जी सर, नमस्ते. So He is working in artificial intelligence in हाँ healthcare. सर, मैंने बहुत काम किया है ओम प्रकाश सर. मैंने मतलब जो भी आपका नाम क्या है सर, कंप्यूटर जो है? नीलमणि. नीलमणि सर, नमस्ते. मैं सर नमस्ते. आईटी में बहुत सारा काम करके दिया हूँ. मेरे पास अभी ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर में बहुत अच्छा पब्लिकेशन है. एआई को यूज किया हमने, आर्टिफिशियल न्यूरल मैंने नेटवर्क. भी इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग, मेरे पास भी मैंने जीनोम सीक्वेंसिंग को बहुत डीपली स्टडी किया है ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर के लिए. और मेरे पास अभी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ वीआईटी वेल्लूर का, वो डीबीटी का प्रोजेक्ट है. 3 बार उनको नहीं मिला. देन वी हैड दे अप्रोच मी एंड एडेड समथिंग एंड वी गॉट बिग अमाउंट. उनमें आरएनए चिप बना रहे हैं डायग्नोसिस के लिए एंड थेरेप्यूटिक. बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा भी इसमें है, कुछ काम किया हुआ है. कोई जीनोम नहीं, बताइए सर. वी कैन कोलैबोरेट. या वी कोलैबोरेट. या प्लीज. I take the slide. पता नहीं आप लोग को मेरा टॉक कितना अच्छा लगा, लेकिन प्लीज आइए, कोलैबोरेशन कीजिए. विल वर्क टुगेदर प्लीज. Definitely. थैंक यू. Thank you. Thank you so much, sir, for giving ओम your. प्रकाश कुछ बोलना चाहते हैं? ओम प्रकाश भुसनूर, Dr. Om Prakash, sir. उनका हैंड रेज है. ओम प्रकाश जी बात करेंगे? चलिए ठीक, वाइंड अप कीजिए. Thank you so much, sir, for giving your valuable time, and your presence will very fruitful for our scholars and the faculties, those who are connected, because your work is like it's extraordinary. It's commendable that you work for like colon cancer, breast cancer. Like your hats off to you. थैंक यू. Thanks. थैंक यू. नमस्ते. Your आप time. सभी को मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार. एनी हेल्प, माय इंस्टीट्यूट इज ओपन टू फॉर द कोलैबोरेशन. रात के 2 बजे भी बच्चों जो स्कॉलर्स हैं बात करना चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन, दे कैन कॉल मी एंड आई डोंट स्लीप टिल 2. और 5 बजे उठ जाता हूँ तो मैं ऑनलाइन थेरेपी सिखाता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी देता हूँ फ्री में. तो एनीवन कैन साइंटिस्ट जॉइन ऐसे ही मी. होते हैं सर, साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं. थैंक यू. बाय. सी यू. बाय. Bye bye, sir. Thank you. बाय. सी यू.
requesting all the participants to be on line that we have our next session of Dr. Neelmani ji. He's going to deliver his talk offline. So we are connected within 3 minutes. Just give your time.
इसमें तो पीपीटी नहीं पीपीटी है पीपीटी है पीडीएफ पीडीएफ बना दोनों बहुत सारा वो है क्या कहते हैं मैं अपना लैपटॉप लगा सकता हूँ क्या हाँ हाँ नहीं यहाँ इनके कोई पीपीटी नहीं है नहीं आ रही हाँ पीपीटी मैं सब पेन ड्राइव हाँ पेन ड्राइव नहीं है नहीं अगर मैं पीडीएफ बना लूँ चलो तो उसमें बहुत सारा एनिमेशन है अच्छा एनिमेशन हाँ तो आपका लैपटॉप है लैपटॉप ये तो लैपटॉप निकाल वो उनका एक्चुअली एनिमेटेड फॉर्म भी है ना इसलिए सपोर्ट नहीं कर पाते पीपीटीएक्स ठीक है नेटवर्क तो हुई है ना इसलिए मैं ऊपर में वेबसाइट कर नहीं नहीं अभी तक टाइम नहीं वेबसाइट सब कर देते व्हाट्सएप आपके पास लिंक है मेरी करूँगा गर्मी लग रहा है अब ये 1 मिनट आने में लगा था इतना हवा तेज आएगा आवाज बैठा नहीं ना आज के पूरे आज आपका और आपका रहेंगे नक्शा इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता ना पीपीटी में डाल के तो हो जाएगा पीपीटी करके
मोबाइल कितनी देर रखा था फोन बजेगा तो फोन बजेगा तो बीच में कट होगा सर ये डबल साउंड करेगा Hello. I'm audible. Hello. On है. Hello. I'm audible. जी आ रही है आवाज नीलमणि जी आपकी? I'm audible. Thank you very much. हेलो I would like to thank Dr. Rajpur here today invite me and especially thanks him for giving me opportunity to share my thoughts with all of you. So today we are going to see how the artificial intelligence work in the healthcare. What are the sectors, fields and sector which is associated with artificial intelligence works. So first, I would like to explain what is the industry 4.0 AI. So when first time when the industry 1.0 start, in that time the steam power comes and the mechanization and weaving loom starts. After that, when electricity comes in the picture, in that time the massive production comes and the assembly line established. After that, there is a industry 3.0 where the automation, computer and electronics comes. Here, right now we are in the era where the industry 4.0, where the cyber physical system, internet of things and the network. Here, this area is called where the AI works here. So now in the here we see the machines are studying, learning the things, and we are using our mobile phones. So here the difference between the machines. So we explain why the machines are learning and we are connecting with the mobile phone. So this is just cartoon for all of you. Now we more focus on the evaluation theory where the AI and machine learning works. So as you know, most of them you are from the biology background. So here the root of evolution is based on the Darwin theory. So here if you see that one, there the giraffe has when they ate all the low hanging leaves, after that when they don't have the leaves, so few of the giraffe died, and uh, but the leaves are quite high. They and now
have the brain. So here all the brain from the low cortex to high cortex. These are the cortex in the brain. So the brain evolve, the neurons evolve. So here, if we see that in the 7 million year, the human brain has the triple in the side. So the brain same here. That's why we discuss. So here we see that the same as the brain is evolving. Here the brain adapting the culture, linguistic and complexity. As in India, we have the more than 100 dialogues and the colloquial language more than 1500 and the official 32 official language. So every 50 kilometer the culture, language, race, food is completely changed. So here the allow the brain to adapt the culture and linguistic complexity as well as the here you see the better communication also with the cognitive advanced cognitive tasks they do and due to the neuron evolve in the brain. So now you see from here to chimpanzee to the man, they are using the computer, so completely evolved. So the human evolution is there. As we have the God, so God is also evolved. So the evolution theory from you see the Matsya avatar to Kachap avatar and they evolve to the Krishna. So each have the significant meaning. So when they evolve, they have the more power, more capability, more things to do. So now we are moving to the AI. So the evolution theory, because each time your neurons evolve, your brain cortex going to more evolve, and the more grow, due to that, the cortex are important role play here to getting your memorization, logical ability, adaptations. These are things. So due to that, the human perform. So here you see here we are divided into few things like for the response, responding, making decision, natural language processing, computer vision. So we divided artificial intelligence into the four different aspects called thinking, acting, interacting, and the receiving. And the entire thing till acting, thinking, and receiving comes under the cognitive computing. So as you know, in the computer vision and the hearing, speech recognition, handwriting, optical OCR is there, optical character recognition, image and the video recognition is there, facial recognition. When you talk about the uh, responding synthesis, natural language generation, robot process, automation, control are here. And natural language processing, you know for the translation, analysis, and NLU. So these are the characteristic and the features of the AI. So here we have the 24 industry discussion by the AI, but we are more focused on healthcare, where there is autonomous automatically identify and personal treatment, drug discovery. We are going to see in the so here you see that one. We have the invasive diagnosis here, patient facing mobile application where remotely doctor can diagnose them, remote monitoring solution, digital platform integration, surgical robots. Here the connectivity
device for 3D printer and small implementation. So we are going to see the all the ecosystem today lecture. So here we few things based on aspect of developed behavior society. So here, if we have the less time, we decrease the time or make more efficient healthcare than the it solve the problem, it decreases the disease. So early, so we do these things by the early risk prediction, differential diagnosis, and the treatment optimization. So how the AI will help in healthcare, we see in the next slide. Here, you see here the life saving and the healing. So healing is here. We say the corona, here the eye, here the valves, tendons, veins, skin, bone, and these are the tissue, right? And these are the organs. So here, how the AI will help to get the early detection with the lung infections. If anyone has the liver cancers and liver cirrhosis, so by the imaging we can find the liver cirrhosis earlier. So the heart disease with the daily activity, all the pulse detections or monitoring, the pancreas cancer or even though the diabetes early detection and diagnosis we do. So here you see that the patient comes from the patient comes and the physician has the tablet and there is a desktop manager where they can the patient has the one unique RFID card. By that they punch the RFID card and the entire records comes here and they will call the biological clinical trial. So here, whatever we have the biological clinical trial happens, so it was in the database, and that there is the devices on the wearable devices where the blood pressures sensors we have. We have the insulin pump based on the glucometer reading. The insulin pump activate and deactivate, and there is a particular time period when the insulin is going to high, the insulin pump is going to directly on and off. So entire data could be saved in the data bank on the biological bank here, and the physician can in one click they can see the record and they can know what is the condition of the patient, and they have the electronical health record already the patient has. Based on that, they recommend the medicine and the other things which is associated and related with the patient. So the huge market as per the PricewaterhouseCoopers, the latest report in 2030 we have the entire the healthcare AI is the trillion business. So you know how much the AI involved with the build the solution in the healthcare field. So if we have the breakage, like for the 44% for the mobile user, it is called the remotely diagnosis and the medical professional, it is the 44%. So here you see the 2.5 trillion only is the they are expected to in the healthcare and especially in the global wealth in the IoT section, and the 170 million is expected in 2020 grow in the IoT only, IoT billion. So if we talk about the health, health technology, so the business could be the 15 billion in 2017 it was. And the wearable market, where you have the wearable devices called your watch, activity band, the market is in
2016 is the 14 billion. So it is a huge. So as you see that one, they have the huge potential in the market, in the healthcare, especially IoT and the AI. Now we have the few AI application in healthcare for the diagnosis and treatment, where the clinical decision support comes under there. The computer vision, where the ECG, EEG, and the radio imaging analysis, we are going to see the later on. We have a few slide on that. There is called the workflow management system, where the patient flow and optimization is based on that. The predictive modeling, where is called the hospital acquired infection emergency complications are there. So we can, by the ML, using machine learning, we can predict the things. Recommend the things. And to, if they rate be high or to the based on the genome sequence. So the application imaging services. So we see entire body and could be precise, accurate, diagnosed by the doctor. So here we saw how it's worked, the imaging technique. Do you see that one? So they can zoom in, zoom out, and they are scanning and imaging in the medical sector. So they scan MRI, CT scans, and we can in the real time we can know the disease, and based on the disease we can prescribe the complete recommend or with the treatment plans for the patient. Here we especially take the heart and the entire functionality of the body, how it works. So at the same time, the AI will help you to collecting the information and data from your imaging, and at the same time they apply, if they need anything, they can zoom in, zoom out. Obviously, do the entire body scan, and at the same time they do, and the single click you can know the what kind of disease and the accumulated disease or the region. If you have any other health condition, also it could be diagnosed. So the main aim of the artificial intelligence is early detection. So now we move on the virtual nurse, which is now in the corona, when the corona starts, so it's quite important. The virtual nursing. The virtual nursing has a different role, especially called the self-care, clinical advice, scheduling appointment, nursing line, and the ER directions. So these are things the automated virtual nurse could do with your ECR, your electronic EHR, electronic health record. This is you have whenever you are admitted or diagnosed. This is called EHR. EHR is a store in any database. So based on your patient ID, the virtual nurse assists you to scheduling appointment, self-care. If you have anything you need right now,
they can, you know, by the chat or they can virtual reality, they will give you assist on the real-time basis. So there we call, this is called Da Vinci. Da Vinci is basically the surgical robot. You see here, it is one of the best efficient robot in the market right now, and they perform very well to in the any kind of surgical things. What right now in the healthcare they do, this robot is called Da Vinci, and it's quite efficient and accurate and precise, and there is a very minimum error they have performed during the operation. This is basically my paper, research paper, where the wearable devices is there, where the smartwatch for daily activity, your heart tracking, blood pressure tracking, a smart footwear, where foot count, and there the brain signals. Because this is could be the new, it could be introduced in the few years, your brain signals and the smart goggles. By that, the artificial vision and the face recognition could work, and the, based on your brain signal, what are your thoughts, what is your stress level, what how you behave, what is your mental condition, we can know by the brain signals. Now we move on to wearable devices, which is also like the called the answer your voice machine, heart rate, sleeping monitoring. Here there is your smart clothing. Here the smart clothes. Now we move on the drugs, molecules or components, where the AI helps for finding the right kind of bonding or the coupling with the different molecules, and how the molecules combine with the other molecules to perform the best medicine and the effective medicine for any disease. So here we have the example of the genome sequence, because I built it during the COVID. So we have the variation of the COVID called SARS, MERS, COVID-19. So there COVID-19 is the green one. This is called little bit hope, bad hope, Ebola, and so we have these are the genomes. So earlier when the corona start in India, they more thinking about the HIV drugs works very well. After that, the hydroxychloroquine, the malaria. So you can see these are the malaria, and this is not matched with the green one. It's called the COVID. So by that you can this is called trinucleotide. So here there is no any comparison between the malaria and the HIV Ebola, and it not quite fit with the coronavirus. So here we have the called amino acid. So you see these green are the coronavirus called the amino acid, and the others. So you can match. So it could be help for when the drugs discovery is going to the genome sequence level. It could be very helpful. So in the next slide we are showing you how in the HIV sequence with the coronavirus is 99.94% match, and the malaria is 0.03% match with the genome sequence. So the most match is called SARS, and the bad COVID is quite similar. You see, check it, that it's quite matching with the percentage of genome sequencing match with these three. Now we see how the AI helps find a solution for the healthcare, especially called the potential drugs, vaccines, development and the clinical trial. So as you see here, this is a clinical trial. Cost is quite huge. Here you see the respiratory systems. The clinical trial is going to this much billion in the USD in billion. So here, each are here. The endocrinology is 59.1, cardiac vascular is 64.1 million USD clinical trial. So
how the drug discovery it helps to the drug discovery here. The 5 steps for the new drugs discovery for the medicine drugs, clinical research and FDA review, as well as the FDA post market safety monitoring. So here the AI solutions binding the molecules which has the less energy to bind, so they have the binding with that one. So it's quite important here to the right kind of molecule they find. Preclinical trial, because by the simulation, AI simulation, we can preclinical trial, the data analysis could be important, recommendation, what are the impact on the clinical research, it could be help. The FDI review, it means what are the compliances and policy scopes. Now the discovery and development of the drugs called the insight into disease defined by the AI. We can easily find the insight into a disease where which one is the tested molecules component possible effect by the simulations, repurposing of the drugs, because you see that one the plenty of the drugs which already existing in the market and they have to use the repurposing for the during the pandemic they use it using, and the multiple genetic material we can use for the drugs discovery and development. So here by the simulation or the AI we can make the proper environment for the researcher where they can easily understand the what are the possible effect, what are the possible condition, and what are the disease, so they can match and process the
मोबाइल में मैंने अपना मोबाइल कर मेरे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया. Hello. Now it is visible. Yeah. So we were here. Okay. There's a smart pills we had discussed earlier. So these are the smart pills where the small camera is built in that, and this is the deliver the precise and the precision in the particular organ where they are required. So now we move on the called Internet of Medical Things, where it is the new things introduced. It's called IoMT. So where the surgical robot with the drone technology, with your mobile appointment, your day-to-day activity is there. It's quite important in the health sector. Here, there the ECG connected with that. The ambulance is so everything is the connected with the in one click. Your doctor availability whenever anything is happening, it directly if any one is, has the medical emergency, the entire thing is activated. The ambulance reach to your particular GPS location, which kind of meals you require. If there is the ambulances can't reach there, the medical emergency facility could be directly the drone could be used for that, and they give the first aid. Another thing is the drone technology, how it's work during the COVID. You can see check it, or there is a they can check their the multi-dimension effect with the called any kind of the temperature. If the patient has the condition is critical, so they can deliver the drugs, and the mass level scanning they can do here. The robot. So here the medical robots as a frontline warrior, it helps during the pandemic. So how the humanoid robot work here to provide the better experience without imposing the risk of health care and the worker. Manufacturing and the precautionary uh, item related to the virus any infected, the better supply chain management, and the robot has the treatment plan without whenever the infected patient is there, so they reduce the healthcare risk, and they give the precise and precision health support to the person. Here, the cleaning and the food is when the patient are infected, so the humanoid robot could help everyone. So now we little bit talk about the pros and cons of AI. While the pros is the less room for error, right detection making, work in the risk situation, any kind of work, we have the critical thinking situation. So they can, they work, and there is one thing is 24/7, it's work. There is no need to take the rest. The cons is the expensive to implement, dependency on the medicine, and sometimes people are saying they're replacing a human, but I don't think this is replacing the human. Restrict work. So now this is called the artificial intelligence ethics, because the ethics is important, because without ethics, whatever the technology is there, if we don't have the ethics, protocol, policies, governance, so it could be harm, it could be impact to the humans. So that's why the protocol or ethics should be there. So this is for the audience to artificial intelligence of ethics. Thank you very much for giving me opportunity.
for sharing my thoughts in AI in healthcare. If you have any question and comments, I would like to more than happy to answer the questions. In online and offline mode. So if you have any query, then please unmute yourself and you may ask. Okay, sir, you. AI इथिक्स इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आप ये देखिए कि कोई प्रोटोकॉल्स तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास रूट सेफ्टी के लिए तो आप कैसे ग्रीन सिग्नल होने पे आप जाएंगे। सेम अगर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट मान लीजिए कि पूरा ऑटोमेटेड है, आपके बॉडी टेम्परेचर को सेंस करके वो एसी 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 को पूरा वो क्या कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। अब ये बताइए अगर मान लीजिए कि एक ऑप्शन अगर बाय द वे एनी ऑप्शन है कि अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोसेस है वो अगर मान लीजिए काम नहीं कर रहा है तो फिर हम कैसे इसको ये करेंगे। तो देयर शुड बी वन मैनुअल सिस्टम। इट कुड बी आपका टेम्परेचर उसने सेंस किया और वो -डिग्री टेम्परेचर पे ले गया, तो इस केस में क्या होना है, आप बीमार पड़ जाएंगे या आप, तो वहां पे देयर शुड बी द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स होना जरूरी है कि कितने लिमिट तक हम इसको यूज करेंगे, क्या क्या कहाँ यूज करेंगे कहाँ यूज नहीं करेंगे, और जो इसका इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात रही कि आपने बोला कि IoMT, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स। आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुना होगा, आपने इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग सुना होगा। तो ये एक नया मेडिकल डिवाइसेस के लिए है कि आप मेडिकल थिंग्स, ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप सब कुछ आपकी जो भी चीज़ें हैं वो कनेक्टेड रहेंगी। आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से लेके आपका डे टू डे एक्टिविटी, कौन सा मेडिसिन ले रहे हैं और क्या आपका क्या आपका डेली रूटीन है, उसके बेस पे इफ एनीथिंग इज इमरजेंसी हैपन, the protocol activated and you can get the right treatment, right facility at the right time. So this is a one platform where entire medical devices, medical things, even though the things could be the ambulance, it could be the doctor or your ECG machine, even though your called robo surgery is also involved in that one. So ये एक साथ एक्टिवेट होगा और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे।
हाँ 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 ऐसा है। ये जो मैंने आपको पीओसी बोल बताया था, पीओसी, ये पॉइंट ऑफ केयर टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से अभी हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। हर तालुका, हर ब्लॉक में एक डिवाइस हो, ताकि जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल पे ज़्यादा से कम उसका वो पड़े लोड। अगर वो डिजीज उसी आसपास में सॉल्व हो जाने वाला है, या वो वहाँ पे कोई बेस्ट डॉक्टर हैं प्रैक्टिशनर, तो वो आप वहीं पे आसपास में ही, आप जहाँ पे रूरल एरिया में आप ये करवा सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको एम्स दिल्ली जाना पड़े। तो ये ऐसा हम लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रपोज कर रहे हैं, पीओसी, पॉइंट ऑफ केयर टेक्नोलॉजी। वहाँ पे आपके पास एक छोटा सा, आपके पास एक आधार कार्ड से वो लिंक रहेगा, और जो भी डिजीज है आपके, वो एक पॉइंट ऑफ केयर आपके एक सिंगल ब्लड से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से जो भी डिजीज डिटेक्ट हुई है, विच वन इज द बेस्ट डॉक्टर इन द पर्टिकुलर 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, वी प्रोवाइड द एड्रेस। और उससे ये होता है कि पता चल रहा है कि कोई 10 किलोमीटर में कोई पेशेंट आने वाला है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं चीज़ों को। तो इट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दैट वन। जो आपने बोला कि एब्जॉर्प्शन के लिए आपने बोला कि कोई ऐसा मेडिकल, हम लोगों ने खुद कोरोना वायरस के लिए डेवलप किया था। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्डिंग चेक करते हैं कि कितने लेटेंसी है, कितना हीट बॉन्ड कर रहा है, कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, विच वन इज द लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग। इट कुड बी द बेस्ट मॉलिक्यूल सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर डिजीज। यहाँ पे आपका जो एमिनो एसिड है वो बहुत कारगर है इसके लिए। उसके बेस पे, एमिनो एसिड के बेस पे हम लोग वो चेक करते हैं कि विच वन इज द बेस्ट, एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, क्या लेटेंसी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी सबसे लेस क्या है। सो दिस मॉलिक्यूल्स कुड बी द वन पोटेंशियल ड्रग्स फॉर द एनी काइंड ऑफ डिजीज। हाँ हाँ हाँ, यही है कि हाँ हाँ, अर्ली 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 रिस्क प्रिडिक्शन, अर्ली डिजीज डिटेक्शन, अर्ली रिस्क प्रिडिक्शन और अर्ली डिजीज डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पहले पता चल जाए तो यू कैन आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और जो सीवियरिटी है उसके तरफ आप नहीं जाएंगे। तो देयर द एआई हैज द immense, called they are working on this direction, where your health data, they take the health data, based on the health data analysis we can prescribe the predict the disease, diagnose the disease, and which one is the suitable drugs for you. It could be predict you. So ये इस एरिया में बहुत काम हो रहा है, और बहुत प्रिसाइज। इवन आपने IBM वॉटसन का नाम सुना होगा, वो कैंसर के लिए बहुत प्रिसाइज और मैं कह सकता हूं कि बहुत एक्यूरेट, वो अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, जो कि 100 डॉक्टर्स से अच्छा वो ये रेकमेंड कर रहे हैं चीजें। तो अभी इस पे बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो भी चुका है। और जैसे जैसे इसका, जैसे मैंने शुरू में स्लाइड दिखाया था आपको, तो यहाँ पे मैंने ये इवॉल्व के लिए बात किया था, इवॉल्व, हाउ द इवॉल्व। तो जितना आप इसको डेटा देंगे वो उतना लर्न करेगा और इवॉल्व करेगा। तो ये मैंने जो साइकिल दिखाया था यहाँ से इवॉल्व कॉर्टेक्स का, तो ये देखिए मेमोरी इतना स्टोर करेगा, और मेमोरी स्टोर करने के साथ वो न्यूरॉन्स के साथ जो है, वो मशीन में भी हम लोग सेम न्यूरॉन्स को यूज करते हैं जो ह्यूमन न्यूरॉन्स है, उसी के मैकेनिज्म को लेके हम लोग काम करते हैं। तो जितना डेटा आप उनको देंगे वो
फीड करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेगा। तो अभी जो काम हो रहे हैं वो मेनली अभी अर्ली डिटेक्शन पे बहुत सारा काम हो चुका है और काम चल भी रहा है। जैसे जैसे डेटा गैदर कर रहे हैं वो काम और आगे बढ़ रहा है। जी। डेटा आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए वो बताया। हाँ, पैथोलॉजी के लिए बोल रहे हैं। देखिए, दोनों चीजें उसका प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। आप उसको कैसे लेते हैं? जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे जो है 15,000 स्टेप चलना ही चलना है और क्या रेट से चल रहा हूँ मैं उसको ये ले रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज के वो है। आप कोई सा भी इन्वेंशन लेंगे उसके दोनों पहलू हैं। आप उसको कैसे यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसीलिए मैंने ये बोला था कि ये एक सोचने के लिए भी जरूरत है लोगों के लिए कि कि कैसे उसको और अच्छा किया जाए, इम्प्रूव किया जा सकता है। हाँ, अभी ये इनिशियल स्टेज है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको डेटा दिखाया था, ये देखिए। हाँ, तो ये है कि आप ये देखिए कि अगर ये अभी 14 बिलियन का ये वेयरेबल डिवाइस सिर्फ आपका 2016 में मार्केट था। अब आप सोचिए हम लोग अभी 6 साल बाद है, तो ये कम से कम आप क्या सोचते हैं? कम से कम 10 टाइम 20 टाइम्स बढ़ा ही होगा। आजकल सब लोग स्मार्ट वॉच वेयरेबल डिवाइस ले रहे हैं, तो पहन तो रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा कैसे हम लोग मैक्सिमम, जैसे आपने बोला पैथोलॉजी, तो अगर इसमें स्वेटिंग के लिए एक सेंसर लग जाए तो आपके स्वेटिंग से क्या क्या पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इट कुड बी मोर एक्यूरेट, प्रिसाइज। तो आपके हेल्थ डेटा के साथ ऑल्सो आपके मेंटल, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इसके साथ अगर कंबाइंड किया जाए तो वो, तो अभी लोग काम कर रहे हैं इस पे कि आप कितना स्ट्रेस है, किस तरह का पैटर्न है, वॉक का क्या पैटर्न है, आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, स्लीपिंग डिस्टरबेंस है या नहीं, तो आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी इसे और भी बहुत आगे बढ़ना है, तो अभी लोग उस पर रिसर्चर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ सालों में ये इम्प्रूव्ड वर्जन आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। So thank you all the participants who have joined this session and collected the information related to artificial intelligence. So if anyone is having another query, so that participant can conduct or can join this session and interact with our resource person in lunch session. So once again, thank you. And sir, one suggestion from my side that we are living in Uttarakhand, and when we discuss about the holistic health, so main thing is the biodiversity of Uttarakhand, and Dr. Vinod Upadhyay ji here, a eminent scholar of Ayurveda. So if is there any possibility of AI applications for conservation of biodiversity, for recognition of medicinal plant, for recognition of metabolites. So in that direction,
the AI should work. Yeah. If you have some ideas, so you can explore with the participants. So in the discussion session with Upadhyay sir, we will call you again, sir. So it will be a discussion with the participants as well as the students. So once again, thank you, sir. And from the fraternity of Kangri Vidyalaya, once again, I would like to express my sincere thanks to our resource person, Dr. Neelmani sir, and who has joined this session from their Sanskrit Vidyalaya, Haridwar. So once again, thank you, sir. And in this connection, I would like to invite our next speaker, Dr. Vinod Upadhyay. So please. I would like to invite Mr. Dr. Sandesh and kindly on the stage and reference to Dr. Neil Maniji from our Gurukul connection and from President. Thank you so much, sir. Now, for next session is Dr. Vinod Bhagat. He is a professor in our university, Dehradun. Previously, he worked with Gurukul and Rishikesh Ayurvedic University, and he is a vast knowledge of अच्छा और है ना माइक ऐसे कर सकते जी नहीं ऑनलाइन जुड़ा हुआ है ना सर खड़ा होके बोल नहीं नहीं माइक नहीं आ वो चलेगा ठीक चला बस ठीक so again welcome to the world of Veda Ayurveda and Gurukul, my mother institution. The topic which I have decided for today's program, there is challenges of human health and role of Ayurvedic and pharma industry. In a study, Germany, it was after Second World War, it was found that people got many expensive
for the medicine and cosmetic. They could not cut these expenses and they were always in case. The decades that people want to remain healthy with the pharmaceutical pharmaceuticals and we want to look beautiful also. So the cosmetic industry and pharma industry are going side by side together. This study was published by Dr. Christoph today in Munich. In fact, what I want to discuss today the major challenge is that we are using and certain the treatment is it's not a that we are doing and then something that people are there are many examples. Remember, it was the electricity which was so I will take this in my life. Now, remember, the other challenge cancer is spreading like you can find this in everywhere. The we have given up the we are that we are what this water is what the license I go down to make the book. I will and then better. We go down to get it just and valuable drugs by the show. Voluntary association. In my opinion, every Ayurvedic pharmaceutical must it is clearly necessary you might be talented mind. You might
which growing our scientists never get. Ashwagandha may be here because people might be Ashwagandha may be generally found expired many basic products, but nobody cares. We have to follow that. I think the most important thing is we have to know but that is we have major one is and when we are strong enough, cancer or population and all things. The best like which are to be everyone and anyway if you have a guy and make it over no way and we are when expected use, these are the things are not very good, but everything so well is the best. It's not really. I do very lot of feeling that we need
integrated power. You can never have a technique. But it is the best integrated power. I've been able to calculations to repeat. I want to know an example of this. I want to do it. And the subject, I got it. And you have to thank you. They would like to give you and and do something I selected you are this is a really bad one. You can't grab it's not
और मैं जो आपको जो बात बता रहा हूँ इस समय से पहले कि इसका है कि हमारे तो उसमें जैसे आंकड़ा So you remember that when the doctor gives the heart you always actually
उसके बाद फ्रंट में रखते हैं खाने कराएंगे यार ये सारे ये सब तैयार I'm audible. Excuse me. I'm audible. If anybody can reply, I'm audible to you. Sir, you are audible, sir. Okay, thank you very much, sir. So we are starting our poster and oral presentation session, and in this session, I would like to welcome Dr. Devendra Kumar, who is Assistant Professor from College of Pharmacy, University of Health Sciences, Rohtak. We welcome you, sir, on this platform, hosted by Kangri. He is acting as a poster and oral presentation evaluator for this session. Yes, sir. And next poster evaluator is connected with us is Dr. Saloni Kakkar, who is Assistant Professor from Pharmaceutical Science Department, Mahasi Dayanand University, Rohtak. We welcome you, both the evaluators, sir, and ma'am. Please continue with the session. So the first poster presentation is from Gaurav Singh. I would like to call Gaurav Singh. Poster presentation. जो भी आ रहा है ना poster presentation है ना मैं announce कर देता हूँ slide okay. So all the participants and the poster or oral presentation presenters are requested to kindly tell about the whether it is a poster presentation or whether it is a oral presentation in their first slide, so that evaluation can be done on that basis. Thank you. Gagan Singh is there. Gaurav Singh, are you able to listen me? Next is Ankita Singh. She is there. Yes, please. Okay. Anjali Rajora.
मैं लिख दिया डायरेक्टली। ये चलो नहीं करता सर। अब भी मैम वो दुखी ही रहेंगे। ओके। अंजलि रजोरा। विभा मैम को देख के निधि मैम दुखी हो गई। इसे फैन को बंद कर दे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ वो तो केविन में पकड़ चला सर। सर क्या बताया जा रहा है आपको? अच्छा भैया वो बता रहे हैं मार्क्स अपलोडिंग। हेलो। सारा शौक धीरे धीरे जॉब की सर इतना शौक रहता था कि नया नया जॉब शुरू हुआ था, नई नई चीजें सब थी। अब तो तो आप तो रैक में सारी चप्पल तो खोले कौन? अगर तो मेरा तो बंद कर दे, एसी चला। आप भी आवाज ही नहीं आ रही इसको। बिलीव नहीं करेंगे, सुबह नाना मेरी स्कूटी पहुंचते हैं, नाना मेरी कार से ला के रख देते हैं। हम बस डीजे नीचे उतरते हैं सीधी तरह नाना की चाय लेके इस समय, क्योंकि मामी सुबह उठ जाती है 5 बजे और उसके फिर मामी लेट जाती है, जैसे पता जाती तो मामी सोती रहती है तो माँ नहीं जगाते। हम चाय लेके नीचे बस बैग उधर फेंकते, आपको कॉल करते करते नीचे उतरते हैं कि ताकि आप उठा लो। अच्छा उसके बाद फिर उसके बाद Excuse me, Praveen sir. I request Mr. Praveen Tanhani ji to kindly proceed with your oral presentation. You have 10 minutes, for 8 minutes for your presentation and 2 minutes is for your questionnaire round. Okay, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Kindly share your presentation. Yes, yes. So our judges, I requested our judges, Dr. Devendra Kumar ji and Dr. Saloni Kakkar ji. They're It's connected. Sir, is there any issue in us presenting your slide? Ma'am, this is being open now. So, Okay. Now it's visible. I'm requesting our judges. It's visible over there? Yes, ma'am. Yeah, it's visible. Yeah, we can see. Okay. Okay, you may continue. there is some technical issue. I'm not able to change this slide. Okay. Okay. So a very good afternoon, one and all present here. I, Praveen Tailani, will present my
presentation on formulation, development, and evaluation of protein-based nanoparticulate system for the treatment of pulmonary infection. So, coming to the introduction, as we know that nowadays pulmonary infections are very much common, and in addition to the so-called small molecular drugs, proteins, peptides are the increasing interest for pharmacotherapy due to several advantageous properties. In this presentation, I would be just discussing about the nanoparticulate system and that will be related to the pulmonary infection. So however, we can say that non-invasive routes of administration represents a great part of research. So amongst others is the pulmonary applications of protein and peptide for local delivery in case of pulmonary diseases such as idiopathic pulmonary fibrosis, where the alveolar epithelium is affected. And to ensure an intracellular delivery, nanoparticles in a size range of 150 nanometer will be prepared via charge-mediated conservation technique, characterized for their physiochemical properties and loaded with several model proteins. This is just an overview of the work which I am doing for my PhD work. PhD thesis. In recent years, there has been a drastic increase in research, technological development, and atomic and molecular and macromolecular scale, which leads to the controlled manipulation and study of structure ranges from 1 to 100 nanometer. So nanoparticles are the very much suitable that can be fit into the category of colloidal drug delivery system, which behaves like a whole unit with respect to its properties and transport mechanism. So these are used as a drug carrier, as we all know, system to improve the cellular uptake as well as body distribution. Nano particles become the major reason for the change in different properties of the many conventional material by virtue of their greater surface area per weight than micro particles, which make them more active drug carriers. Drug carrier, they are basically acting as a drug carrier. Now coming to my next slide, factors affecting drug bioavailability via pulmonary route. As the topic says, we will be having a great emphasis on the pulmonary route. Fate and bioavailability of the administered via pulmonary depend on the multitude of factors. There are many factors. Various physiochemical, biological, and formulation parameters have played an important role in the absorption of the drug through the lungs. As we all know, asthmatic patients and many other diseases which are related to the lungs. So many formulations are already in the market and they have to be administered by using metered dose inhalers basically. Diffusion and absorption of drugs from the lung interface depends on the molecule's lipid solubility, size, degree of ionization, and the area of absorptive surface. It is likely that lipid soluble drugs will diffuse more rapidly due to the lipoidal nature of the cell membrane. So, as we all know that lipid soluble drugs will be diffused more rapidly, as we have studied in our previous courses, BPharm and MPharm. So small molecules tends to penetrate membranes more rapidly than the larger one. Most drugs are weak organic acids or bases existing in an unionized and ionized form in the aqueous environment. Next come the approaches which are used for the pulmonary drug delivery. So there are a number of approaches which we can use. Some of them I am discussing here. So appropriate devices are used to deliver the drug to the lungs effectively. And the selection of the device will be depend upon the physiochemical and dosing demands associated with the drug substance to be inhaled. A variety of technology is under development to overcome problems associated with conventional aerosol devices intended for dry powder inhalation system and liquid inhalation system. So firstly, I would like to discuss about jet nebulizers. So jet nebulizers are the most common type of inhalation devices. These are the subset of the more general twin fluid atomizers. We all are aware about jet nebulizers. The operating procedure includes a pressurized air source that supplies high pressure air, which flows through a nozzle where the air acceleration takes place. Next comes dry powder inhalers. So the purpose of DPI, that is dry powder inhalers, is to insert a
prescribed dose of powder aerosol into air inhaled by the patient during a single breath while the powder is prevented from being exposed to the ambient air until the patient is ready to inhale. And the coughing might be induced by inhalation of large amount of powder, total amount of inhaled powder, the total amount of inhaled powder. So dry powder inhalers are very much useful, and asthmatic patients are mainly using meter dose inhalers and as well as dry powder inhalers also. Next we comes to the meter dose inhalers. The mechanics of MDI, that is meter dose inhalers, involves a transit cavitational turbulent fluid that flashes into rapidly evaporating droplet. MDI remains a standard aerosolized delivery system which can produce an aerodynamic particle size of less than 5 microns. With HFA propellants, HFA propelled MDI, that is meter dose inhalers, are easily portable, tamper proof and multi-dose. These are already available in the market. Now I would come to this. Now I would like to discuss physiochemical characterizations of nanoparticle based system. So particle size and zeta potential measurements are very important for the characterization of nanoparticle, as we know, in order to ensure the optimal particle size distribution and polydispersivity index. Next come differential scanning calorimetry, that is DSC, is one of the most important method for the analysis of polymorphic changes in the lipid matrix. The structural changes in the lipid matrix provide information regarding the stability of the formulation over time. So DSC is important just to study the stability over time. X-ray diffraction along with DSC, X-ray diffraction is also very essential for analyzing the crystal structure and spacing in the lipid lattice, and the incorporation of the API, that is active pharmaceutical ingredient, influences the lipid polymer structure and spacing of the lattice. Continuing with the physiochemical characterization of nanoparticle based systems. So next comes microscopical techniques, yeah, particle morphology we can say. The morphology of the nanoparticles can be examined by using transmission electron microscopy, utilizing different techniques suitable for specific particles. Freeze fracture, negative staining, and cryogenic transmission methods can also be adopted according to the type of the particles which we are using. Next is cell and animal-based studies. Several studies have been performed for the toxicity analysis of nanoparticle systems in different cell lines, tissue model as well as animal model. Toxicity study testing is essential in order to determine the lethal dose as well as the therapeutic window of the drug-loaded nanoparticles. Now, last but not the least, current and future prospects. The marketed biotechnological advances observed in the recent decades resulted in the appearance of many protein-based drugs, as we know. Fundamentally, the oral delivery of these molecules is prevented by degrading effect of abundant protease content, and the possibilities of delivery are essentially reduced to injection-based strategies. However, this approach is more expensive and not appreciated by the patients, mainly due to the discomfort associated with the administration, but also because of some patient compliance, we can say. So pulmonary route thus appears a sound alternative, or we can say that by using nanoparticulate system and the doses or the meter dose inhalers or dry powder inhalers, we can actively treat any kind of pulmonary infection. So, conclusion, pulmonary drug delivery is rapidly gaining importance due to multiple advantages. Lungs offer a vast variety of advantages over conventional oral drug delivery. The large surface area and the elimination of the first pass effect makes the absorption of the drug in the lungs faster. The sizes of the colloidal system being in the nanometer range certainly gives them an advantage over conventional dosage form. We can say it is targeted, we can say it is a targeted drug delivery. Poorly soluble drugs can be incorporated in various colloidal system, and the lipid-based colloidal system, namely solid lipid nanoparticles and liposomes, have an added advantage owing their physiological components in the formulation. So this is all from my side. Thank you so much.
Thank you very much, sir. I request evaluators if they have any queries, they can ask. And I also request all the participants, if they have any queries, they can also ask. Mr. Parveen, can you tell me about the animal models? आपने इसमें mention करा है that animal models इसकी evaluation में use होता है. So what kind of animal models are basically used for the जो हम ये formulation develop कर रहे हैं for pulmonary route? Okay, ma'am, actually, as I said, this is the work which I am going for my PhD. So still, I'm working on it. I had taken, I'm trying to take at least one model, animal model, and I will work on it. And definitely, as it will, as the study will be over, I will share that also. Okay, and are you done with the selection of the drug? Yeah, I had done. Okay. So you have just started your work. अभी आपने Yeah. basically किया है. No, actually, ma'am, I'm working since last 1 year on my thesis. Okay. Okay. So, frankly speaking, I will not please. I'm not very much feasible to share much about it. Yeah, we understand. Yeah, that's okay. So इस पे आपने कोई अपना review अभी ready किया है? Because initially हाँ अगर जी आपने मैम, इतना मेरे दो research करा है तो. रिव्यू आर्टिकल मेरे दो पब्लिश हो गए हैं. वन रिसर्च आर्टिकल इज इन द पाइपलाइन. Okay. So you have made the formulation and आपने I'm उसकी also going evaluation for a कर ली है. patent with my topic. Okay. All right, Mr. Parveen, thank you. Thank you so much. Thank you all. Thank you very much, sir. Now, participants are also requested to open for queries. If they have any query. Otherwise, we will move on the next presentation. On the next, I would like to call Gurukula for her presentation. Balka is there? Sir? Yes, yes. Okay. Please limit me with your presentation, please. Okay, sir. Sir, my screen is visible or not? It is still sharing, not yet visible. Sir, my screen is visible or not? No, no, no. Yes, now it is visible. Can you please open your camera Okay. once? Good afternoon, sir and ma'am. You may open your camera, your video. It's not visible. Dr. Trivedi, are you there? Okay, okay, it's okay. Good afternoon, ma'am, and all the dignitaries. My name is Barka Chaturvedi, Assistant Professor, Shanti College of Pharmacy. I have presented my oral presentation on anti-Alzheimer activity of methanolic extract of Bushnania lenzen using behavior model on albinovistar rat. And first of all, I am giving a lots of thanks to Gurukul Kangri Vishwavidyalaya and the whole team of Prizal, Professor Preeti Tagde ma'am, for conducting such a wonderful and informative session. I have started my presentation. So, first of all, I am started with Alzheimer's disease. It is a progressive neurodegenerative disorder
resulting in a gradual decline of a person's memory and ability to learn, reason, make judgment, communicate, and carry out daily activities. Alzheimer's disease is irreversible progressive brain disease that slowly destroys memory, thinking skill, eventually even the ability to carry out the simplest tasks. It is a progressive dementia disorder, and Alzheimer's disease is an example of dementia. In this disease, the pathology includes that the accumulation of amyloid beta peptide. These are the plaques that are accumulated on our nerve cells. The nervous system is a complex network of nerve cells which regulate body voluntary and involuntary action and transmit nerve impulse between different parts of the body. There are the various symptoms of Alzheimer's disease like that the memory loss, difficulty making family tasks, disorientation, poor and decreased judgment, misplacing things. The main reason that the Alzheimer mainly responsible that the level of there are the various neurotransmitter that are present in the body like that serotonin, dopamine, and acetylcholine. So that the level of acetylcholine when decrease, then the Alzheimer disease may be start. My second slide is the pathophysiology of Alzheimer's disease. There are the main two factors which are mainly responsible for the Alzheimer's disease, like that the extracellular deposition of extracellular area of the nerve cells and the interneural area that form a neurofibrillary. Uh, there are many reasons that the Alzheimer's disease may occur, like that due to etiological factor, there are changes in a protein nerve cell in a cerebral cortex. Then after the accumulation of neurofibrillary tangle and the plaques that are formed on a nerve cells, after that the granulopascular degeneration process may be start. These may occur that the cholinergic level in a nerve cell may be decreased. After that the loss of memory function and cognition may be start. I have used Bushnania lenzen plant in my research. Bushnania lenzen is commonly known as a charoli and chironji, which are mainly used in some dessert and some also in various food products. It is a taxonomical classification of Bushnania lenzen. Bushnania lenzen may have a variety that it have contain flavonoids, saponine and phenol that have so much more antioxidant activity, and in Alzheimer disease the antioxidant level may be decreased so that this disease may be occur and the oxidative stress may also be occur. I have collected my plant from I have conducted this work in a research lab, Pinnacle Biomedical Research Lab, Bhopal. I have collected my plant from this lab. The herbarium was conducted by the botanist Safia College, and after that I have collected my plant. I have do extraction process. The whole process was used by a maceration process. I have used 150 to 200 gram albinovistar rat in my whole study. These whole work is conducting on a Pinnacle Biomedical Research Institute, Bhopal. The animal are kept in a case, and the animal are also laboratory condition at a period work for an experiment. The whole work is also approved by the Institutional Animal Ethics Committee in the supervision of experimental of from the quantitative application of like that that have present the flavonoids and phenol or not. After that, I have performed analysis like TPC and TS and the phenol content and flavonoid content or not. The active toxicological study as per the OECD guideline 423. This guideline may be the operative dose and the number of lethal dose. So I have conducting after that I have divided my animal in groups
like that. In each groups, I have used 6 animals. So in the first group is a control, which I like. After that, my second is a aluminum. I have used aluminum chloride for the neurotoxicity induction. I have used aluminum chloride toxicity induction, and my group third is I have give this route. I have give this from the interperitoneal route. Whole study conducted for a 28 days. Group third is a extract low dose. In this group, I have gave a 200 mg per kg per oral aluminum chloride and 42 mg per kg aluminum chloride. Group 4 is a extract group, that is a 400 mg. I have gave this inducer drug and my extract drug. Group 5 is a standard group, that is I have gave a paracetam. I have give 100 mg per kg oral drug to this group. I have performed the EPM, T-maze, radial arm maze. I have firstly performed the this model may conducting for the memory retention process. In this process, there are two arms. They are spent in a closed arm. If animal have not Alzheimer, then it is the second one is T-maze. T-maze and radial arm maze are mainly used for the memory retardation. In this, I have kept food pellets. If an animal have recognized, mainly the T-maze and radial arm are used for the memory recognition. If the animal is recognized in this model, we count the number of entries of animal and the time spent of the animal. This is my result. In this study, I have concluded that the vehicle group, I have performed this study and I have concluded that the aluminum chloride group is more significant, is spent lots of time in a closed arm. The vehicle group, the aluminum, the closed arm mainly perform the, it has more significant time as compared to other groups. It is a elevated plus maze. I have count the time spent. So the animal spent their more time in a the inducer group is spent their more time in a open arm and also in a closed arm as compared to the extract and the standard group. Radial arm is in this I have the animal we found that the what is the number of error. So the aluminum chloride group have show more significant and my other drug that the 400 mg is also significant to as compared to this group. This slide show that the time spent of animal by using the radial arm. So the vehicle group, aluminum chloride group, extract group, and the paracetam group. So the aluminum chloride group animal are spend their lots of time in a radial arm maze, and in this study I have concluded that the extract group is 400 mg group is more significant as compared to the aluminum chloride group. This is T-maze. After the discussion, scientific studies have described the use of various medicinal plants and their bioactive constitute for the treatment of anxiety and Alzheimer's disease. In this study, I have used the aluminum chloride for the neurotoxicity induction. It was used because the neurotoxic behavior of aluminum is known to occur up to entry into the circulatory system, where it can migrate to the brain and inhibit some function of crucial function of blood-brain barrier. In vivo pharmacological behavior study was also performed by the using of validated method for the cognition improving the activity of Bushnania lenzen leaf extract in rat are by using the elevated plus maze, T maze, and radial arm maze. In conclusion, it may be stated that the Bushnania lenzen leaf extract possesses a rich source of phytochemical like that the phenol, glycoside, flavonoid, tannin, carbohydrates, saponin, triterpenoids. Uh,
and the whole process was conducted in a different solvent system in the presence of diverse group of phytochemical. As the methanolic extract of leaf contain the more constitute, it can be considered beneficial for the further investigation. Therefore, the Bushnania lensin could have a potential source for the natural antioxidant that could have a great importance as a therapeutic agent in preventing or slowing down the process of aging and age-associated oxidative stress related to neurodegenerative and a neurological disorder. To conclude, leaf part of Bushnania lensin were found to be more effective in attenuating memory defect as compared to other parts. The mechanism by which Bushnania lensin leaf produce memory retention appeared to be similar as compared to a standard drug. The present study clearly revealed that the methanolic extract of Bushnania lensin has significant neuroprotective activity and show a marked constructive effect for improving the learning and memory. Thank you so much. Thank you very much, Bertha, for a nice presentation. Thank you so much. I request our respected evaluators, if they have any queries, we can please proceed. Barkha, can you name the chemical constituents of your drug? आप ये जो plant आपने लिया है, चिरौंजी, can you name the Yes, major ma'am. chemical constituents of this plant? Ma'am, mainly the phenol contained. No, what exactly? I mean, phenols में like exactly क्या compounds हैं? Phenols is a very very broad category. इस particular plant के कुछ major chemical constituents भी होंगे जरूर. Am I audible? Yes. Yeah, ma'am. Like that, the vitamins and calcium and proline. Ma'am, now just time I can't remember. Okay. And why have you taken only the methanolic extract? एक Ma'am, I have okay. So, ma'am, I have also said that the lots of chemical constitute are show their effect on this methanolic extract. I have also used as a ethyl acetate and petroleum ether for the extraction process. But So, the activity are mainly have a methanolic extract has a more activity okay, for आपने उन the particular extracts की भी आगे yeah, activity ma'am. check करी थी. Okay, so Yes, ma'am. Yes, ma'am. comparatively इस particular extract की ज़्यादा थी. Yeah, ma'am. Yeah. Okay, okay. Thank you, ma'am. Right, thank you, Barkha. Participants are also requested. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. Okay, so let's move to the next presentation. If Anjali Rajora is ready for the presentation, she may proceed. Hope my screen is visible to everyone. Yes, it is visible. Fine. So, good afternoon, everyone. Sorry. Just playing it in a full screen mode. Slide, yes, PowerPoint play.
Is it fine now? Yes. Okay, so good afternoon, everyone. The topic for my presentation is vaginal drug delivery, challenges and opportunities. Myself, Anjali Rajora, research scholar at Amity University, Noida, and working as assistant professor at Lloyd Group of Institutions, Greater Noida. So I've done this work in collaboration with my guide, Dr. Kalpana Nagpal and Dr. Kanchan Kohli ma'am. So the topics I'm going to cover under this presentation are abstract, introduction, formulations for vaginal drug delivery, challenges, opportunities, and references. Starting with abstract, as we have seen that in recent years, the level of interest has been increased in both systemic as well as local vaginal drug delivery system. It is due to the increased benefits in drug delivery facilities such as easy access, long-term storage, large area of entry, high blood vessels present at the site, low enzymatic activity, and prevention of first-pass metabolism. The currently available vaginal drug formulations have limitations such as leakage, messiness, and low residence time, which leads to the poor subject or patient compliance. So continuous attempts are being made to develop novel vaginal drug delivery formulations that can meet all the requirements of the user. The vagina has been considered a potential drug administration route for centuries. So most of the currently marketed and investigated vaginal formulations are composed with the use of natural or certain synthetic polymers which have different functions in the product. Next, coming to the introduction part, vaginal drug delivery indicates that the administration of different medications within the vagina to produce local or less frequently systemic pharmacological effects. We have seen certain active substances which are used in this, like it can be antibacterial, antifungal, antiprotozoal, antiviral. Certain labor inducers, spermicidal agents, and sexual hormones has also been formulated in vaginal dosage forms. So this route has been traditionally exploited for the management of local genital conditions, which are like vaginitis, labor-inducing or prevention purposes. So further extending systemic absorption after intravaginal administration of chemicals has been well known for a long time. In particular, low molecular weight substances or certain non-polar drugs are usually well absorbed and able to achieve better therapeutic levels. The disruption of vaginal ecosystem contributes to the overgrowth of pathogens, which causes complicated infections like bacterial vaginosis, sexually transmitted infections, and vulvovaginal candidiasis. So these are different formulations which are used nowadays for vaginal delivery that can be tablets, foam, solution, suppositories or pessaries, then vaginal rings, pellets, films, jelly. Certain ointments are also available, then gels, creams. And if you talk about nano drug delivery, then the formulations present are microspheres, hydrogels, nanoparticles, microemulsion, liposomes, neosomes, including certain in situ gels also. Now, coming to the main core part, challenges in vaginal drug delivery. As we know that successful drug delivery via the vaginal route remains a major concern because of inadequate drug absorption across the epithelium. Further, the rate and extent of drug absorption is also one of the main causes which affects the vaginal drug delivery. And it varies based on the age of the patient, its physiology, menstrual cycle, and various formulation parameters like it can be due to genital hygiene issues, drug permeability. Certain drugs are sensitive at vaginal pH, so these drugs cannot be used for vaginal drug delivery. Then coitus interference, messiness, or sometimes there are chances of leakage and low residence time, which leads to poor patient compliance and minimized therapeutic efficacy. While if we talk about opportunities, this route offers a number of benefits as well as compared to other drug delivery parameters. These are the presence of dense blood vessels in the vagina, which acts the potential site for local and systemic drug administration. So the advantages of this drug delivery are over oral administration are avoidance of harsh gastric environment and the ability to bypass hepatic first pass metabolism. This is one of the common advantage and as we can say opportunity linked to vaginal drug delivery. In addition, the drugs which are intended for local effect on the female reproductive system or topical vaginal application leads to a much higher drug concentration and enhanced efficacy. Then, as we have mentioned before, the avoidance of first-pass metabolism because absorbed drugs penetrate directly to the systemic circulation via inferior vena cava.
So prevention of hepatic toxicity induced by some drugs, for example, steroids. Other than this, easiness of administration and the possibility of self-insertion as well as removal of the dosage form. Then next is a protection of drug against certain GI gastrointestinal enzymatic degradation enzymes and interference with drug absorption and preclusion of side effects associated with oral route. And last, avoidance of parenteral routes associated inconvenience due to pain, tissue damage, or certain possible infections as well. So coming to the conclusion part, the development of certain novel drugs for female health comprising therapeutic substances such as peptides, proteins, antigens, or antisense oligonucleotides increase or gives the importance for the design of high-performance intravaginal drug delivery systems. Other than this, these systems exhibit mucoadhesive, enzyme inhibitory, and certain permeation enhancing properties as well. While the solid and semi-solid formulations like suppositories, creams, and hydrogels are widely used to date, and they are not particularly suitable for this purpose. So although they are easy and inexpensive to manufacture, but at this time they offer no such controlled long-term drug release, and they are more prone to leakage as well. So in addition, the development of more user-friendly formulations like intravaginal residence time increasing and less adverse effects during therapy are being coming in action and will lead to better patient compliance as well. So that's it from my side, and I'm open to questions now. Thank you very much, Anjali. This was a nice talk. And this session is open for question and answer. I request all the participants and our respected moderators. No questions from my side. Okay, thank you, ma'am. Devan sir. Any participants, do you have any queries? So thank you, Anjali. Thank you, sir. Thank you. You can leave now. You can unshare your screen. Now, if Purnima is ready with her presentation, I'm audible to Purnima? Yes, sir. Okay. So shall I continue with sharing my screen? Yes, yes. Wait for a second. From which ID you have login? Please repeat, sir. लॉगिन आपने लॉगिन किस नाम से किया है? Sir, Purnima only. Purnima. Okay, 1 second. I'm not getting your name in the list. Can you open your camera, please? Yes, sir. प्लेट एक आधी बचा लो यार, याद रखो जाओ. Hello, Purnima. Okay. Yes, sir. But login no, with the sharing my video is coming on the screen. Okay, okay. You have login with your one. Right.
Please try to share your screen, slides. Yes. So is it visible? Yes, yes. This is visible. So shall I start? Okay, you may continue, please. So good morning to one and all present over here. My name is Purnima and I am a student of Pharm and Kite School of Pharmacy. And today I will be presenting on the topic of pharmacological profile of teneligliptin, which is an anti-diabetic drug. So starting with the introductory part, basically I would like to introduce first diabetes mellitus. Diabetes is basically a state of hyperglycemia, which means the increased blood glucose level in blood. So it may be caused due to two reasons. First may be reduced insulin secretion by the pancreas, or suppose the insulin is secreted in enough manner, but the body cells are not responding to the insulin. This could also be one of the causes of diabetes mellitus. So based on these causes, diabetes could be of two types, type 1 and type 2. Type 1 is where the pancreas are not producing insulin or they're not producing it in enough quantities, which is the insulin dependent type. And type 2 is insulin independent, where the insulin is produced in enough quantities, but the produced insulin is not utilized by the body, or the body shows insulin resistance. So the drug that I'm introducing today is teneligliptin, which comes under the category of DPP4 inhibitors. So I would like to give a brief about DPP4 inhibitors. So DPP4 basically stands for dipeptidyl peptidase 4, which is an enzyme which is secreted by the, which is responsible for the inhibition of the incretins. So introducing the flowchart that is displayed. Suppose we are having some food. So in response to that ingested food, our intestine will secrete incretins, which are the hormones GLP-1 and GIP. So GLP-1 is glucagon-like peptide 1 and GIP-1 is glucose-dependent insulinotropic peptide, which are hormones which are responsible for better metabolism and digestion of the food that we have ingested. GLP-1 and GIP works on the pancreas and they increase cellular glucose uptake by increasing the insulin release. Then they also act on the liver and decrease the glucose output from the liver. So the DPP4 enzyme also present in the GIT tract is responsible for the inactivation of these incretin hormones, which in further could increase the glucose level in the body because they were responsible for the glucose metabolism. So DPP4 inhibitors basically inhibit DPP4, and due to that they increase the metabolism of the glucose present in the food. So moving further, DPP4 inhibitors are basically of three types, and this classification is based on the binding sites of the DPP4 enzyme. So class 1 binds to S1 dash, S1 and S2. Then class 2 binds to S2 dash, S1 dash, S1 and S2. And then class 3 binds to S1, S2 and S2 extensive, which is the larger loop in the end of the DPP4 enzyme, as you can see in the picture. So my drug, that is teneligliptin, belongs to class 3. Moving further, the chemical name of the teneligliptin is also displayed on the screen, and it binds to, and it is a drug with, belonging to class 3 classification of DPP4 inhibitors. The mechanism of action of teneligliptin is also similar to the DPP4 inhibitors, as I had already discussed earlier. It has a unique rigid J-shaped structure with 5 consecutive rings, which are responsible for tight bondage of the drug with the enzyme. So as displayed, this is the structure of my drug. Here you can see that the upper part, which is the piperazine moiety, binds to the S2 extensive size, which is the larger site as displayed earlier. Here you can see the S2 site is the larger domain. So the upper part of the piperazine moiety binds to the S2 extensive site. After that,
the upper moiety is also called the anchor lock domain because it binds to the bigger part of the enzyme and also more tightly to the binding site. Coming to the next one, that is the pyrrolidine moiety, which is the middle part. It binds to the S2 site, and lastly, the S1 site is bound to the thiazolidine moiety of the drug. Then moving further, the molecular formula of my drug is C22H30N6O7. 5 molecules in bromide per 2 molecules of the drug, and also it has n number of crystallization. The IUPAC name is displayed. The molar mass is 426 and it belongs to the category of DPP4 inhibitors. It is white crystalline powder with a melting 210 to 120. The other characteristics are log P, that is 2.54, pKa value is 8.61, and then the half-life is 20.8 hours, which is very long, and hence the efficacy of the drug is very long. Then the storage condition of the drug is minus 20 degrees Celsius to the room temperature, that is 25 degrees Celsius. The side effects of the drug include headache, constipation, dizziness, diarrhea, fever, hypoglycemia, nausea, and vomiting. The doctors suggest that the drug should be taken because it is a drug that is taken once in a day. So the time of the drug should be fixed so that it is easy for you to remember when to take the drug the same time the next day. Also, if you do not know and if you're consuming the drug for the first time, one should avoid driving and operating machinery so that if some dizziness is caused, so some mishappenings could be avoided. Then also hypoglycemia could be caused, which is a side effect that is common to all anti-diabetic medicines. So as a precautionary measure for hypoglycemia, also one can get sugary fruit juice or any sugar drink so to avoid hypoglycemia. And if one has any side effects or any symptoms that is not common to the drug, he must contact his doctor. The drug is available in the market with various brand names as displayed on the screen. The costing of the drug may vary from 75 rupees to 400 rupees. So that's it from my side. Thank you. Thank you very much, Purnima. The session is Purnima, आपने the pharmacological profile of this drug you have presented. Are you working on this drug, or it's just a general presentation that you have given? No, ma'am, I'm an analytical student and I have tried to develop an analytical method on reverse phase HPLC on the same drug. So that is why I was presenting. I chose this drug for the presentation. Okay. So what exactly the HPLC method you have Yes, developed? Basically, ma'am, I use a C18 column with the mobile phase as methanol and HPLC grade water for the analysis of the drug etanylgliptin in pure and as well as tablet dosage form. And also the developed method could show the stability profiling of the drug. Okay, you have done the stability testing also. Yes, ma'am. All right. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. If there is any other queries. So let's move on to the next presentation by Vipin Mahalia. Yes, Vipin, if you are able to listen me, please reply. Okay, I think he is not connected yet. Next presenter is Shweta. If Shweta is there. Yes. Please continue, Shweta.
No, no, not yet. Yes, please continue. Is visible? Screen is visible, sir? Yes, screen is visible. Just make it full mode. Full screen mode में convert कीजिए. Is it okay, sir? Yes, yes. Please continue. Okay, good afternoon to one and all present here. I am Shweta Joshi. I am presenting my oral presentation on my topic green synthesis, in vitro analysis, and in silico molecular docking studies of novel oxazole derivatives as potential antioxidant and antidiabetic agents. Next, introduction about diabetes mellitus. A chronic metabolic disorder called diabetes mellitus is characterized by unexpectedly high plasma glucose levels. It has remarkably high prevalence and poses a hazard to millions of individuals. The International Diabetes Federation, IDF, anticipated that there will be approximately 693 million cases in 2045 compared to the only 151 million cases in 2000. Diabetes complications start with significant alteration in the metabolism of lipids, oxidative stress, and inflammation after the manifestation of hyperglycemia. Next, next slide is introduction. Sir, it is visible? Hello. Yes. Sir, my slide is visible? Your slide is visible and audio is also clear. Okay. Next is introduction about heterocyclic compounds. As we all know, heterocyclic compounds are cyclic compounds with a ring containing carbon and other elements of heteroatoms such as oxygen, nitrogen, and sulfur, etc. The simple and important of five-membered heterocyclic compound are pyrrole, furan, and thiophene, each of which contains a single heteroatom. The five-membered ring also containing more than one or two heteroatoms such as azoles, thiazoles, thiadiazoles, oxadiazoles, triazines, imidazoles, purines, oxazoles, etc. As a heterocyclic compound show various pharmacological activities, that's why I use oxazole as an heteroatom for my study, which contain oxygen and nitrogen atom at first and third position of the ring. Like pyridine, oxazole are weakly basic substances. Oxazole is considered to be derived from furan by the replacement of CH or methane group from the position P by azomethanes or nitrogen group. This is the structure of oxazole containing oxygen at first position, third position nitrogen. It is a five-membered ring. These are some pharmacologically active medicinal compounds containing oxazole moiety like linezolide. The structure is shown here first. And second is furazolidone. Third is toxazole. Fourth is oxaprozine, which is under clinical trials as an antidiabetic agent. Diazole and aliglitazole, also an antidiabetic agent. That's why I have used oxazole moiety as an antidiabetic candidate because many oxazole containing derivatives showing antidiabetic activity. This is my synthetic procedure which I have done in my work.
Present work deals with synthesis and biological evaluation of 2,4-disubstituted oxazole derivatives. I have synthesized 8 molecules of oxazole containing different derivatives. Equimolar quantities of substituted amide were reacted with ethyl chloroacetate. Further cyclization occur in presence of lemon juice as a catalyst. I have used lemon juice as a green catalyst and ethanol as a green solvent because we all know that green synthesis is economical, less hazardous to environment and human and living organisms. The reaction mixture was stirred in magnetic stirrer at 60 to 80 degrees Celsius for 2 to 3 hours. The completion of reaction was checked by thin layer chromatography using an hexane and ethyl acetate in a ratio of 7:3. The reaction mixture was cooled at room temperature, filtered and recrystallized from 95% ethanol. After recrystallization, the product was filtered and dried. Then yield were calculated and physical parameters were obtained. Further confirmation of structures were obtained from IR spectrum of compound. This is the mechanism and the synthesis of my compounds. Next is the substitution at R1 and R position in oxazole moiety containing different amide derivatives and alpha haloketones. These are some derivatives I have prepared, and this is the physical parameters, percentage yield, melting point, molecular weight, RF values, time and temperature required for the synthesis of my compound. Next is spectral data representation of compound, FTIR data, and lambda max of different derivatives. This is the in silico parameters which I have done from online available software like Osiris for ADME properties like Swiss ADME and Toxter, which give toxicity parameters for all my different 8 derivatives. Like this is the molecular weight of different derivatives as compared to standard antioxidant ascorbic acid, curcumin and prolog. This is C log P values, hydrogen bond donor, hydrogen bond acceptor, Lipinski violation, molar refractivity, TPSA, total polar surface area, GI absorption, gastrointestinal, BBB, blood-brain barrier, P, GP, log P, log S, drug likeliness and drug store variabilities. All compounds follow Lipinski violation as well as Weber's rule because Lipinski violation shows 5 rule which contain molecular weight should be less than 500 gram per mole. C log P should be less than 5. Hydrogen bond donor should be less than 5. And hydrogen bond acceptor should be less than 10. And molar refractivity should be less than 140. So all the compounds showing these parameters follow Lipinski violation and other parameters, other rules also. This is the in vitro antioxidant and anti-diabetic activity which I have done in my study for all the 8 compounds. In vitro antioxidant activity is done by using DPPH, free radical scavenging activity, and these are the parameters of my antioxidant and anti-diabetic activities. And anti-diabetic activities, in vitro anti-diabetic activities done by using alpha amylase and alpha glucosidase enzyme for all the different 8 derivatives, and the standard taken for antioxidant activity is ascorbic acid, and for alpha amylase is ascorbic acarbose, and for anti-diabetic activity it is gogluose. Now, in silico molecular docking for all my derivatives has been done, containing these are 3 protein molecules which I have downloaded from protein data bank online, and these three proteins are for antioxidant superoxide dismutase. This is the PDB ID. Catalase, second one is for catalase, and third is glutathione peroxidase.
These are the docking parameters, the docking, molecular docking of all my compounds with the standard drug, curcumin, ascorbic acid, prologs. The first one is for ascorbic acid, as ascorbic acid, curcumin, and prologs are best antioxidant. As compared to this, my compound, basically 3 to 4 compounds are showing molecular docking or best docking with these receptors, superoxide dismutase, glutathione, and other receptors. Like this is my compound A2, which is showing best docking with antioxidant receptors, and these B and C are also a receptor containing different antioxidant receptors. E, F, G, and H are called ligands, oxazole ligands, which I have prepared and showing antioxidant activity with the receptors superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase. This is the docking interaction of selected oxazole ligand with the targeted receptor showing antidiabetic activity. For antidiabetic activity, I have also selected receptors for docking purpose with my selected ligands with showing antioxidant activity. The antioxidant activity shown by 4 best ligands are considered for antidiabetic activities, and these antidiabetic activities are shown by those 4 molecules also. So this is the parameters for in silico molecular docking analysis. This is the minimum binding energy shown by all the active molecules against antioxidant as well as antidiabetic candidate. Compound A2 and compound A6, A7, and A8 showing best molecular docking studies with the receptors, with the antioxidant receptors such as superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase, as compared to ascorbic acid, curcumin, and prologs. And on the other hand, antidiabetic in silico antidiabetic activity is shown by compound A2, A6, A7, and A8 the same as antioxidant activity with alpha amylase and alpha glucosidase enzyme when taken in silico parameters as compared to ascorbic acid and the glucose. As conclusion, to conclude, we describe the rapid, efficient, and eco-friendly and low-cost method for synthesis of various novel oxazole derivatives by using various substituted amides and reacted with alpha haloketones, hyaluronic using lemon juice as a clean catalyst. The compounds were characterized by FTI and randamides. In addition, all the synthesized compounds were screened for in vitro antioxidant and antidiabetic activity by DPPH radical scavenging assay and alpha amylase and alpha glucosidase activity to understand as well as to support the in vitro antioxidant and antidiabetic study of new synthesized compounds from the rational design of novel and potential inhibitor molecules. Molecular docking studies were performed. The compound A2, A6, A7, and A8 displayed promising antioxidant and anti-diabetic activity as compared to standard drugs. These were well supported by the in silico molecular docking and binding energies. In addition, all the compounds obey the Lipinski rule of 5 and Weber's rule. In vitro DBPH radical scavenging activity and antidiabetic activity shows that compound A2, A6, A7, and A8 shows excellent activity when compared with standard drugs. Hence, the experiment and in silico studies indicates that compound can be explored for their application in the prevention of free radical related diseases like hypertension, anti-inflammatory, cancer, rheumatoid arthritis, diabetes, vascular diseases, and hyperplasic diseases associated with oxidative damage. So, in my present study concluded that the molecule can cure diabetes. Further in vivo studies will be done for these compounds. Thank you. Okay, thank you very much, Shweta. Okay. I request our respected evaluators and all the participants, if they have any queries, they may ask, please.
Shweta, was there any compound which was having better activity than the standard? Yes, ma'am. Which one? Ma'am, compound A8 shows best activity as compared to standard. I have shown in the slides. A5, A5 na? Yes, sir, compound A8 shows best antioxidant activity as compared to ascorbic acid and curcumin. The in vitro results match with the docking results? Yes, ma'am, not exactly, but it matches that it shows that the compound A2, A6, A7, and A8 also showing some interaction with the receptors and can be used as a anti-diabetic candidate. Because I don't think in vitro results और docking आपका जो results आ रहा है वो match हो रहा है. So नहीं, ma'am, maybe you can say that comparable to standard, it would be a better thing to say rather than telling that it is better, much better or more active than the standard. Yes. And one more thing, आपने NMR नहीं कराया इसमें for the Ma'am, अभी central NMR under characterization? process है, मैंने कराया है, Okay. वो भी भेजा है. Yes, ma'am. NMR and mass both. Both. Okay. All right, Shweta. Thank you. Thank you. श्वेता, आपने क्या लेमन जूस क्यों लिया है? सिट्रिक एसिड प्योर क्यों नहीं लिया इसके रिएक्शन के लिए? सर, मैंने लेमन जूस लिया था, फिर उससे एक्सट्रैक्ट नहीं किया, अभी उसको ही पूरा एज इट इज लेमन जूस ही यूज किया. I think that reaction is between the amide and the acid halide ना? Yes sir, yes sir. इसमें कोई बेस ज्यादा और सही रहेगा मेरे हिसाब से, या एसिडिक कंडीशन में ही थी ये रिएक्शन? Sir, acidic condition required these conditions. That was given in the literature. Yes sir. जनरली जैसे हम करते हैं लैब में, तो जनरली हम कोई भी सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर कुछ उस टाइप का लेते हैं ना कैल्शियम. मेरे को जस्ट अपोजिट लग रहा था ये वाला रिएक्शन, बिकॉज हमको यहाँ से क्या निकालना है? HCl निकलेगा ना. Yes sir. HCl निकलेगा तो उसके लिए तो हमें कोई बेस चाहिए होता है. देखो आप रिएक्शन को यदि इसको थोड़ा सा करोगे. Yes sir, yes sir. आपने एसिड लिया है तो यदि यहाँ पे अमाइड का रिएक्शन होगा, आपका हैलाइड जो एसिल हैलाइड आपने लिया है, तो दैट इज ए लिबरेशन ऑफ द HCl. अगर HCl को हमें साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो देन वी हैव टू टेक द सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम. देख रहा आप इसको कि इज इट राइट और नॉट? मेरे हिसाब से तो बेस होना चाहिए था. Okay sir, I will check. आपके NMR उसके बाद पता लगेगा जब HRMS वगैरह आप करा दोगे इसका ना, कि हुआ कि नहीं हुआ. मेरे हिसाब से एसिडिक कंडीशन में तो रिएक्शन रिटार्ड हो जाएगी. ठीक है. श्वेता, कोई ओक्साजोल कंटेनिंग एंटी कैंसर ड्रग अवेलेबल है मार्केट में? Yes sir है. Which one? सर, मैंने पढ़ा था सर, लेकिन अभी ध्यान नहीं. एंटी डायबिटिक हो कोई? एंटी डायबिटिक है सर. सर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अंडर स्टडी है एंटी कैंसर, वो मैंने पढ़ी थी वो सर थ्रू मराइन सोर्सेज एंड अदर नियोपेल्टुलाइड एंड बेसुलाइड, ये मराइन सोर्सेज से है सर अभी एंटी कैंसर ड्रग्स, लेकिन सिंथेटिक ड्रग्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है सर. वो कंटिन्यू. ओके. Okay, thank you very much, Shweta. Thank you sir. Okay. You can unshare your screen. Devendra sir? Yes, sir. Can we move to the next presentation? Yeah, definitely. Okay, thank you, sir. So in the next, in this row, the next presenter is Rutali Tomar. हाँ जी सर. हाँ जी सर. Okay. Wait a second. Yes sir. Good afternoon everyone. Good afternoon.
तो क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को सबको? ठीक है सर। Myself Rupal Tomar. I am a research scholar under Dr. Pankaj Chhabda ma'am from Munnanal Janaran Khemka Girls Degree College, Saran. My topic is imparting nutrition knowledge and dietary counseling among old age people to assess the level of adoption and improvement in their dietary practices. My introduction is old age group has included in vulnerable section due to physical degradation, resulted disease susceptibility, ignorance about nutrition care management during this age is the leading cause of elderly malnutrition and aging induced degenerative diseases. इस एज में क्या होता है सर? एक तो ओल्ड एज जो होता है, जैसे बढ़ती हुई एज है, उसमें लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल केयर और मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके अंदर माल न्यूट्रिशन और डिजेनरेटिव डिजीजेस के लिए जो वो है, उनकी बॉडी प्रोन हो जाती है और उनकी जो शारीरिक गिरावट और रोग संवेदनशील हो जाती है उनकी बॉडी. हेल्दी एजिंग इज अ की ऑफ वेलनेस इन ओल्ड एज that requires a modified balanced nutrition and active lifestyle for elderly from all economic status or income group. Nutritional care can manage even in poor economic condition of elderly, but nutritional awareness is necessary for that with knowledge of maintaining sanitation and hygiene. Imparting right nutritional knowledge and preparation of low-cost nutritional and medicinal value-added food products with functional diet is a prime need to overcome the rate of morbidity from elderly. Therefore, the present attempt has been formulated an intensive nutritional intervention course for elders to assess its impact. My methodology is, in the experimental research design, a pre-post test method was adopted to assess the impact of implemented nutritional intervention for selected old age respondents. सैम्पलिंग में हमने 600 ओल्ड एज लिए थे टोटल, जिसमें से 300 मेल और 300 फीमेल्स हैं जो कि पुअर कम्युनिटी से लिए गए थे, और इंटरव्यू शेड्यूल के द्वारा उनका मैंने डाटा इकट्ठा किया था, जो कि सहारनपुर के 5 ब्लॉक लिए गए थे. उसमें से 600 में से 123 रेस्पोंडेंट्स जो थे हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर आ रहे थे, जो इंटरवेंशन के लिए रेडी थे. इसमें क्या था जो, और इसमें हमने एल्डरली को जो पार्टिसिपेट किए था हमारे इसके अंदर इंटरवेंशन के, उनको हमने 7 दिन का डाइटरी इंटरवेंशन कोर्स कराया था, या फिर कह लो 7 दिन मैं उनके घर गई थी, उनको हर चीज, मतलब मैंने एक टेबल बनाई हुई थी उसके हिसाब से कि मुझे फर्स्ट डे समझाना है, सेकंड डे ये समझाना है, ऐसे ऐसे करके पूरे 7 दिन तक मैं उनके घर गई थी उनको समझाने के लिए. देन शोड द हाईली इंटरेस्ट, उनका जो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने काफी हाईली इंटरेस्ट दिखाया था मेरी स्टडी. इसमें मेरी स्टडी के अंदर 4 जो है वो फेजेस हैं. पहला तो है प्री टेस्ट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स, फिर इसके अंदर हमारा सेकंड वाले में है हमारा रेसिपीज डेवलपमेंट का और सेंसरी इवोल्यूशन का, और जो थर्ड वाला था उसमें हमने उसको कंडक्ट किया था, अपनी जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन बनाई, हमने जो प्रोग्राम बनाया उसको हमने थर्ड स्टेज पे हमने उसको कंडक्ट किया था, एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया था अपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम को. और पोस्ट टेस्ट में हमने उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस का, मतलब सब्जेक्ट्स के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे क्या इफेक्ट पड़ा वो देखा, और हमारे इंटरवेंशन का मेनली क्या इफेक्ट पड़ा उनके हेल्थ स्टेटस पे. ये है रिजल्ट्स मेरे सर. इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स लिए हैं. इसमें सबसे पहला है डेमोग्राफी ऑफ एल्डरली. क्या सबको सुनाई दे रहा है? हेलो जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं. ठीक है. इसमें सबसे पहले लिया गया है सर डेमोग्राफी ऑफ एल्डरली. इसमें सबसे पहले जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन है. 123 में से 62.6% फीमेल थी और मेल की परसेंटेज थी 37.39. इसमें फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था जो इंटरेस्टेड थी मेरी स्टडी में. उसके बाद एज वाइज अगर ले लें तो आपने बोला था कि 300 लिए आपने, अभी आप इसमें अलग सर डाटा. अभी नहीं मैं बता रही हूँ ना सर, 600 टोटल था,
जिसमें से 300 मेल और 300 फीमेल थे, ठीक है। उसके बाद उसमें मैंने प्री टेस्ट तो मैंने 600 पे किया पूरे पे, लेकिन जो पोस्ट टेस्ट था उसके लिए सिर्फ 123 पीपल ही वो हुए थे, एग्री हुए थे इंटरवेंशन के लिए। ये है उसमें जो अगर एज वाइज देखे तो 60 टू 60 से 70 वाले जो थे वो 74% थे, और 70 से 80 वाले सिर्फ 24% थे, और 80 से अबव वाले तो सिर्फ 2% ही थे। क्योंकि वो लोग क्या थे, वो कहते थे कि भाई हम इतनी सारी चीजें अडोप्ट नहीं कर पाएंगे, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हम जो कुछ खा रहे हैं हम तो सिर्फ वही खाएंगे, हम चेंजेस नहीं चाहते अपने डाइट में। तो सिर्फ 80 से अबव वाले जो थे वो बहुत ही ज्यादा, मतलब जो पहले से ही लाइफस्टाइल जी रहे थे, अपना जो खा रहे थे, वो कोई चेंजेस नहीं चाहते थे अपने उसमें। बल्कि 60 टू 70 वाले जो थे एज ग्रुप वाले, वो हाईली प्रेफरेबल थे, वो कहते कि नहीं आप बताओ हम ट्राई करेंगे। इसमें क्या है हमारा रिजल्ट ऑफ प्री पोस्ट टेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। इसमें 7 दिन का था। 7 days न्यूट्रिशन इंटरवेंशन वाज फॉर्मुलेटेड एंड अप्लाइड ऑन रेस्पोंडेंट्स individually at their home. The mean score of pre-post test on all selected aspects, all selected aspects has analyzed the findings are presenting in the following tables. सबसे पहले टेबल में क्या है, प्री टेस्ट एक्सपोजर। इसमें हमने उनका अवेयरनेस लेवल चेक करा है न्यूट्रिशनल नीड और वेलबींग के लिए। इसमें सबसे पहले क्या था हमारा, इसमें हमने एक क्वेश्चनेयर लिया, उसमें हमने 10 मैक्सिमम स्कोर रखा हर क्वेश्चन का। अब सबसे पहले हमने उनसे पूछा अबाउट मैनेजमेंट ऑफ बैलेंसिंग डाइट ड्यूरिंग ओल्ड एज। इसे हमने ए से एडोप्शन ऑफ डाइवर्सिटी इन डाइट, बी से इंक्लूजन ऑफ फंक्शनल मेडिसिनल फूड्स को, सी से अबाउट किचन हाइजीन एंड क्लीनिंग प्रैक्टिसेस एट होम को, डी से अबाउट एडोप्शन ऑफ एक्टिव लाइफस्टाइल विद अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल टोबैको एंड अदर नैरोकोटिक एजेंट को ई से डिनोट किया है। इसमें जो 10 में से उनको स्कोर मिला है, उसमें ए में मिला है 5.36, ये मीन स्कोर है। फिर एडोप्शन में से एडोप्शन ऑफ डाइवर्सिटी इन डाइट बी में मिला है 4.75, सी में मिला है 3.43, डी में मिला है 5.25, ई में मिला है 3.53, और टोटल स्कोर उनका 50 में से है 22.23, जो कि काफी कम था। अब ये तो प्री हो गया। अब जब मैंने उनको इंटरवेंशन दिया, उसके बाद जब मैंने उनका डाटा लिया कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है मेरे इंटरवेंशन का, जो मैंने रेसिपीज उनको बताई, जो जो चेंजेस मैंने उनको करने के लिए दिए, उसके बाद उनका जो डाइट थी उसके ऊपर, उनकी नॉलेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें पॉइंट्स तो वही है सर। बस जो प्री था उसमें ए था, पोस्ट में A1, B1, C1, D1, E1 ऐसे किया है। इसमें क्या है, अबाउट मैनेजमेंट ऑफ बैलेंसिंग डाइट ड्यूरिंग ओल्ड एज में 8.43 है, एडॉप्शन ऑफ डाइवर्सिटी इन डाइट B1 7.67 है, और C1 में 7.28 है, और D1 में 8.56, और E1 में 7.63 है। टोटल स्कोर 39.57, जो कि इंक्रीज हुआ है हर उस पड़ाव पे, A1 पे भी, B1 पे भी, C1 पे भी। कुछ ऐसे थे कुछ जिसमें कम हुआ है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है स्लाइड में स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस के लिए प्री और पोस्ट एक्सपोजर का। A1 में 5.36 था, सॉरी A में 5.36 था, A1 में 8.43 है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है। इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला 0.0 लेवल पर। बी में जो बी था उसका 4.75 था, B1 में 7.67 था। इसमें नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला। सी वर्सेस C1 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला है 0.01 लेवल पे, और D वर्सेस D1 में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला 0.5 लेवल पे, और E वर्सेस E1 में जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला 0.01 लेवल पे। T वर्सेस T1 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला 0.01 लेवल पे। यानी कि जो मैंने इंटरवेंशन किया और उनको जो नॉलेज और उनकी जो काउंसलिंग की, उसका उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट है मेरा conclusion. The findings and results of present attempt has been concluded that the female elderly were more interested to participate in study than males
sorry, than males. Maximum elderly had belonged to 60 to 70 years age group. The door-to-door nutrition intervention showed a good and significant impact on improving in knowledge of elderly. Thereby, the dietary practices of all respondents have been changed as accordance to need of healthy aging and suitable for wellness in old age. Therefore, it is proved that the individual nutrition intervention can better improve the knowledge and practices in right way to improving the quality of life of elderly. Thank you. Thank you, Rupali. हाँ जी सर. हाँ. Any questions, sir? Yes. डायग्नोसिस क्या क्या किया, न्यूट्रिशनल क्या क्या डायग्नोसिस डायग्नोस किया है? हाँ हाँ सर बिल्कुल. क्या इसमें क्या है जो हाँ जी क्या पैरामीटर लिए डायग्नोसिस के? डायग्नोसिस में मैंने क्या क्या पैरामीटर्स लिए हैं जी. इसमें सर मैंने एक तो इनका बीपी चेक किया था. बीपी का क्या फर्क पड़ता है आपके डाइट से? ब्लड प्रेशर. डाइट सर काफी चीजें फर्क डालती है. अभी बता रही हूँ मैं, बस 1 मिनट सर, अभी बता. और क्या चेक किया? इसका सर मैंने ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया था, ब्लड प्रेशर चेक किया था मैंने उनका मैंने 24 आवर रिकॉल डाइटरी मेथड से उनकी डाइट को मेजर किया था कि उन्होंने कितनी एनर्जी, कितनी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स ये लिए थे. 24 और 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड 3 दिन का चेक किया था सर मैंने उनका. 3 दिन और के आप 300 लोगों से या 600 लोगों से कैसे कनेक्शन में रहे 3 दिन के लिए? तो सर 3 दिन के डिवाइडेड सर काफी लंबा प्रोसीजर है सर. एक्चुअली मेरी पीएचडी 2018 से चली हुई है और 600 लोगों पे ये समझ लीजिए आप, मुझे कम से कम 1 साल से ज्यादा मुझे 600 लोगों के प्री डाटा में लगा. that is your data collection, that is your problem. I'm just asking the question that how you have connected with these 600 people, 600 person, you have collected the data from blood serum data, etc. ना? Then where you check that data, how you will get syrup, albumin वगैरह check किया आपने ग्लूकोज उनका कितना हीमोग्लोबिन? सर एक्चुअली हाँ, एचबी भी चेक कराया था. मैं अपने साथ एक बंदे को लेके गई थी जिसने एचबी चेक किया था, बीपी चेक किया था और शुगर चेक सजेस्ट की थी. डाइट सर उनके उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट की थी, उनकी डिजीज के या फिर जो उन्हें प्रॉब्लम्स थी. मैंने कुछ रेसिपीज जो है वो बनाई थी अपनी लैब में. लाइक इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए मैंने उनके लिए हर्बल बार बनाई थी जिसमें हमने आंवला, कैरेट, जिंजर, डेट्स मिक्स बार, इन सब चीजों को यूज करके न्यूट्रिशियस बनाया था ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम कर सके वो. और एक और था सर, इथिकल कमेटी से आपने अप्रूवल लिया था इस चीज का? ह्यूमन इथिकल कमेटी वगैरह किसी मेडिकल कॉलेज? हाँ ये मैंने अपनी गाइड से लिया था. अरे बच्चे गाइड से नहीं लेते ना, इथिकल कमेटी. यदि आप कोई उनको मेडिसिन या कुछ दे रहे हो, नया कोई फॉर्मूला दे रहे हो, then you have to take the approval from your authority ना, that will available only the medical colleges. सर एक्चुअली मैंने अपनी मैम से पूछा था तो मैम कहने लगी कि जब मैं एग्री कर रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है तुम, क्योंकि मुझे ये सजेस्ट करनी थी उन्हें, बनाना ना बनाना उनका काम था. मैम कह रही थी कि आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, बताइए उनको और फिर रेस्पॉन्स देखिए कि उनका क्या आता है, कौन लोग ट्राई करते हैं और कौन लोग नहीं ट्राई करते. ये था. नहीं, आपने तो ब्लड सैंपल्स लिया, कलेक्ट किया होगा ना उनका, तो उसके लिए तो अप्रूवल लेना पड़ता होगा, ऐसे कलेक्ट कर? हाँ वो नहीं ब्लड सैंपल के लिए मैंने सब्जेक्ट का अप्रूवल लिया था. सब्जेक्ट का कि उसे मतलब जो जैसे 123 सब्जेक्ट मेरी स्टडी के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो मैंने उनका अप्रूवल लिया था कि उन्हें मैं सैंपल लेने से कोई आपत्ति तो नहीं है. उन लोगों से अप्रूवल नहीं, एक होती है ना इथिकल कमेटी से लिया होगा ना आपने अप्रूवल. आपके कॉलेज में बनी होगी इथिकल कमेटी. हाँ जी सर, वो मैं बता रही हूँ आपको, जो मेरी जो गाइड है वो प्रिंसिपल है और सारी चीजें उनके अंडर है. तो वो जो पेपर वर्क प्रोसेस है वो सब मैंने उन्हीं के थ्रू कराया था. हाँ सर आप समझ रहे हैं, मैंने बात करी थी अपनी गाइड से, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम काम करो, बस वर्क पे फोकस करो.
बेटा मैडम जो होती है ना, मैडम प्रिंसिपल है, मैडम के यदि आप पेपर पब्लिश करोगे तो मैडम का थोड़ा लिखोगे मेरी मैडम प्रिंसिपल है, वो लिखना पड़ेगा ना कि कौन सी एथिकल कमेटी से अप्रूवल ले रखा है आपने, बिकॉज यू आर हाँ जी, कलेक्टिंग वैसे द ब्लड वैसे सैंपल। सर, हाँ हाँ। सुनो सुनो, आप सुनो, थीसिस जमा नहीं की ना, तो लिखो यू नहीं नहीं नहीं। आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है उनसे, तो या आपने अच्छा, कोई नया कोई आपने नया एक्सट्रैक्ट उनको पिलाया खिलाया, तो उसका एक ठीक एथिकल ठीक कमेटी ठीक से अप्रूवल लेना होता है। यदि ऐसा नहीं ठीक है। किया है तो ब्लड सैंपल वाले डाटा को आप हटा देना। आप बीपी जो कर रहे हो, ये छोटा जो फिजिकल डाटा है, यू कैन चेक इट व्हेन यू आर यूजिंग द ब्लड ओके, सैंपल एंड यू आर गिविंग एनी एक्सट्रैक्ट, दैट इज ए नॉट ए कंसिडरेबल, इथिकल। विदाउट पेपर पब्लिश भी नहीं होगा आपका इस पे ना। अच्छा अच्छा, इसमें ब्लड सैंपल का इस पेपर में है नहीं सर, इसमें तो सोनी मैडम, फूड से आप रिलेटेड ही है। हाँ, आप मैं समझ गई सर आपकी बात। हाँ, मैं समझ गई आपकी बात, एथिकल कमेटी से परमिशन के लिए थैंक यू, मैं समझ गई सर आपकी बात। देवेंद्र सर, प्रिंस सर, ओवर टू यू। Uh, Now I'm requesting Dr. Hariom Saxena ji to kindly give your presentation that's on the development of validated SPTLC method for simultaneous determination of the sitosterol and luteol in that Uraria picta, a species of Dashmula rishta for quality control. I request Dr. Hariom Saxena. Thank you, ma'am. Yes. Sharing my presentation. Is it there? I'm just sharing. Hello, Yes, sir. I'm sharing it, sir. Share your screen and ask to video. Please open your video now, sir. Share your screen, sir. Yes, I'm. There's a video, sir. Yes, sir. Hello. 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 सर आवाज आ रही है आपकी, बोलिए, स्टार्ट करिए। अच्छा सर, स्क्रीन विजिबल है सर? स्क्रीन विजिबल है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Dr. Hariom, can you please open your video as well? Okay, sir. Video as well. Camera. And do it on slide share mode.
Yeah, perfect. It's okay, ma'am. It's okay, ma'am. Now. Hello. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Good afternoon, respected chairperson and co-chairperson and all delegates and friends. First of all, I would like to thank the organizers for giving me this opportunity to present my work in this international forum, international conference. So, thank you very much, sir and madam. That I am going to deliver to show my work on the development of HPTLC method, validated HPTLC method for simultaneous determination of beta-cytosterol and lupiol in urea picta, and it is a species of Dosmula rest, and for its quality control. This is the summary. We have taken the root, stem, and leaf, 3 plant parts, and after following the some procedure, drying, powdering, extraction, and other steps, we have just determined and developed the method and determined and quantified the 2 marker compounds in this species. This species is a very important species, and this is commonly known as Prashil Parni, and it is one of the species of the Dosmula rest. Actually, principally its roots are employed for the formulation of the Dosmula rest. And Dosmula rest is a well-known Ayurvedic formulation, we all know, and this is used for the treating fatigue and oral sores and several gynec problems in women. So, and this species is also listed in the list of NMDB as a highly traded species. Annual trade of this species is approx 100 metric tons per annum. And regionally, in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, and in central Indian states and other also states, this species has been reported as critically endangered species. So, it's very important species, and this is the pharmacological profile of this plant. The plant exhibited various biological activities, including antiseptic, antimicrobial, and anti-ulcer, anti-hypodynamic, and anti-pulmonary hypertension, anti-oxidant, anxiolytic, and also effective in the treatment of Alzheimer's disease. And this species also have been reported to have various traditional uses. Like roots are used to treat various like cough, chills, and fever, and decoction of leaves is used to treat diarrhea, gonorrhea, and uterine contractions, and also helpful for the suppressing the tumor growth. And further, this plant is also used as an antidote to the venom and Achaeus carinata, a poisonous Indian snake, and healing of the fractures also. So this species, this is a pharmacological profile of the species, and we have selected 2 marker compounds, lupiol and beta-cytosterol, as per the mentioned in the quality standard of Indian medicinal plants ICMR publication. And these 2 marker compounds have been reported to have a lot of biological activities like lupiol, like anti-protozoal, antimicrobial, anti-tumor, anti-prostate, anti-pancreatic, anti-skin cancer, and anti-inflammatory activities. Similarly, beta-cytosterol is also reported to have anti-inflammatory, anti-neoplastic, antipyretic, and immunomodulating activities. So these 2 are the very bioactive are the marker compounds having very good biological activities. And so these compounds have been taken as a selected for the method development for this species. And as we know that the quality and efficacy of each and every plant medicinal species depends on their biologically active compounds. That is also called the active chemical markers. And market price, whenever we go in the market, they also industries and they also talk about what is the chemical concentration of the biological compounds in their plant material. So market price also depends on these chemical ingredients. And WHO and herbal pharmacopoeias, they are also laying a strong emphasis on the quality control and quality standardization of these medicinal plant species with respect to their chemical marker compounds. As far as this species is concerned, till date only one method has been developed for the quantification of roifolin compound in aerial parts of this species by Yadav et al. 2009. And but not developed any method still for the roots, which is the main part of this species, which is utilized in the Dosmula rest formulation. So we have just taken this plant, and also we have this part, and also we have selected
we have taken the leaf and root stem part also to to develop the method and to quantify these two marker compounds in the all three plant parts and specifically for the roots. And so this was the objective of the study, to develop a method for the simultaneous determination of two marker compounds for the quality standardization of this species. This was the methodology. We have taken the two marker compounds, beta-cytosterol and luteol, and we have made the solution, stock solution of 1 mg per ml concentration, and then serial dilution of stock solution to prepare the liquids, 100, 150, 200, 250, 300 mg per ml. And similarly, we have also prepared the test samples, 2 gram of each of the plant part has been taken and reflect in the methanol, and then dried and volume made up to 50 ml. And these standard as well as the samples have been applied on the HPTLC plate using the applicator. And then we have tried various mobile phases, but we found that toluene, methanol, and chloroform into 8:1:1 ratio, volume by volume, is found to be suitable for the separation of the bands. So after development of bands, and we have then plate was debitized with the anisaldehyde sulfuric reagent and then heated at 105 degrees centigrade for 5 minutes in the HPTLC plate heater, and then scanned in the densitometric scanner at 525 nanometer. And we have carried out the experiments in triplicate, and result expressed as mean plus standard deviation. And method was developed by following the ICH guidelines in the International Conference on Harmonization in terms of the linearity, recovery, precision, and specificity. You can see here that first one is the HPTLC chromoplate of standard beta-cytosterol and luteol, and test sample after debitization. And second one is this is the chromatogram of beta-cytosterol and luteol, showing the simultaneous separation of both compounds. They are well separated by the from the base itself. And this is the third one is the HPTLC 3D densitometric chromatogram of standards beta-cytosterol and luteol, showing the peaks in the all tracks. These are the calibration curves of beta-cytosterol and luteol we have plotted using the different concentration of the standard solution. We have validated the method as per the ICH guidelines in terms of linearity range and the correlation coefficient, slope, intercept, and LOD, LOQ, and specificity. So all the data has been given here, and using this regression equation, we have quantified the concentration of the luteol and beta-cytosterol in the root sample, root and in the different plant parts of the species. We have also analyzed the intraday precision of the standard, and this was found that the percentage RSD should be less than, as per the ICH guidelines, the ICH means the percentage RSD, relative standard deviation, should be less than 2%. So here we have found that for the beta-cytosterol 1.43% and for luteol 1.21%. And similarly for the intraday precision, for luteol 2.92, and for this for beta-cytosterol also is found less than 2%. This is the recovery study to evaluate the accuracy of the method. How our method is accurate actually. We have to also standardize this accuracy and recovery study. So we have found that the method is more accurate, and actually as per the ICH guidelines, the recovery should be between the 98 to 102%, 102% in between. So we have in our developed method, it is found less than in between the 98 to 102%. So method was very accurate. And then this is the overhead spectra, and to determine the specificity of the method, how the method is specific. This you can see here that all the means the peaks, this spectral peaks, they are the overlaid on each other, and they are having the standard also and all the test samples also. So they are overlaid on each other. So method is very specific for the both particular compounds in the presence of other compounds also in the samples. These are the contents of the beta-cytosterol, luteol,
in the mentioned plant parts, leaf, stem, and root. And see, in root, the concentration of lupeol was found maximum in the root, 0.28 percentage, and beta cytosol was found maximum in the leaf samples. So, and all the data has been differed significantly as per the statistical analysis. So, this, as we know that the chromatographic fingerprinting proved to be a comprehensive method for the quality assessment and authentication of raw materials. So, this study resulted in the estimation of beta cytosol and lupeol in the all selected plant parts and through the validated SPTLC method. And the developed method is very precise, simple, and accurate and specific for the simultaneous determination of these two marker compounds. And this method made the ICH validation acceptance criteria such as linearity, precision, accuracy, and specificity, and would be potentially can be utilized for the routine and quality control analysis of this vector. And this work has been recently accepted in the Acta Chromatographica Journal, having the impact factor 2.08. So, thank you very much, sir. This is all about my study. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, sir. Thank you sharing for your research. That is very wonderful research. So my question is that just like that, you have worked on this Perni, है ना? Arcaria beta. तो क्या बाकी प्लांट है उस पर भी करके क्या इसकी तो स्टैंडर्ड पूरे 10 मोलर रिस्ट के भी सेट हो सकते हैं? जैसे हम इसकी डोज है कि डोज कैलकुलेट करते हैं हम लोग ना फार्मेसी में, तो इसी तरह 10 है, 10 का कंटेंट करके क्या उसको वो एक तरह से एलोपैथिक उसमें भी आ सकता है सिस्टम में? तो देयर इज ओनली डिफरेंस कि जो हम एलोपैथी में यूज करते हैं, वी विल यूज द प्योर कंपाउंड्स फॉर दैट। राइट सर, राइट। तो जैसे आपने किया है, तो इसी तरह का काम यदि बाकी के 9 पे भी किया जाए तो पूरा 10 मोलर का फॉर्मूला ही निकल के आ जाएगा। Sir, for your kind information, sir, I would like to bring to your kind notice that we have worked on the Solanum indicum, that is another species. Solanum indicum. We have also worked on the Solanum xanthocarpum, another one species. We have also, I have one All India coordinated project on Orojalum indicum and on this Desmodium gangetum and Urea picta, this one. So I think 5-6 species I have worked out, and still one project has been submitted on the Eagle marmalose, bale, and rest that is Premna integrifolia, that is Agrimantha. We have just collected because this species is critically endangered and only available in some part of the Western Ghats of Maharashtra state. So we have collected the germplasm, we have saved in the nursery. So we are also working on that. So your suggestion is, sir, well taken, sir, and we are working on that, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Devinder, sir. Okay, thank you very much, sir. It was really a nice presentation from your side. I hope all the participants will be benefited with this presentation. And the session is open for the queries. I request our evaluators, if they do have some queries, they can ask. No doubt, it was a nice presentation and nice topic is chosen for the research purpose, really. Thank you, sir. Thank you, sir. Participants, anyone of the participants, do they have any query? Okay. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for giving me the opportunity. Thank you, sir. We are very proud that you have joined this session and you have presented your work at this platform, which is being conducted and posted by Gurukul Kangri Vishwavidyalaya in collaboration with Russell Society. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you also to giving me the opportunity to show my work. Thank you, sir. Thank you very much.
on the next move, I would like to request Dev Sharanji, if he is able to listen me, if I'm audible to him. Dev Sharan Chaturvedi ji, if you are, yes, sir. Yes, sir, your slides are visible. Please unmute yourself. Please unmute yourself. Dev Sharanji. जी सर गुड आफ्टरनून respected sir ma'am myself Dev Saran Chaturvedi PhD scholar Madhyanchal University Nepal and now I'm here to represent psychopharmacological investigation to study the effect of research sciences in the management of anxiety and dementia. Second, sir. I think your slides are not visible. Sir. First of all, anxiety is a heterogeneous progressive disorder. It is a neurological disease. It is associated with the dementia and aphasia, apraxia, agnosia. Apraxia means language problem. बोलने में दिक्कत होने लगती है. Apraxia means momentary disorder. Agnosia means memory problem. Approx 35 million people worldwide suffer from Alzheimer's disease. Histopathologically, the main cause of Alzheimer's disease is the formation of the beta-amyloid plaque and neurofibrillary tangle and releasing of the oxygen-free radicals, which damage the nerves of our brain and reduce the memory of person. Alzheimer's disease is generally occurs elderly person above 45 to 50 years. And the next slide is anxiety. Anxiety is a feeling of oppression, uncertainty, and anticipation of imminent or unreal threats. Means unwanted fear. No proper cause, unnecessary tension, unwanted fear. Previously, anxiety is not a disease, but nowadays, in a current scenario, anxiety is a most important neurological disorder. At least most of the youngest population are affected from anxiety worldwide. Various neurotransmitters are involved in the anxiety disorder like GABA aminobutyric acid, noradrenaline,
5-HT. Various causes like sleepiness, headache, tiredness, many other features, and anxiety in a important research area nowadays. Various plant, various synthetic formulations are examined for the treatment of anxiety. My plant is a citrus sinensis. My work on the orange juice. Class is a dicotyledone family Rutaceae. Genus is citrus. Common name is orange. Everyone known is a citrus plant. The most important chemical constituent of orange juice is a vitamin C. He is a antioxidant, and presence of vitamin C is mostly used for the treatment of anxiety and Alzheimer. Because of vitamin C is a antioxidant and reduce the oxygen free radicals in our brain and enhance the memory of the person. Any other constituent like neoaspirin, lanolol, the most concentration lanolol is also present, citra, citron, limonene, tangerine, nobilatin, etc. The animals, the Swiss albino mice are used in our experiment. Various type of the drugs are used like donepezil, pyracetam, scopolamine, alprazolam. Models used like EPM, Morris water maze, object recognition, light and dark, approx 50 groups, each six animals, and the result section on the target of mice using Morris water maze. Morris water tank in which present the four quadrant Q1, Q2, Q3, Q4, and first of all, training period was started, and animals to identify where the position of the target was sitting in the training period. Group like normal saline, paracetam, donepezil. Dose of paracetam is approx 400 mg per kg. Donepezil 1 mg per kg. Scopolamine 0.4 mg per kg. And these are the concentration of my drug: 2.5%, 5%, 7.5% volume by volume, and 10% volume by. According to these graphs, the transfer time spent in the target for control group is very less. Paracetam is a positive control. Donepezil is also positive control. And quadrant time is increased. Scopolamine is a negative control. That's why the time is, and concentration 2.5%, 5%, 7.5%, 10%. In the 5%, the maximum time is spent by the animal in quadrant. That's why our drug is a significant for the treatment of anxiety, for the treatment of Alzheimer, like pH less than 0.01 as compared to control group. We follow the ANOVA donate test. In this test, our drug is a significant P less than 0.01 as compared to control group. Next, effect of the citrus sinuses on the transfer latency on elevated plasmids. EPM. Elevated plasmids is an instrument in which contain the two open arm and two closed arm. And first of all, animal was put at the site of open arm, face away to the examiner, and start the training period. And in case the animal treated with the anxiety, then animal immediately go into the, because of in the case of anxiety, the high light was tolerated by the animal at the
So in the case of Alzheimer, we calculate the transfer latency time, how much time is taken by the animal for entering the open arm to the closed arm. Then the transfer latency time is paracetam less than donepezil is another less than scopolamine is a very high because scopolamine is a negative control group. That's why the transfer latency time is a very high. And the concentration of the mitochondria the higher transfer time in this model. That's why our drugs is also significant in this model as compared to the control because the transfer latency time is less as compared to. Next slide is scopolamine induced amnesia. Scopolamine is a negative control drugs. The mechanism of the scopolamine is anticholinergic. The main hormone is responsible for Excuse me. If you can move to the last slide, please. We have an important guest to, you have 1 minute only. This one? Last. Okay. You have 2 minutes. You have 2 minutes. So total 8 minutes. You have 2 minutes to conclude the session. You just Please conclude your session. Slides in 2 minutes, please. So this is the last slide. According to this slide, the total cholesterol level is reduced, transfer latency is reduced, acetylcholine level is reduced, GSH level is increased, open arm entries and time spent is increased, time spent in light model is increased. So the overall conclusion is our drug is a neuroprotective drug and used for the treatment of the anxiety and Alzheimer. Very much. Hello. Okay, thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you. Any questions? Any questions from the participant side? Judges. And judges? Virender sir, do you have any query? Thank you very much, sir. No one. Thank you very much. Vicar sir, welcome. Good afternoon, sir.
दीदी मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। Welcome, sir. We all are welcoming you. We have a eminent personality, Professor Dr. Milind Gurukul, sir, with us. So it's our privilege that Sir has joined. Sir has the clear vision towards the leadership that I really appreciate his words that a few days back he has wrote that the leadership is all about the investing the growth of others. So, and I gone through his profile and he just recently elected as a president of APTI, that is the Association of Pharmaceutical Teachers Association. So it's very incredible. May I read Sir's brief so that everyone is aware. सर का ऐसे नाम ही काफी है सर ने बहुत अच्छी लीड से प्रेसिडेंट पोस्ट पे अपना हक दिया है सर इज currently working as a principal in Srimati Kishoritai Goyal College of Pharmacy. It's UGC approved and NB NEC accredited. Sir is having dual degree, like he did one doctorate degree that's in pharmaceutical sciences from RTM Nagpur University, another is in the management. So obviously for leadership and leading the institute and making people's leader, you need that. So sir has degree in that postdoctoral degree, PhD degree in management as well. And he has a very good command on research that I saw his profile. He has a project grants worth 52.26 lakhs. That is one project he received from Modro scheme of AICT, that is in 2018 and 19. It's on that development of product conjugate pluronic missiles for targeted delivery of anti-cancerous agents. That's worth 12 lakh. It's incredible, sir. That's very good. Apart from that, sir has like orientation and pedagogy for curriculum, good teaching practices. He got the grant of 3 lakhs under the short-term training program. That is all under the AICT projects, AICT body. Another is the Prerna scheme, so people are not aware of that, to motivate the SC/ST students for competitive examinations. So the grant he, under his guidance, under his received that it's around 8 lakh under Prerna scheme of AICT. And in this way, he has received many grants and he is working very like in administration, research and in academic as well. It's very commendable. Apart from that, sir has received the IPER Principal Award in 2019 through the APTI. Ideal Principal Award from the Rashtriya Sanskar Shukroji Maharaj, Nagpur University. He also received the Special Contribution Award from APTI. Apart from that, he has received many awards. He has more than 100 papers in international and national journals of repute. So it's our privilege that sir has joined us, and even sir is traveling and he has given his valuable time to share his views with us and bless the students, colleagues who has joined. Over to you, Hello. sir. Thank you, madam. Am I audible? Yes, sir. First of all, sorry, there may be a chance of little bit network in my voice due to the traveling, as I am traveling from Visakhapatnam to Nagpur in train. So first of all, I am very much thankful for the motivational and lot of words, appreciating words using by the anchorer madam for me. She is using lot of words, but I am just a common teacher among all the pharmacy teachers. As madam already mentioned that I am elected as a president, and that happens only because of your support of all the teachers throughout India. So thank you for that. First of all, I'm very much thankful for inviting me for this conference, and it's really a wonderful topic: the use of artificial intelligence in the pharmaceutical and healthcare system.
being a pharmacist, it's our responsibility, and we are playing the key role in the healthcare system. And during last 5-10 years, everyone is known about the word AI, because whenever you ask to your younger brother or any young student of 12th class which subject he want to go, he always opt for the artificial intelligence. And now from last 3-4 days, 3-4 years, we are known AI in pharma, AI in healthcare. And what exactly the AI we are expecting from the AI in the healthcare system. And we realize the use of AI in the pharmaceutical sector as well as in the healthcare system during our COVID pandemic. Because earlier we are aware about the drug discovery takes minimum 3 to 10 years. But during COVID, we get the vaccine within a span of 1 year. It happens due to the data availability and data compilation done by the artificial intelligence. And definitely lot of core research industries are working on that, and the artificial intelligence is playing a key role in the drug discovery as well as drug delivery system. So in future, definitely the artificial intelligence will be really helpful tool for the pharmaceutical industry as well as for the healthcare system. So I very much I would like to congratulate to the organizers for using this wonderful topic, because this will be the need of future, and this will be the need of, and we should train our student for the in that area, so that our student can compile the artificial intelligence related to the pharma industry and related to the pharmaceutical drug discovery system. So I congratulate to the organizers for selecting this topic, and I'm not expertise in that artificial intelligence, but I can understand that the experts chosen by the organizer definitely clears the doubts of the students, and it will be really, I think it was really useful for the student to know the use of artificial intelligence in the future in the pharmaceutical industry as well as in the healthcare system. So I wish all my best to this conference. And once again, I am very much thankful to the organizers for inviting me and bearing me during my traveling. And they allow me to talk with you all people during my traveling, and with the disturbance in the voice also. So once again, thank you, madam, and thank you, organizers, for inviting me. I wish all the best, and it will be definitely a successful program. And I always know that Preeti done always best, and she always do the best in various conferences. So I am expecting best of luck for this event. Thank you very much. मैडम आवाज नहीं आ रही. Thank you so much, sir, for your words. It means a lot that you have spared your valuable time instead of your busy schedule. I'm requesting Dr. Sateen Rajput, sir. He is also one of the main convener of our event. He's from the Department of Pharmaceutical Sciences, Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, Dean. He's a dean over here, head over here. I request him to say a few words. Thank you, Dr. Tagde and Kapil and all the participants over there. I am very thankful to the President APTI. So he is traveling and finding the difficulty in network itself. He is very motivated and is mentioned about the utility of artificial intelligence and how it will be transform the healthcare system. We are brainstorming, and not only the discussion, what we are trying to do to develop the products as well. And our team, as Dr. Neelmani has mentioned in the morning session, that we are coming up with the different type of product. More time on behalf of the organizing team. I will request Kapil ji to finally present
Vote of thanks to our president and the participants. Sir, our few question presentation is pending, but I request sir to Dr. Kapil Goyal sir. He is also our convener of the event. He is from the Gurukul to say a few words, and then after that, I would like to invite Dr. B.L. Arya sir. He is a registrar from MIT University. University Noida to say a few words as our honorable guest of honor, Dr. Gurukul sir has connected. So first, over to you, Kapil sir. Thank you, madam. Thank you, Rajput sir. We are very thankful to Professor Milind sir. And first of all, congratulations from Gurukul Kangri University side that you are the now president of our president, the teachers president. So we are having a lot of hopes from you. From the concern of our conference that is based on the artificial intelligence, we are thankful to the Prizal Bhopal for conducting the conference in our campus. We are thankful to you, madam. And now, there is a lot of members who are included in this conference and having different duties given by the Rajput sir and Dr. Shalender Patil sir from Sagar. Dr. Asmita ma'am was there in the session. Dr. Uttam Sharma from Ayurved University. Dr. B.L. Arya sir, he is with us now. He is a registrar of MIT University, very senior person and connected till now with us. Thank you, sir. Dr. Prince Prashant Sharma, who is the backbone of this conference and working hard from last 5 to 10 days. And our one member, Rohit Bhardwaj, he is not here, but all the work was done by him. All arrangement was done by Rohit. So very big cloud for him. We are thankful to Ravinderji Balwanji for providing the very good lunch. And our other members, Dr. Vipin Sharma is there, Dr. Ashwini Jangra, Dr. Vinod Notial, our registrar, our finance officer, our Honorable Vice Chancellor, who is our guardian for all the activities, and our Dean, Professor R.C. Dubey sir. We are thankful to all. On the behalf of Department of Pharmaceutical Science and this conference, organic committee of this conference, I am thankful to all who are directly or indirectly attached with this work. And we are very thankful to President APTI again that he is traveling. He is traveling, but he is connected with us for a short time. So thank you, sir, for connecting us. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kapil sir. Now I request Dr. B.L. Arya sir, Honorable Registrar, MIT University in Noida, to say a few words. So thank you very much. I simply say that this conference will help a lot to all the participants and all the stakeholders. A special thanks to Chairman PCI, sparing time while he was traveling APTI. So thank you very much, and we'll wish all the success to all the participants and all the stakeholders. Thank you. Madam, mic. Thank you so much, sir. Satyen sir, should we proceed towards, like we have 4 presentation pending. So I think we can. Yes, we can convey our thanks and regard to President APTI, and again we can continue with the presentation. Just convey our best regard from our Vice Chancellor and all the fraternity of the Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, faculty of DOPS, as well as Spiritual Foundation, all the team members. We are grateful and thankful. We can complete the remaining presentation. Thank you again. Thank you so much, sir. Thank you, Milind sir. Now I request Ankita Singh
to kindly present your presentation. Angita is there? Now I request Pooja Negi for her presentation. Pooja Negi. Hello, good afternoon. Good afternoon. You start your screen share. Okay, ma'am. And on your video. Hello, I'm audible, Pooja? Hello. Hello? हाँ जी Yes, please share your screen. Sir, my screen is visible or not? Not yet. अभी आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. Actually, sir, I am trying. Sir, visible है? नहीं, अभी विजिबल नहीं है बेटा. Actually, मैं try कर रही हूँ ये यहाँ पे करो, ऐसे करो. Sir, my slide is visible or not? No, no, not yet, बेटा. Sir, अभी हुआ visible? Still not visible, Pooja. Sir, actually, हम कुछ समझ नहीं हो नहीं पा रहा visible. Okay. So let's move. Please wait, Pooja, for a while. Okay. Okay. You can share your slides
and our email address. Okay, okay, okay. We will display from this side. Okay, okay. Right. You just send your PPT on pharma@dkv.ac.in. Okay, okay. Meanwhile, I will call Aman Shukla. If he is there, he can proceed for do his presentation. Hello. Yes, Aman Shukla. Yes, sir. I'm audible to you. Hello. Hello. Hello, sir. Yes. Sir, I'm audible to you. Yes, you are audible. Please Okay, share sir. I'm your presenting slides. my. Did my PPT is visible to all of you? Hello, sir. No. So my PPT is visible to all of you? नहीं नहीं अभी विजिबल नहीं है बेटा. Yes, sir. Again try, sir. अरे डॉक्टर साहब. Sir, now is visible? Not yet बेटा. Hello. हेलो. Yes, sir. Visible हो रहा है? नहीं नहीं अभी आपका स्लाइड नहीं आया. शेयर शेयर कीजिए. शेयर स्लाइड्स.
All the participants are requested to please be patient as we have some uh, technical issues. So I request all the participants please be patient and keep joining themselves. Hello. Today is there. Hello. Hello. Pooja, are you listening me? Hello? Hello. Yes, Pooja, you can present your presentation. Okay. So my Yes. my site is not visible. Please start your presentation. Okay. So, good afternoon, all of you. My topic of presentation is recent approaches in pharmaceutical sciences. Am I audible, sir? Hello. 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 हाँ जी. Am I
Yes, Audible, sir? yes, you are audible. Please continue. Okay. So my topic is recent approaches in pharmaceutical sciences. तो सर pharmaceutical sciences के अगर हम बात करें तो ये एक broad category है. इसमें basically the pharmaceutical sciences are a group of interdisciplinary areas of study concerned with the designing, इसमें करते हैं drug delivery, disposition of drugs, ठीक है. They apply knowledge from chemistry, like chemistry में हम biochemical study, physical, आपकी बायोलॉजिकल में आपकी एनाटॉमी की स्टडी, एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो अगर हम फार्मास्यूटिकल की फील्ड की बात करें तो इसमें ये सारे एरियाज कवर होते हैं. एपिडेमियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स and the pharmaceutical sciences are further subdivided into several specific specializations like pharmacognosy, pharmacology, pharmaceutics and pharmaceutical chemistry. ठीक है. तो हम फार्मास्यूटिकल साइंसेज में हम अगर बात कर रहे हैं तो अब जो हम हर्बल अगर हम ड्रग्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक मॉडर्नाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, फार्माकोपियाज एंड बायोएसेज, chemical investigation and formulation, good clinical practices. हम यहाँ पे कुछ challenges की बात करेंगे जो आप herbal drugs की अगर हम वे में अगर हम बात करें, उसके डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. तो चैलेंजेस आर डिफिकल्टीज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. उन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स और enhancing due to pollutants or changing the nature in that area. These are occur genetic variability in medicinal plant, यानी genetic variability अगर कोई medicinal plant में हो रही है तो वो भी challenge है. Changing the climate or temperature that are occur variation in growing condition of the herb. अगर क्लाइमेट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उसमें क्या आ रहा है कि उसके जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें वेरिएशन आ रहा है. प्लूरैलिटी इन कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट्स. ये कि कैसे हम उनमें उनकी हार्वेस्टिंग प्रोसीजर कैसा है या उनमें हम उनका प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, तो वो भी वेरी करता है आपके. अगर हार्वेस्टिंग सही नहीं है या अगर हम उन्हें कल्टीवेशन टाइमली नहीं कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, वो भी जो उसका एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें वेरिएशन आने के चांसेस हैं. ठीक है. और क्लाइमेटिक कंडीशन, सपोज दो अलग अलग क्लाइमेट में आपके प्लांट हैं तो उनको उनकी जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें आपके वेरिएशन आएंगे. The poverty of information about the active compounds present in herbs or plants containing pharmacological effect and therapeutic activity. Okay. So quality of herbal preparation. If the herbal remedy shows therapeutic activity, then there is required the quality assurance of the herbal products to ensure the products adverse effect of side effects and the pharmacological activity and presence of adulteration like botanicals, toxic metals, microorganisms, microbial toxins, pesticides and fumigation agents and pollution also affect on quality. तो क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो क्वालिटी के लिए एक प्रॉपर टर्म आता है, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. कि हम कोई भी जैसे हम कोई भी हर्बल मेडिसिन या हम कोई भी मेडिसिन अगर हम बेसिकली हम यहाँ पे हर्बल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एक जो इम्पोर्टेंट जो एक क्राइटेरिया है दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या करते हैं अल्टीमेटली उस हर्ब की या उस प्लांट की हम उस प्रिपरेशन की हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं. तो क्वालिटी चेक कर रहे हैं इसलिए ताकि उसमें जो भी अडल्ट्रेशन है उसको हम आइडेंटिफाई करें. लाइक कोई बोटानिकल अडल्ट्रेशन है, कोई टॉक्सिक मेटल है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रोबियल टॉक्सिन है या पेस्टिसाइड है या फ्यूमिगेशन कोई भी एजेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं ताकि जो ऐसे एजेंट जो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें. तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर कैसे होता है. पहले हम बात करेंगे नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की क्यों जरूरी है स्टैंडर्डाइजेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू द information and control necessary to product material of reasonable consistency. This achieved through minimizing the inherent variation of natural product through quality assurance practice applied to agriculture and manufacturing process. तो क्यों जरूरी है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअल में क्वालिटी प्रोडक्ट है नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे
जैसे अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन में जनरली डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं, हम कैसे कैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी वैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं, लाइक बोटेनिकल स्टैंडर्डाइजेशन, फिजिकल स्टैंडर्डाइजेशन, ऑर्गेनोलेप्टिक स्टैंडर्डाइजेशन, केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन एंड बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक स्टैंडर्डाइजेशन की, तो जनरली हम कैसे कर रहे हैं, हम क्या उसको इवैल्यूएट, सिंपली हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन मीन हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं या इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक स्टैंडर्डाइजेशन में हम बेसिकली हम बात कर रहे हैं लाइक उसके जो मॉर्फोलॉजी यानी उसकी जो ऑर्गेनोलेप्टिक जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, लाइक कलर, ओडर, टेक्सचर, टेस्ट, फ्रैक्चर, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड सेकंड इज बोटेनिकल स्टैंडर्डाइजेशन, इसमें जनरली हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब शेप, एक्सटर्नल मार्किंग जो है, और माइक्रोस्कोपी में हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, सैम स्टडी कर रहे हैं, पाउडर स्टडीज कर रहे हैं। तो ये आपके सब माइक्रोस्कोपिक स्टडी स्टैंडर्डाइजेशन या माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में आता है। फिजिकल इवैल्यूएशन में लाइक हम उसका मॉइस्चर कंटेंट, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज, ऐश वैल्यूज, ये सब चीजें हम उसकी चेक कर रहे हैं फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग या हर्बल या हर्ब। केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्रोमेटोग्राफी, रेडियो एक्टिव, क्वांटिटेटिव में जनरली हम HPLC, HPTLC, GLC इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन में हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइक माइक्रोबियल कंटामिनेशन, फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन में हम स्टडी करते हैं टोटल वायबल एरोबिक काउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ पैथोजेंस और एफ्लाटॉक्सिन कंटेंट। फार्माकोलॉजिकल में जनरली हम बिटरनेस वैल्यूज, हीमोलिटिक एक्टिविटी, फोमिंग इंडेक्स, स्वेलिंग इंडेक्स, इन सब की बात करते हैं। और टॉक्सिकोलॉजिकल में हम डिटर्मिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू या डिटर्मिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स, इनकी सब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन। थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन किसी भी जो प्रिपरेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो रिजल्ट एंड कंक्लूजन, स्टैंडर्डाइजेशन इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। बेसिकली हम स्टैंडर्डाइजेशन क्यों कह रहे हैं कि किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफ ड्रग्स एंड वेरियस पैरामीटर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर, जनरली हम क्या करें, हम स्टैंडर्डाइजेशन में जनरली हम इसमें 3 चीजें चेक करते हैं, एक उसकी आइडेंटिटी, एक क्वालिटी एंड प्योरिटी। आइडेंटिटी रेफर्स टू द, सिंपली अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में हम क्या कर रहे हैं, उसके सोर्स ऑफ ड्रग कहाँ से वो हमें मिल रहा है उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में हम पता करते हैं, सोर्स ऑफ ड्रग। एंड क्वालिटी और प्योरिटी, अगर हम प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी का मतलब है कि कितने अमाउंट में उसमें आपका जो आपकी इम्प्योरिटी है, यानी कोई भी ऐसा कंटामिनेशन कितना है। यानी अगर हम 2 ड्रग की बात करें तो अगर ड्रग ए है, ड्रग बी है, अगर ड्रग ए में अगर ज्यादा कंटामिनेशन तो हम कहेंगे कि ड्रग बी इज मोर प्योर देन ड्रग ए, यानी प्योरिटी के बेसिस में देखें तो ड्रग बी में ज्यादा प्योर, यानी जिसमें जो अमाउंट ऑफ जो कंटामिनेशन है वो कम है वो आपका ज्यादा प्योर होगा। एंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी का मतलब है, अगर हम बात करें क्वालिटी आपका डायरेक्टली आपका अफेक्ट करता है उसकी एक्टिविटी को, यानी अगर हम किसी भी ड्रग की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का मतलब है उसमें उसका जो उसकी जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी कितनी है, यानी जो उसमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कितने अमाउंट में है, वो कितने कंसंट्रेशन है। तो यानी क्वालिटी में आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपके एक ऑप्टिमम लेवल, एक प्रॉपर अमाउंट में होगा, उसकी की एक्टिविटी अच्छी होगी, इफेक्टिविटी अच्छी होगी। जिसमें कम होगा तो उसकी इफेक्टिविटी वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो 3 चीजें बेसिकली हम स्टैंडर्डाइजेशन में देखते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिटी हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ ड्रग। एंड सेकंड वन इज क्वालिटी में है ये अमाउंट ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसकी वजह से उसकी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी है। और थर्ड इज प्योरिटी का मतलब है उसका जो कंटामिनेशन कितना कम है, यानी जो इसमें हम क्या करते हैं, जो कंटामिनेशन को चेक करते हैं कि उसमें कंटामिनेशन कितना है। द इंडियन हर्बल इंडस्ट्री गोइंग इन अ ट्रेमेंडस स्टेट, so the traditional approach towards standardization is insufficient for current herbal market, and hence there is need for more advanced technique for standardization. So that is all about my presentation. Thank you. Thank you, Pooja. All the participants, if they have any query, they can ask.
Okay. So in the next move, I would like to call Aman Shukla for his presentation. Aman Shukla. There? Yes, sir, I am audible. Okay, okay. Yes, you are audible. Please continue. Good morning, all of you. Myself, Aman Shukla. I am from final year student of B Farm fourth year. In recent time, we started our research work on phytochemical screening of herbal drug for cosmetic product under the guidance and supervision of Rahul Singh sir and co-supervision of Mr. Rohit Bhardwaj sir. Our topic is phytochemical screening of herbal drug for cosmetic product. Please change the slide number. Next one. Yes, sir. Please wait. Firstly, we read about herbal drugs. Herbal drugs mainly are the preparation of medicine which are made up of natural herbs and plants which are provided by nature and all human being. Mainly herbal drugs में हमने ये पढ़ा कि जितने भी ड्रग्स बनते हैं हर्ब से मेडिसिन से वो सारे ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन वेलफेयर में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं हर्बल प्रिपरेशन जो मेनली बनते हैं वो प्लांट्स के रूट्स लीव स्टेम राइजोम्स और फ्लावर्स या उसकी बार्क से उसमें से क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हम हर्बल प्रिपरेशन को बनाते हैं आजकल इसकी डिमांड जो है वो मार्केट में काफ़ी हाई हो चुकी है ड्यू टू इट्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ इट्स यूज़ और इसके आजकल नाउ डेज में HPLC NMR काफ़ी सारी ऐसी न्यू एनालिटिकल टेक्निक्स आ गई हैं जिससे इसकी मार्केटिंग में और इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड में एक नया मेथड इंक्लूड हुआ है और भी प्रिपरेशन इसकी मार्केट में आने लग गई हैं मोस्टली कॉमन हर्बल प्लांट्स जो होते हैं वो एलोवेरा टर्मरिक क्लोव नीम जो कॉमनली हाउस होल्ड प्रिपरेशन के रूप में भी यूज़ करे जाते हैं सर कैन प्लीज चेंज द स्लाइड hello sir okay secondly we study about novel drug delivery system in herbal plants or synthetic drugs. Novel drug delivery system mainly is a drug delivery system which act on particular site of action of a body which which was considered a approach or formulation or technology with transporting a pharmaceutical compound in the body or achieve a desired therapeutic effect. Novel drug delivery involve mainly nanotechnology based approach which require multidisciplinary effect or effort combining the field of physical pharmaceutics, physical chemistry, polymer science and bioconjugate chemistry, molecular biology all are combining in novel drug delivery system. The targeting ability of the novel drug delivery system in our body makes is more efficacious than other ones. So can please change slide? Next one is extraction process. Extraction process is mainly the separating out the metabolites or constituents or secondary metabolites from the plants or mainly herbal plants to make a cosmetic preparation or a medicine.
Extraction process mainly include maceration, percolation, and fresh green plant, dry powder plants, and mainly organic solvent like ethanol, distilled water, and hexane chloroform, by which we extract the secondary metabolites from the herbal plants. Sir, can you please change the slide? Cosmetic preparation from herbal plant. Lastly, we studied a topic on cosmetic preparation from herbal plant. Nowadays, cosmetic preparation from herbal plants take a jump on Indian market as a synthetic drug or synthetic cosmetic also have a number of side effects as we see on our skin, our hair, and our daily life use product. So natural plants and herbs preparation is going to be next big terms in marketing business. The herbal cosmetic are the preparation or containing phytochemicals from a variety of botanical sources which influence the function of skin, provide nutrient necessary to the skin and hair. There is a common belief in Indian society that chemical based cosmetic are harmful to our skin as compared to synthetic ones, which was also a scientifically proven. So the demand of herbal product takes a trigger in Indian market. Sir, please change the slide. Next thing we read is review of literature of 4 plants, which is Brahmkamal, camphor, eucalyptus. Mainly these 4 plants are we studied our research work. First is Brahmkamal, which is commonly found in Uttarakhand, Rudraprayag and Chamoli state, and also the national flower of our Uttarakhand. Botanical name is Sausurella obuvulata, a common the genus family of Asteraceae. It's commonly known as Brahmkamal, and it is mainly in village areas of Uttarakhand or Kumaon side used as a medicinal and decorative or religious purpose. Phytochemical investigation of Sausurella extract shows that it includes extraordinary sorts of ingredients which include alkaloid, flavonoids, terpenoid, glycosides, and some extraordinary solvent, and further research on this flower is ongoing. Next, we study about camphor. Camphor is commonly we see has a kapoor or a white crystalline substance with a strong smell and pungent taste. It mainly obtained by steam distillation process or purification process. Mainly, it's have a sublimation process. Sublimation is mainly solid to directly changes into gas. It mainly include in some properties like application of topical, analgesic, antiseptic, and sometimes antipyretic, inflammatory, anti-infective, or antifungus also. Sir, can you please see my next two or last flowers we study has a review of literature is Rudraksh and eucalyptus. Rudraksh mainly Elocarpus genitus, which was also a ethnic or religious belief in Hindu community. Elocarpus genitus is famous for appealing fruit stones. Has stones is a main component which was active as a secondary metabolite, and its leaves also have some properties like sedative and effect, which is very useful in cough, bronchitis, neuralgia, and headache. There is a pharmacological activities include anti-inflammatory action, analgesic, sedative, and antidepressant action also. Eucalyptus mainly is essential oil, also known as some volatile oil. We also consider eucalyptus as a volatile oil because it have a properties of fungus, efficient, and mainly a mosquito repellent. Second, can you please change my slide?
The material and solvent we use are under the table. The Soxhlet apparatus, which mainly used for extraction process, has a condensate, round bottom flask, weighing machine, and a water bath. Mainly we use 6 to 7 solvent for extraction process of secondary metabolites are methanol, ethanol, distilled water, chloroform, and hexane, acetone, and ethyl acetate. Sir, can you please change my slide? Some phytochemical test or screening test we done for that is bond dragger test for glycoside, in which we boiled the drug with dilute H2SO4 and separated organic layer which show pink color. Killer Kilani test is one of them, which show reddish brown color. Test for alkaloid, we done Vitali Morin test with propane alcohol fuming nitric acid with 3% KOH, and after that it show violet color if there is any alkaloid is present. For carbohydrate, which was a primary metabolite, we done Benedict test and Felling test. As a result, we concluded that when we Rudraksh with ethanol as a leaf, some of the metabolite is like tannase, the saponins, phenols, and flavonoids are present, but terpenoids is absent. As we Rudraksh, third or fourth number, we use is stem in ethanol or aqueous solvent. Some metabolite is present and some are absent. All the secondary metabolites are present is in Brahmkamal with ethanol solvent, in which all the alkaloid, tannins, saponins, phenols, flavonoids, terpenoids are present. Eucalyptus with ethanol also have some common properties, but they have very less number in metabolite condition. Camphor with ethanol have only 3, and camphor with aqueous have only 2 metabolite is present, which was very less in number. Sir, can you please change the slide? As last, we concluded that our project work gives us information with a foolproof scientific justification that the active secondary metabolite extracted from the different parts of the plants and herbs have its own therapeutic effect. We compare all cosmetic are best in comparison to synthetic one because their extra properties to human civilization, which was not normally founded in synthetic ones. The market of herbal cosmetics increasing day by day due to their large use of daily skin or hair routine. Skin care and hair care routine taken 60% of herbal cosmetic demands. The new techniques and advanced instrument in modern era make its use mankind value more beneficial for our society. Thank you. Thank you, man. Now request to Anshul Saxena. Yes, sir. If you are present, please continue with your. Is my slide is visible, sir? Okay, okay. It is visible, beta. Myself, Anshul Saxena. I am pursuing my M.Pharm from Dr. K.N. Modi Institute of Pharmaceutical Education and Research, Ghaziabad. First of all, I would like to thank Gurukul Kangri University for providing me such an uh, uh, platform to present my oral presentation on the topic of development and validation of reverse phase HPLC method for estimation of teneligliptin in tablet dosage form. Uh, First of all, I start from introduction. Teneligliptin is a anti-diabetic medication belonging to the category from DPP4 inhibitor, which have recently been developed and show promising outcome in a treatment of glycemic control with low risk of hypoglycemia and weight gain.
As we can see in structure, there are 5 successive rings that makes the new dipeptide peptidase 4 inhibitor tanagliptin structure gives special quality that result in strong and long lasting effect. We also see a J anchor like structure in the tanagliptin, which also gives its potent and long lasting efficacy. Material and method. As I developed the HPLC method for the analysis and evaluation of tanagliptin, so the instrument used were Shimazu LC 2030C plus HPLC with UV detector and a analytical digital balance with high precision, sonogator, pH meter, pipette, volumetric during the study. The reagent and material are used. Tanagliptin pharmaceutical grade working standard were procured from Alidhara Pharmachem Private Limited, Gujarat as a gift sample. Tanagliptin dosage forms tablet were purchased from local market. HPLC grade water, methanol, acetonitrile were obtained from HD Finechem. Potassium dihydrogen orthophosphate and octane sulfonic acid were used and obtained from collagens. Next, the optimization and validation of reverse phase HPLC method. We have tried many different concentration of mobile phases at different pH and different columns. At last, we conclude on a optimized method shows the chromatographic conditions. I used water symmetry C18 column to 15 to 4.65 micron particle size, and mobile phase composition is 600 ml of buffer with 400 ml of acetonitrile on a pH 2.7. Given flow rate is 1 ml per minute. Column oven temperature and sampler temperature were ambient. Wavelength used 246 nanometer. Injection volume 20 microliter, and run time was 10 minutes. Next, I perform method validation on the developed method performed as per ICH guidelines, which states that specificity, linearity, accuracy, precision, and robustness. All these parameters I covered in this method validation. Result and discussion. As the first parameter is specificity, in this parameter we can check there is no interference peak were found at the retention time of the main analyte, that is tanagliptin. As we can see the chromatograph of blank and standard, no other such peaks were found in the HPLC system. Only the tanagliptin can be seen. That means the method is specific and no interfering peak were found. Second parameter is linearity. The linearity, the quantification was linear in a range of concentration 5 microliter to 5 microgram per ml to 100 microgram per ml concentration. After linearity study, we can see that R square was found 0.999, which are under the limit as per ICH guideline. Third parameter is accuracy. Accuracy parameter, the method accuracy defines how closely the result it produced matches the true value. In this parameter, we can clearly study that the method is accurate at different level of concentration, that is 50%, 100% and 150%. Accuracy level is checked on these three concentration in a triplicate manner, and we can see that the mean recovery were approx 100%. Percent RHD was noted and are under the limits as per ICH guideline. Next parameter is precision. Precision is reported in relative standard deviation.
is define the closeness of a result obtained from multiple sampling of the same homogeneous sample under a specific condition. As a result, we can see all the RSDs were under the acceptable range as per the ICH guidelines. The precision were checked in as method precision and also intermediate precision. Intermediate precision were performed by the different instrument or different column and different uh, analyst by the different analyst, and also the result were found within acceptable range and the RSD were less than 2%. Last parameter is robustness. Robustness parameter is used as we can daily perform analysis or marketed formulation on HPLC. There is some chances of alteration in the preparation of by the HPLC system or the preparation. So we can check these alterations in robustness. For example, the small alteration in flow rate and column oven temperature, I can check the method degree of robustness was achieved. As we can see, 0.1 ml flow rate is increased, 0.1 ml of flow rate is decreased. Also, oven temperature was 2° increased and 2° decreased. There may be negligible changes in the results found, and the RHDs or these results were under 2%. Hence the method is robust. At last, the assay of marketed formulation I performed at a concentration of 40 microgram per liter. The assay were performed by injecting 6 standard injection and sample injection in duplicate manner. The label claim of the marketed formulation is 20 mg, and the result of amount found by this method after validating the assay was achieved 99.57%. That means the method gives a specific reliable result. At the last, conclusion is that the proposed method was successfully developed and fully validated as per ICH Q2R1 guidelines. This method was found to be simple, accurate, rapid, specific for the estimation of teneligliptin hydrobromide in the tablet dosage form. This method is also economical, as we can see the total runtime is only 10 minutes. The sample recoveries were shown good agreement with their respective label claim. This is found that there is no interference of any excipient in the estimation were found. Hence, this developed reverse phase HPLC method is convenient, adopted for routine analysis of teneligliptin in pure form and its tablet doses form containing teneligliptin hydrobromide. This is my last slide. References. Thank you. Thank you very much, Anshul. It was a good presentation. Yes, sir. And I would like to request all the participants, if they have any queries, they can put forward. Thank you, sir. Thank you very much, Anshul. Yes, Now, in the next continuation, I'd like to request all the participants, if any of the participants want to present their work, they are very welcome. Okay.
Okay. If Srishti Maheshwari is present over here and would like to present her work, she is welcome on this platform. Yes, sir. Sir, is it visible? Srishti, Hello. wait for a moment. What, sir? The slide is not visible. Okay, sir. Sir, now it is visible. Okay, okay. It is very visible. Okay, sir. Zoom it. First of all, good evening, everyone. This is Srishti Maheshwari from KIT Group of Institution, and I am going to present on current and future challenges for development of stability indicating method of curare alkaloid. Curare alkaloid is basically neuromuscular blocking agent. These agents that block the transmission of acetone ACH at the motor end plate. The therapeutic use of these compounds is primarily addressed in basically in surgery as anesthetics to obtain relaxations of skeleton muscles. These alkaloids obtained from bark and stem. These alkaloids basically used in earlier time by South American Indians. They use as potent arrow poison. There are basically the alkaloids, curare alkaloids basically include D-tubercularine, pancuronium. We reviewed that there is lack in method development and stability, basically in stability indicating method development. According to ICH guideline Q1AR2, there should be stability indicating methods for the drug which can potentially and safe use which can be used potentially and safe for human health.
Drugs of curare alkaloid, tubocurarine. Tubocurarine is a first found curare alkaloid. It is a skeleton relaxant. It used to control uh, it basically used in surgery. We found there only few analytical methods are reported in the literature for quantification of drug. These repeated methods basically involve bioanalytical assays, but after detailed review, we found that there is no specific stability indicating method has been conducted till date. Next drug is atracunium curium. Atracurium is also a curare alkaloid based drug. In 1981, and Stanley found synthesized this drug. Uh, uh, there are few analytical methods has been reported for the estimation of this drug, but same as tubocurarine, there are no specific stability indicating method has been reported till date. So it can be a potential area for research. Next drug is pancuronium. It is a non-depolarizing blocking agent, and this its long duration. It has slow onset of action, about 4 to 6 minutes, and long duration of action, about 2 to 3 minutes. At the same way, we observe there is also lack. So hence we conclude that after detailed review of curare alkaloids, we found that there is no significant stability indicated method has been developed for curare drug till date. Stability of drug of this category can be a wide area for the researcher and can provide beneficial information about process-related contamination and potential drug quality pollutant. Stability can be useful for estimation of quality of drug. So basically, we reviewed curare alkaloid and we found that there is a lack, basically lack in the stability indicating methods and the stress methods. So this can be so as a future perspective, this can be a potential area for analyst of for research, because till date no degradation studies has been carried out. Hence this can be developed, there can be developed the fast, accurate and sensitive method for the quantification of drugs of curare. Thank you so much, sir. This is all from my part. Thank you very much, Srishti. Any queries from participant side? We're moving to next. Mhm. Thank you, sir. I request all the participants to kindly wait for some time as our evaluators are deciding the first, second, third position in oral presentation and poster presentation. So please stay with us for a few more minutes.
So moving forward, today's content.
And now I request our colleague, Dr. Vinod Motialji, to conclude the session and for the four other things, and also prize distribution, to announce the prize for the oral presentation as well as the poster presentation. Please, over to you, sir. Thank you, Prince, sir. It's really pleasure moment for me to announce the awaited results of poster presentation and oral presentation. Before that, I would like to share my sincere thanks on the behalf of Department of Pharmaceutical Sciences, Kangri Vishwavidyalaya, and Individual Foundation, Bhopal. And in last but not least, I want to express my hearty thanks to all the participants who joined this conference and made successful this event by joining online and offline. And now I would like to announce the result of first poster presentation, then oral presentation. In poster presentation, Mr. Anshul Saxena, Senator Modi secured the first position in poster presentation. So I would like to congratulate Mr. Anshul Saxena and would like to request to you that big applause for the Anshul Saxena. And in second position, in poster presentation, Aman Shukla secured the second position. Aman Sharma in KIET, he secured the second position in poster presentation. Now I would like to disclose the result of oral presentation. In oral presentation, first prize goes to the Dr. Haridwar, who is the scientist E from Jabalpur. He secured the third position in oral presentation. And second position is shared between two participants, that is Barkha Chaturvedi and Mr. Prashant Desai. And Dr. Prashant Desai. I once again repeat, second prize goes to the two participants, that is Barkha Chaturvedi and Dr. Prashant Desai. And the third prize goes to the Ashish Kumar Singh from MIT University. That was the announcement of the results. And once again, I would like to thank all the participants who joined this conference. And I really want to express my sincere thanks to President Prison Foundation, Dr. Preeti Tagade ma'am, who made all the efforts to be a successful conference in this event. And I want to sincerely thanks to Dr. Prince Prasad Sharma, Dr. Kapil Kumar Goel, Dr. Nitin Kumar Sharma, Dr. Ashwini Jangra, and all other the faculty member and non-teaching staff, and in last with the course working vendors, that is our head and dean. Head is Professor Satendra Kumar Rajput sir, and Dean Professor R.C. Dubey sir, and our Vice Chancellor and other administrative staff. Thanks a lot. Now I would like to invite Dr. Prince Prasad Sharma to share few words regarding this conference in concluding mode. Okay, thank you, sir, for this lot of things. So all the credit goes to the participants who have attended this conference very patiently throughout the 2 days. So thanks from my heart to all of them. And now I would like to request all the participants to stay with us in upcoming conferences and workshops to be done for this platform. Thank you very much for joining us. Now I rest this conference. Thank you.